इंग्लैंड में बेटा उसके बाद ऊपर अच्छा हफ्ता इंडिया पे पूरा महीने 2 महीने इंडिया में बहुत चेंज हो गया होगा अब हम बिजनेस कर रहे हैं काफी टाइम Good morning. अजय भाई कुछ पता है कितने न्यू स्टूडेंट हैं? I think that 3 or 4 more. Okay. नहीं अभी नहीं हुए, वो 9:15 आज होंगे। वापस आ रही है नीचे आ रही है मुझे फायदे याद हाँ 5754 to 3 sorry 5704
Okay, we are good to go. All right, good morning, everybody. Monday, March 10th, 9:03 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at soberareas.com. Welcome on board. Let's make it a very productive and disciplined day. Today, Monday, March 10th, nothing except Mr. Trump, so whole day could be random. That's all I can say about that. Tentative, so no idea when he's going to get into Oval Office and start speaking. So we're going to go with the flow. Right now, market is really it is hammering. Our areas are not yet updated, so give it some time. So I don't have, because market is still falling, so give me a little bit before I go ahead and update it. So give it approximately, let me double check. Maybe just the date is an issue, origin history. So today's Monday. Right? If you update it, it should show Monday, March. One second. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, जी. Good, good. सर डेट अपडेट कर दो ना. ओ मैं कर देता हूँ ना. ओके ओके ठीक है नो प्रॉब्लम. और सर नो प्रॉब्लम. Yeah, everything is good. New areas are here. So the areas are updated fresh. If you refresh your charts, you should have the latest and greatest areas. That will show you which way the market is going. So charts are on, everything looks good. Let me update the Google Sheet as well for those that monitor this. March 10th. So today base is down, pressure is down. Strike price has gone to 450. Wow. Now we finally are starting to see 19,000 in and 57 in ES. Incredible. Almost. So Friday low is important. Remember Friday we had a low of, so. Honey, good morning, Ji. Shouldn't be rhythmic. Use hotspot. Try कर लें hotspot के साथ. ठीक मैं अभी चेक करवा देता हूँ. आप सुपर एरियाज की टीम से लॉग इन करें, देखिए अगर वो कर सकें. अगर वो ना कर पाए मैं आ जाता हूँ. All right, so Monday, March 10th, what are we looking at? Night session high for Nasdaq. So that was from Sunday night market open. The way, so 20,155. Let's put that number. 20,155. The low is 19,861. So 19,861. Market has fallen almost 350 points. So this is almost 300 points of the night. So it is opening right now is 9:07 a.m. So we are very close to
S2. So the price is opening very close to S2. Just remember that. ES. Vikram Bhai has written ES numbers on the board. So that is good. We all have the ES numbers. We have the value areas. We have everything else along with it. So 5777. You already have your first setup ready. Remember, for those playing SRES, your first setup is already done. Your first trade was to watch that higher low. After two blacks, you have a blue, and the price is going up. So for those doing ES, the first setup is done. So after two blacks, you have a blue. So anybody who's new, I'll explain what we are talking about to make your things easier. But this is for ES only, swing retrace extension. So your first setup at the black candle is done. You entered and you are technically, in my opinion, done your 2 points. 4.75 to 6.75 is 2 points. Let's see if it actually gives us 2 points or not. Not yet. 6.25. It gave us 1.5 in that trade. But it's okay. We'll wait. Just saying that this was your first indication that the price is made a higher low. So it made a lower low, it made a lower high, it made the first higher low, gave us 1.5, and still hasn't come down yet. So for those who want to take this, may want to take this. Completely up to you. How do you want to approach this particular trade? So blocks I am 30, 20. Ganji. Congratulations. Congratulations. You see how fast everybody made money? Don't say you didn't take this trade. It's like how fast everybody's done. हाँ ठीक है लेकिन it's normal लेकिन आपके मिल गए. So we started 9:10, we're done. So you saw this first setup, you had a stop buy and game. आपका ID चला? अच्छा ठीक है वो मैं करवाता हूँ, no problem. So my first trade is done with every account, not every account, didn't have a copier on, but it's okay. 4 accounts got filled. So the first trade is done. It just shot up like crazy back into. It gave us 15 points. So 15 minus, let's do a bit of a math here. I have a calculator. Yes, I do. So 15.5 minus 4.75, 10 points. And then even if you wanted to get 10 ticks, so almost 8 points out of this trade. 6 to 8 points minimum. So that was your $300 trade. I managed to pick up 200 in that because my TP was 8 ticks and I got that. So the ES first trade is done, guys. So let me connect everything else. We'll listen to Daniel's brief and then we'll go. MES. So I'm in queue.
So low to go high is today's plan. If it goes to expected low, we are going long. Just remember that. The low to go high is the plan. So the first SRES trade is done at 9:10. If you're done, switch to micros. So 5694, still trying to see if it makes another low. So it should go and test Friday's low. On our Friday low, we had a number of, for ES, approximately 73. 73 is Friday low. There's a divergence on 60-minute chart. So, and what's the Friday low for Nasdaq? 19,766. So keep this number. So 19,766 is the number we're gonna keep an eye for Nasdaq. 19,766, and that's the Friday low. And here we have a Friday low of 73. Yes, there's a spot right here. One here. So 73. We have any 73 here? Nights 50, 56. 73 is the number we had for the Friday low. So because we're doing a weekend, so Friday low is 56.73. These are the two. So may act as a support resistance, but let's see. Fibonacci trade worked as well. So our Fibonacci trade is done for ES. So if you looked at Fibonacci in the green box, price went into 30-20 green box, 2 points are done from there. So 2 trades are done. Fibonacci trade is done on 30-20 retrace, as well as your swing retrace extension trades. So from 9 a.m. So I know everybody's excited to get the raise. Let's do our morning ritual for about 30 seconds, please. If you can just stand up quickly so we can repeat that and get our mind going. So, all right. So just repeat after me quickly. I bear witness to myself that today I will check the news. I will always place my stop loss. I will follow my strategy and not trade randomly. I will treat today as my first trading day. I will stay disciplined. And I'll do what I see, not what I think. Great. Thank you. Have a seat, and then let's get going. So, positive reinforcement in your brain. Even though there is an SRES trade right now on 1510, I'm not comfortable because 1510 has an SRES trade. वो बना 4.75, but because it's near very close to expected low, let's see. Let me check the new areas. Let's do S2 expected low for Nasdaq. Nasdaq expected low, guys. This is I think we are in the day number 16 of opening and going to expected low. So I'm not doing S2 for Nasdaq. For FTMO, then you should be going low from long from expected low. That's a reasonable number. But make sure. So.
There's this spot right here. Yeah. Okay. Majid bhai ka bhi room hai. If anybody wants to go sit in the two rooms, like that's for. नहीं उनकी the reserve है, so should be okay. So 918. We'll see how it goes. So just for the new users, how many are new? 1, 2, 3, 4 are new. Absolutely okay. So I will give you the orientation around 11, 10:30, 11 o'clock. So the way the floor works is 9. So Daniel is your, like, theoretical teacher. So he'll teach you all the theory. My job is to Monday to Friday, I'll do my introduction and everything. So Monday to Friday, 9 to 11 is pure trading. Like, so that's where we want to focus and extract the money out of the market. From 11 to 1, 11 to 2, for those want me to stay longer, today I'm here until 5 o'clock. So I'm here until 5 o'clock. So you have any questions about anything, like, so don't worry, like today, and I'm fasting, I don't even have a lunch break, right? So until 5 o'clock, I'll be sitting here and explaining whatever questions you may have for this whole week, because until Thursday. So because March break, I don't have to take kids to school. So 9 to 5, I'm here Monday to Thursday. So let's see how this week goes. So You're online. mhm. You know the one with Yes. sell stuff. Yes. Wait for me to- ठीक है, मैं 11 के बाद सारा थोड़ा आपको लेट समझाऊंगा क्योंकि पहले इनकी ओरिएंटेशन हो जाए. ठीक है. So no problem. We'll get you going, and don't worry. First day, a lot of things will be going over your head. Absolutely nothing to worry. It takes for a new person about 21 days, approximately on average. Some can do this in 14, some take 90, but let's see how it goes. Good morning. We have one spot here, if you like. New student or old? Okay. Do you want to sit with Dan? Majid, there's a couple of students sitting in the other office. Okay, no problem. Thank you. So swing retraced extension, this trade is still working. It is still profitable right now. So you have two blues and now a black. So the price went down, made a black candle, and no problem. देखिए अभी क्या चल रहा है, ब्लू और ब्लू क्या आया ना, तो उसके बाद क्या आया, ब्लैक. तो ब्लैक की ब्लैक कैंडल से नीचे बेचना है. हाँ हाँ मैं कर दूं. हेलो. There's one spot right here. 1 and 1. We have 2 spots and 1 up there. 3. इधर दे दें, no problem. So it gave you 6.25 minus 4.7. So I already got a 1.5 point from this sweep retrace extension as well. So our swing retrace extension second trade is done. 2 blues and a black. So you're done 3 out of 3 trades. For anybody, so you saw higher high, higher low, lower high, black candle to the downside. You're done. So हो गया जी 1510 पे आपका दूसरा ट्रेड हो गया. Higher high, higher low, lower high, black candle to the downside 4.75 and sell, and you got your 2 points. So my job here is just to give you awareness the trades are coming. You're going to take the entries yourself. नहीं blue नहीं है. ये देखिए ये इस कलर किस कलर में blue. ये किस कलर में है? So blue black meaning trend down, black blue meaning trend up. So that's the easiest way to remember. Blue black and the trend down. नहीं कलर हमेशा से सर 18 सर ये मेरा फॉल्ट. वो देखिए आसान कर दिया ना. Blue black down, black blue up. But if you're using a black color template, this is not going to work for you. Remember that. So but you should be able to extract 2 points out of this trade. This was 4.75, so we saw a 7-point swing. Oops. Everything's okay, hopefully.
Sorry, we're running a little bit out of space, but we should be okay. Good morning, Ji. Hopefully somebody was paying attention. I didn't take this trade because I'm below S2. So I want to take the long trades. Low to go high is my plan. Huh. I'm 20 seconds ahead. Yes, yes. Yeah. So I'm 20 seconds ahead. Worldwide, legal reasons. Yeah. I know. So there's a delay and ahead by legal reasons. So anybody cannot say, hey, I'm copying trades. So, right? So there's a very specific reason to delay it. Just like an audio station, if somebody swears on TV and radio, they have enough buffer time to cut it, right? Same thing we do. We delay our stream. No, you have to listen for concept, not the trade signal. Trading, you have to do yourself. Even here, I'm just saying is you saw black, blue. Sorry, blue, black, sell. So that black candle, so the trade I will explain today is called swing retrace extension. I will explain mid-band trades and I will explain your area trades. But let's, Daniel is gonna speak, so I gotta just bridge him in for the live stream. I think we are okay for audio. Everything is okay. Let me just get this going. Flowbots. 1982. Damage तो नहीं हुई? गिरने से बचत हो गया IBM है ना तो जी निंजा खोल के सिमुलेशन पे क्लिक करें आज डे 1 है आपका नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं I will get you going absolutely हैं कोई बात नहीं हम जनरली क्या करते हैं ये पूरा सेक्शन डे 1 का रखते हैं राइट कैसे है क्या देख रहे हैं क्या होगा I'm going live. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Shri Akal. Just let me turn on the mic. So, yeah, microphone check, guys, if you can hear me. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Jain ji. Walaikum salam. Good morning.
Good morning, Saurabh, Vikas, Ash. Good morning, Choisab. Good morning, Abbas. Bhai, welcome, Salam. Halim. Good morning. Sunil Ji, Rizwan Bhai, Samir. Good morning. Ranjit Ji, Clifford. Good morning. Jagdeep Ji. Good morning. Alpa Ji, Lal Ji. Good morning. Yes, but Harleen Ji, just wait for a few minutes. I'll explain. Expected low is good. Low to go up would be a good strategy. So Gaurav, good morning. Prague, good morning. Manpreet Ji, good morning. Ji, good morning. Everybody, quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decisions, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes. Always place your stops and always ready to accept those losses and do what you see. Don't do what you think and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on our graph are not buy and sell offer or buy and sell areas. Those are just for information and education purposes only. And we take no responsibility for any action taken by any subscriber. S2, break S2 and the testing S2 already tested our 57 area and heading towards the Friday low and break the Friday low and creates a diversion. We are in a multi-diversion on our 240 chart. Very bad situation right now. And overall, if you look at the news, today we have President Trump's speech tentative. We don't know what time. And then tomorrow is very, very important. Tomorrow and day after tomorrow is very important. Wednesday, our inflation data is coming. And then we have core PPI is coming on our Thursday, and PPI is coming on Thursday. And Friday, our University of Michigan, same thing. Inflation data is coming. Today, low to go up and stay in downside from magenta mid-band and try to avoid, if you get stuck in the trade, try to avoid holding the losing trade and buy, please. This is a request to you guys. So don't think price will bounce back up and you will hold. Get out and then you can enter again. Below PP, below value area right now, and open with the gap. And in my opinion, it filled up the gap. The price that went up around 12 to 1 o'clock, it filled up the gap because the low we had at S&P was 5760. Again, the gap is filled. And same thing with the Nasdaq, the gap is filled. The gap is filled at 150 to 20,150. So S&P 500, our high is 58.10 to 58.20. Our low is S&P 500, 56.65 to 55. And that's our expected. And today, no news. Remember, today will be a very nice, smooth, either down and then push back up. But low to go up would be a good strategy. Low to go up would be a good strategy. And Nasdaq, our high is 20,400 to 450. Our low is 19,710 to 19,660. And Nasdaq came down. If you look, 438 points swing to the downside from Friday high. Gap is filled. Remember, gap is filled. 103 points down. So minimum, I'm expecting R1 today. Minimum R1, and R2 will be a very strong resistance today. Keep in mind, our R2 will be a very strong resistance today because we have a cluster there. And R2 is our high of the Friday. Low of the Friday and high of the Friday will play a very big role today. If you look at the Dow, went down 630. Dow is not going down the way it used to be. It's supposed to be down around 1,200 points or 1,300 points, but it's not going down. And Russell 2000 is dead. It's just flat, dead, not doing anything. And then our British pound is going up because euro is, our
US dollar is weak, so that's why if you see British pound is very strong push to the upside. You see against US, British and Euro are strong, but Canadian dollar, we have a tariff war. And look at the Canadian dollar. It's very close to our Friday low, and a big push to the downside for our Canadian dollar. Euro, same as 100% copy of our British pound, below S2 area, bounce back up half at R2 and R1 area, and same thing with the euro. Crude oil went up, base is up, crude oil pressure is up, and right now it's coming down, and it came down quite a bit. Very nice, beautiful push to the downside. Euro is down. FDAX is down. I mean, European S&P is down. FDAX is European S&P. It's already hit our expected low for the day. Previously, if you remember, 2 weeks, Euro was so up, and now it's coming down because of tariff. They're also afraid of tariff, and that's why we have this push to the downside. The gold is flat. Gold hold night just in between S2 and PP, and all pivots are not right pivots because of last night we didn't have a much move on our gold. So gold, I would say low to go up because low. If you look at the low, so our low is somewhere around 28.90 area. So below 90 would be a good strategy from low to go up. Copper just below value area. Same as gold is below value area and copper is below value area, and sitting at PP, and silver and gold are synced. So silver is in the value area and the silver is just slightly below our PP area. And our natural gas, so if you see a blast to the upside, natural gas 76 cents from Friday low, open with the gap and trying to fill up the gap. And if it fill up the gap, it means it hitting our expected low for the day for natural gas. So natural gas, if we get a warm weather, natural gas definitely will see a push to the downside. Bitcoin got really bad hit. Bitcoin from Friday high to Sunday opening 11,225 and went up 4,000. From Sunday, I mean last night, yesterday evening, 4,000, exactly full 4,000 push to the upside. So Bitcoin should retrace back up. Ethereum is up, Ethereum above PP, and we have $162 push to the upside on our Ethereum. Ethereum, Bitcoin, all this is a season for these cryptos to go down. That's a very typical pattern for cryptos to go down, and we will see after July, August, September, we'll see the crypto push to the upside. Always it goes up till December, then after December, Jan, Feb, March, April, May, crypto always comes down, and after we'll see. And remember, keep eye on $70,000 mark, 70 to 74,000, and then push to the upside. So right now, Nasdaq, beautiful, nice push to the downside, getting very close to our expected low for the day. So far it reached to 700 areas, means 87.50 is low, 498 points. The best is wait for our expected low, or just stay in short. Just stay in short from mid-band to go down 2, 3.4 points on S&P, 8, 10, 15, 20 points on Nasdaq, and be happy with that. Actually, we were done from S2, already done from S2 while we're sitting here, 8 o'clock. It bounced back up 20 points, and then from 20 points, shoot to the downside, and 112 points push to the downside on Nasdaq from, S&P from Friday high. Guys, take the areas, and if you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. Sullivan, what's the reason for this natural gas going up? Natural gas storage. Natural gas storage are very less because of the tariff war is going on. So that's why the storage are very less, and that's why natural gas went up big time. And you will see this
Wednesday storage gas will be very, very less. So do you expect it to go up further or go down due to the weather? No, down. Right now, it's already up. So once price is up and the new supply will come and you'll see natural gas. We'll see Thursday 10:30 what storage we are getting. Yeah, but if the storages are low, that means they need to, But it's add already more. up. Okay. It's already up, and natural gas and crude oil, this is the biggest problem with it. Friday, actually, we knew that natural gas storage are less, and that's why it opened with the gap. So now the new storage will come and natural gas will come down. But eventually, it has to come down. I'm expecting $5 something and then push to the downside. $5 is a very nice price for our natural gas. Okay. Thank you. You're welcome, sir. Dear you're welcome. Welcome, everybody. You're welcome. Clifford, you're welcome. Everybody, you're welcome. Guys, don't say you didn't see the setup. Everybody saw the setup, 30-20. Please have taken the trade. All of them, you should be all done right now. Please don't say you didn't take the trade. Experienced users, you had black, blue, go upside, you're done for the day. You're really done for the day right now. I'm trailing my stops right now because I'm still in the trade. I'm up with 5 micros, $135. I'm up. You saw black, blue. That was your cue to go up. That's it. Done ho gaya ji. All right, so 9:40. Today we're done officially by 9:40. 30-20. You had a black. You had a black. You had a first blue. Take a black candle to the upside. Take your 2 points. You're done. Sir, ये मैं आपको बाद में हम 2 महीने बाद आए ना मैं आपको उसके पूरा सेटअप बताऊं ये हर चार्ट में चलता है done so it's done now guys if you took 4 points 5 points 6 points I got hit by 4 points there so new users don't worry about it what I'm saying it's the excitement part from 9 to 11 I will explain everything all of this starts to make sense after a month. But the excitement is that today we are done by 9:40 and we're done. Because when he was about to close it, I saw higher. I couldn't say it because he was speaking and I was wishing everybody saw black, blue, and then we go up. And look how far that pulled up. If you're trailing, literally you're done for the day. So wait for the setup. I hope everybody got it. My per dia is done. Legends is done. Bullnox is done. Take profit is done. Apex is done. Everything is done. Same time, 15 can also. नहीं दे नहीं या लेकिन वो उसके बाद लेना है तो मैं बताऊंगा कौन से मिड बैंड लेने हैं कौन से नहीं लेने राइट ये 30-20 का ये चलता है कोई मसला नहीं होना चाहिए अभी उसमें गैप है 30-20 में हो गया जी नहीं अभी नहीं यार एक टिक रह गया वेट करें लेट्स सी 1 पॉइंट दिया अभी 1 पॉइंट हुआ ये जाना चाहिए जी आगे लेट्स सी देखते हैं 30-20 वाला मिड बैंड रिस्पेक्ट होता है या 15-10 वाला क्योंकि 15-10 वाला एक रिट्रेस तो आ चुकी है ओके देयर यू गो वर्कड सर ऐसा ना कहें यार आके भी चला गया यार मिड बैंड 15-10 की बात कर रहा हूँ अभी 30-20 तो आया नहीं ना तो 15-10 वाला स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ था because you have to make sure the stop loss is 8.5 the black candle तो ये मिड बैंड भी आप now remember 15-10 में blue black आ गया है ठीक है let's see how far it can go down no still wants to go up
So these will be called sell stop orders, right? So you follow this, nothing will go wrong. So far, we are up 4 trades, 4 out of 4. I only took 2. So I will wait for the next setup to go, and which I'm planning right now. I will buy from expected low. Well, let the price go to expected low today, and then we'll be buying from expected low. Somewhere around 50, 65, 60 zone. Doesn't matter. We don't know if it's already done. I didn't take Nasdaq S2. I too scared to take Nasdaq at a middle level. I take Nasdaq for like expected low. Because by opening it just blasts to the downside and अंदर गए हैं शायद यहाँ बैठे थे ना white shirt में मेरे ख्याल अंदर गए शायद washroom ना गए. All right. That wasn't a black candle. It's coming from a higher high. So it's not coming from a lower high. ये mid band भी आपको 1 point दे गया जी. Green to go up, red to go down. So So if it's green, now 30-20 maybe. Let's see. And 15-10, too fast. That's our 1, 2, 3rd, 4th mid-band, which has worked. So if you're just taking 15-10 mid-band, your 4th mid-band has qualified you for a couple of points. Congratulations, Rizwanji. 600 bucks on each account, 20 accounts. Great. Congratulations, Jay. This is done for the day. Congratulations. So, first lower high. Let's see how far it can go after the black candle. Is it going to give us 2 points? 4 points, just 2 ticks more, and we are done our trade. There you go. 2 blacks and a blue, 2 blue and a blacks. We got a black candle to the downside, and gave us 6.5. So 6.5 minus 4.75, almost 1.75 so far. One blue is up and one blue is down. Yes. So And then- 3rd is a black one. So that's your clue that I'm about to go down. If you have a black, and a blue, then you have a clue, just like we had a 30-20. Because some users are getting confused with higher highs, higher lows. In this white template, we are calling it black, blue, blue, black. That's your, so colors are easier to see. Right now, price is in consolidation. Which way does it want to go? So price should go and test 56.94 again, and then that's where the Fibonacci boxes will show up. In no, 56.94. So right now 30-20 mid band worked. हो गया जी 30-20. एक पॉइंट उठाते जाएं जहां जहां अपॉर्चुनिटी, लेकिन लॉसेस में लंबा नहीं बैठना. अगर आपका फॉर्मूला गलत हो गया, मिड बैंड नहीं रुका, तो बाहर आ जाएं. ये नहीं है कि उसी ट्रेड में बैठे हुए हैं. So it should go and test 56.94. That's called the Fibonacci trade. Bottom of the green lines. Green box. So for new users, the way we teach is at the beginning, don't worry, just watch. Your job on day 1 is just watch. First 1 week, you'll be just watching. No making money. Because it has to make sense what I'm saying. His brief, the day you listen to his brief and that makes sense, you're a rock star.
Fibonacci works, the retrace, let's see. So my job here is to kind of alert you. Hey, watch this, do this. What is happening? There you go. Your mid-man worked was coming from a lower low. You're done on a mid-man going down. Beautiful. Beautiful. 30-20 was not. नहीं उस सर वो देखें उसका कुछ और है 30-20 में बैकग्राउंड सेम था ना तो बस वही वॉच करो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर दोनों लोअर लो ठीक है लेकिन क्योंकि यहाँ सिर्फ रियली कंडीशन बैकग्राउंड की होती है क्योंकि आप 15-10 को देख रहे हैं Don't worry. Again, you're getting ahead of yourself. आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी सिर्फ पहले दिन आप सिर्फ ऑब्जर्व करें सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपने 4 वीडियोस देखनी है जो मेरे से आपने 4 लेक्चर सुने हैं ना 4 वीडियोस रहती हैं अभी उसको आपको बताना है कि आपकी हर चीज कहाँ लिखी हुई है जब मैं कहूँगा फिब बॉक्सेस उसका क्या मतलब है जब मैं कहूँगा मिड बैंड है उसका क्या मतलब है I took a divergence trade on 15-10 divergence trade बना black candle to the upside and I'm done my trade here चार्ट का नाम है 15-10 30-20 अंदर लिखा हुआ है Alright, so सर फॉलो करेंगे हर दिन मजा आएगा ट्रेड करने का कोई ऐसा बगैर फॉलो करेंगे इसीलिए अहद आपसे दरवाया उर्दू में अहद कहते हैं प्लज you will not here for gambling randomly is it going up is it going down no so वो फिब के अंदर से आई है ब्लू मैंने देखा नहीं था ग्रीन के अंदर से आई है कि नहीं वो जो 30-20 की रिट्रेसमेंट थी एक सेकंड पहले ब्लैक होगा ब्लू और ब्लू अच्छा ये पक्का ना कर लीजिए कुछ लोग ब्लैक टेम्पलेट यूज कर रहे हैं कलर उसमें ये कलर डिफरेंट है अगर आपको सारा कुछ व्हाइट नजर आ रहा है ना आपने ये वाले नंबर रंग देखने हैं हायर हाई और हायर लो के ब्लू है ना तो मैं इसलिए कह रहा आसान है कुछ यूजर क्योंकि 90% यूज कर रहे हैं ये टेम्पलेट कुछ यूज कर रहे हैं ब्लैक कलर की डार्क टेम्पलेट में ये कलर ब्लू नहीं है ये कलर डिफरेंट है तो कई तो कंफ्यूज हुए वो कहते हैं यार हमारे पास तो ब्लू आ नहीं रहा तो ये जस्ट क्योंकि मेजोरिटी ब्लू कर रहे हैं ना ये यहाँ मिड बैंड आया आपने 2 पॉइंट ले लिए डन ये मिड बैंड ट्रेड लिया किसी ने लिया जी 4 पॉइंट हो चुके हैं आपके थोड़ा स्लो डाउन हो जाए ठीक है अब सेटअप बनने दें क्योंकि ये वापस नहीं करने हमने पैसे ठीक है जो ले लिए 9:30 से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में हमारा काम तो 9:40 पे हो गया था लेकिन एक सेकेंड ब्लू ब्लैक आया तो इस कैंडल से -4.75 करना है और यहां लगेगा सेल स्टॉप वेट करें अभी ये जा रहा है थोड़ा सा ऊपर रिजेक्शन वे क्या है ये शायद इसको तोड़ दे एक्सटेंशन आ जाए लेट्स सी थर्टी 20 में कैसे हाँ ये देखें दो आगे खत्म हो गया इट्स टू लेट हो गया आप पहले रेडी है ना ब्लू ब्लैक डन ब्लू ब्लैक डन 5 ट्रेड्स आर डन वो जैसे ही नजर आ जाए आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहां से बाय करना है जाने दें इसको एक्सपेक्टेड लो पे जाने दें ये नैस्डैक इस वक्त एक्सपेक्टेड लो को टच कर रही है जाने की कोशिश कर रही है बेसिकली लेट्स सी ये भी सेटअप किसी ने लिया था ब्लू ब्लैक वाला डन ठीक है ना कोई बात नहीं एसटीपी 4 पॉइंट 2 दिन के चले जी असल में स्पीड बहुत है इसलिए आपको एटीएम से करना है
देखें आज वो भी आ गया ना, जिस स्पीड से आज काम हो रहा है। ये तो किसी ने मिड बैंड ले लिया, ये मिड बैंड ट्रेड आया था इस दौरान बातें करते हुए, उसने मिड बैंड से आपको 5 पॉइंट दिए हैं। आपकी एक्साइटमेंट आ जाएगी आपको अगर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट समझ आ गए। अब ब्लैक ब्लैक ब्लू आ रहा है जी, याद रखें 15 नहीं हो गया, खत्म, दैट्स नॉट अ ट्रेड। नहीं नहीं कुछ भी नहीं सर, अभी वो ब्लैक ब्लैक आ रहा है सब कुछ, कोई ब्लू नहीं आया। Don't worry, all of this will make sense, guys. Every single one of it. ठीक है, सब कुछ सही है, ब्लैक ब्लैक आ रहा है तो मिड बैंड तो ठीक है। So let it go to expected low because Nasdaq is almost heading into expected low now. 19,710 is the anywhere from 710 to 660. ये स्पोर्ट से नीचे आ गया, गिर चुका है। अब ये जाएगा S3 की तरफ। हाँ जी सर, एक सेकंड। $30.20 mid band gave you something. Wait for 30.20. Let's see if it, and green one on 15.10 is. Nasdaq is going to pull up, maybe go to expected low. Wait for Nasdaq to go to expected low, 90. सर R1 R2 दोनों में स्ट्रांग है R2 आज नहीं, पहले मैं लूंगा SES का R1 लूंगा, Nasdaq का मैं R2 लूंगा, क्योंकि Nasdaq का बहुत कम गैप है R1 और R2 का। लेकिन जो ES है ना, उसमें काफी चीजें पड़ी हुई हैं। ES में वैल्यू एरिया पड़ा हुआ है 60 मिनट का, उसमें मैजिक बैंड पड़ा हुआ है, R1 पड़ा हुआ है, 60 मिनट में मिड बैंड पड़ा हुआ है, तो मल्टी रेजिस्टेंस है R1 पे, तो R1 से सेल करेंगे। लेकिन मिनिमम उन्होंने आज मॉर्निंग में कहा है ना कि चांसेस है कि R2 तक भी जा सकते हैं। सर एक सेकंड, ठीक है, हायर हाई से आ रहा है, लेकिन उधर अभी एक्सटेंशन है, उधर अभी रिट्रेस चल रही है 30-20।
So right now market is, सर हर मिड बैंड फौरन ना लें क्योंकि अगर कुछ मिस हो गए हैं तो कोई बात नहीं. Okay, 192. Because Nasdaq is trying to see, should I go to expected? So the number of expected low was 710. It returned from 740. So it may help users that I'm going up, but rather this the candle may get to expected low. So 740 to 710. Yeah, we got lots of room. Divergence on the 1510 mid band. So in about half an hour, I'll start the day one orientation for everybody who's just joining in. Nasdaq जाएगी जी expected low पे जा रही है वो मेरा ख्याल है Wednesday to Wednesday to Wednesday to now another Wednesday 3 Wednesdays plus 2 दिन extra एक छुट्टियां करें तो 7 14 21 almost 21 दिन से expected low पे opening पे जाते ही expected low पे जा रही है. Fibonacci boxes, let's see. Remember, you have a black, blue on 30-20 now. Just keep an eye on that. On 30-20, you have black, blue. अभी नहीं, अभी और नंबर चेंज हुआ है, ट्रेड नहीं लगा, कोई लॉस नहीं है, सिर्फ वो नीचे वाला नंबर चेंज हुआ है. It's going down. Okay, changed. That order is no longer valid. So don't take that order because now you have black, and next black. It has to be black, blue. So if you don't have a, then don't, because Nasdaq is almost inside again the expected low. So let it fall, please. And if you want to stay in short, sell from mid-band 1510 because I see everything okay. Let's see. Hopefully it won't. Let's see if it respects it, the mid-band. One more second. Not 7.75. 8. Yes, 100% that mid-band worked. So make sure your stop losses are 8.5, not earlier, because that's a gap trade on 30-20. So Nasdaq is almost very close to expected low, guys. So be very ready. The moment Nasdaq goes into expected low, we're gonna have ES go definitely below 60. ES is a bit far, so maybe Nasdaq will hit faster than ES. Nasdaq is almost 7. Lots of opportunities will come, guys. Don't worry. Don't worry. 39, 25. Nasdaq is inside expected low, guys. Let's see. And almost ES is very close to expected low.
एक्सपेक्टेड लॉ से बाय करना है। हो गया था, लेकिन ES Nasdaq का हो गया, एक्सपेक्टेड लो पे टच हो रहा है वो थोड़ा सा. We are in 709, it touched and it went back up. Shot back up, guys. That mid-band worked again. Now we have a higher low. Remember, we have a higher low now on 1510. Get ready, guys. 1510. Let's see if it makes a lower low or not. No, no lower low. Oh. There you go, below expected low, very much both markets are. नहीं अभी नहीं, अभी ब्लैक है जी, जा सकती है यहाँ से सीधा, लेकिन Nasdaq तो हो गया, एक्सपेक्टेड लो इज डन. नहीं, बॉटम अभी दूर है, तो या बन सकता है, पॉसिबल है. $15.10 mid band worked again, and 30-20 mid band is another gap trade. If Nasdaq rises from here, it should. Now we have a first higher low. Let's see. Wait, not yet. It has to make a black candle to the upside first. Not yet. Still Nasdaq doesn't want to pull up. Oh, Nasdaq गई almost 500 point again गिर गई. Every day यही हो रहा है जी. No, so expected low is our number. I think it should go up from this double bottom. Double bottom is still kind of a. Now it wants to push up. You guys can consider double bottom as a blue as well. Just saying double bottom is kind of a blue. Your voice is not coming in. No. Sir, मुझे किसी ने अभी
कुछ मैं लाइव चल रहा हूँ सर, मुझे अगर कोई आता मेरा व्हाट्सएप भर जाता। एक सेकंड, 100% कोई मसला नहीं। जूम पे भी एवरीथिंग इज ओके। डबल चेक can I get WhatsApp confirmation if my audio is okay? Now we have another higher low, guys. One more time higher low. सर एक्सपेक्टेड लो भी करता है नास्डैक, हो गया, Nasdaq का expected low done है, एक्सट्रीम बहुत बहुत नीचे। Mid band, this is consolidation right now. Let's see. So only gave us a tick in that. I'm still in that trade. It should pull up and go to the moon. There you go. 1 point and a little bit of a rocket. Done, done, done. Your trade is done, guys. Hopefully everybody took that trade. Please don't say you didn't take it. At least give you 2 points. 1.5 points at least. It's working, right? I don't have any. Have the thing. Okay. Yes. But 1.5 points we got from this higher low to the top. So again, black, blue, black candle to the upside. Now price is kind of consolidating. Let's see which way it wants to go. Too many black candles, too fast. So let it go to expected low maybe. And then you join in. Almost expected low, guys. ये 665 पे क्या चीज, सॉरी, बाय में 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। No, 5665 area जी। हाँ। So wait. There's a divergence on 30-20, so it may break it and go to the roof though. Let's see. The time will tell. I can't say anything. Because the 30-20 divergence have seemed to fail too. We got something. Still, let's say color changes green. Yeah, we got divergence confirmed. The moment you have it, now every mid-band is okay. It's going up, hopefully. We got out of a danger zone. Let's see, first mid-band 1510. No, not yet. This should shoot to the moon now. Trail. If from that mid-band. Good. Keep trailing. It's gonna go up. ठीक है जी। बाय किया है, ठीक है, मिड बैंड से बाय है। ओके, नो प्रॉब्लम। ट्रेल अब खत्म हो गया, ट्रेल एट द बॉटम इज डन, इट केम। आपने ट्रेल किया, ठीक है। अभी भी एक और मिड बैंड चला और वह गैप ट्रेड लेके निकल गया आपका। Both are higher highs, so your positivity is now going in the right direction. It will shoot up. At least it should go to S2. Should.
All right. I am done my trading. Now I will switch over to you guys to kind of teach what is going on. Expected low is done. Expected low on Nasdaq is done. I'm calling 68. If you want to take expected low of ES, please 65. Not any or R1 for your ES. So that's the only trade I'll be taking right now. That's the only trade. Yes, the lower version of ES. Audio is perfect. UT lag is streaming. It's Zoom is good. Everything is good. Another mid-band work going up. So now everything is green. Keep buying. Keep buying. If you miss that mid-band, don't enter again, please. Don't enter the same mid-band, please. So you are at the bottom. No problem. It should really, truly go up now to back to S2. Let's see. मिड बैंड हो गया ना बाय बस ठीक है 30-20 बॉटम ऑफ द बार है बाय हो चुका है क्योंकि वो उसने मिड बैंड टच किया गैप ट्रेड बनाया दोनों ट्रिगर खुले हुए हैं अब इसने S2 की तरफ जाना है दैट सिर्फ नैस्डैक ने देखना अगर नैस्डैक गई दोबारा एक्सपेक्टेड लो पे तो ये 65 पे आ सकती है तो अगर बाय करना है तो 65 पे क्योंकि 65 S3 का बॉटम रेंज है नहीं हो गया सर आके चला गया 30-20 का भी चला गया 15-10 भी निकल गया उसने 2 पॉइंट दिए थे आपको हाँ हाँ आप लोग 10 मिनट डिलेड हैं आपका चार्ट ऐसे दिख रहा है हाँ तो आप लोग 10 मिनट पास्ट में चल रहे हैं Hopefully everybody took Nasdaq on expected low. Expected low Nasdaq ने लिया किसी? आपने लिया Nasdaq expected low. Good, perfect. चला गया जी चला गया डन है ठीक है Okay. No problem. Take your time. Take your time. Only thing left for us is 87. पहले हाँ 87 रहता है. हाँ ये तो हो गया. ये हो गया. मैं सिर्फ ना ये जो टेबल पे रह गया ना खाना वो सिर्फ देख रहा हूँ कि रह क्या गया हमारे पास. पहले नाइट 87 करेगा. एक सेकंड 50 पहले 87 टच करेगा क्योंकि उसने नाइट सेशन लो को 86 से आ गया ना तो मैं ये भी उतार रहा हूँ अब मिड पॉइंट है तो हमारे पास टेबल पे रह गया 5777 नाइट सेशन हाई एंड वैल्यू एरिया दैट्स ऑल लेफ्ट फॉर ट्रेडिंग फॉर टुडे meaning those are the only support and resist and R1 R2 and R3 if you're done your trades please don't gamble right now and try to get greedy please why is 86 is bounced this was 86 was your night session low so this may act as a resistance for now so it's okay 86 नाइट सेशन लो था ना तो वहां टच करके वापस आ गया ना तो यहां पर अब बनेगा एक हायर लो ब्लैक ब्लैक ब्लू बनेगा ना तो उस ये देखें बन गया जी बन गया हायर लो आ गया तो 56765 विक्रम भाई आपका हायर लो आ गया सर बता रहा हूं इफ यू वांट टू टेक इट इट्स अप टू यू बिकॉज़ इट हैज योर हायर लो नाउ So right now you have a black and a blue on 30-20.
अच्छा MES का डिफरेंट है, ये इस वक्त ES दिख रहा है ना, तो ये ES का डिफरेंट है, ये चल जाएगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 8 and 8.5, तो इस नंबर में 8.5 करेंगे, ब्लैक कैंडल पे बाय स्टॉप बनेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट डन है तो डन है, यहां पर बाय, क्योंकि ये लेकिन वो ट्रेड है जो आपने अभी सीखा नहीं। आपको 4 क्लासेस में सिर्फ ग्रीन टू गो अप एंड रेड टू गो डाउन सिखाया गया। ये थोड़ा सा एडवांस ट्रेड है, लेकिन मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं नहीं, ये ट्रेड ही डिफरेंट है, ये फ्यूचर का बाय है, ये करंट बाय नहीं है। हमने इस प्राइस से नहीं बाय करना, जब प्राइस फ्यूचर में जाएगी ना उस वहां से बाय करना, तो इसलिए आपको अभी कंफ्यूजन रहेगी। बाय स्टॉप लिमिट नहीं, आपने ATM लगानी है, वो ATM के साथ खोलना है, ठीक है। सर आप डे 1 में बहुत थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा, मैं आपको सारी चीजें एक एक करके दिखाऊं। 660 वैलिड है, क्योंकि नैस्डैक दोबारा उससे भी नीचे उतर गई ना, पहले 660 तक आना चाहिए ना, वहां से 2 माइक्रो लगा के पक्का लंबा छोड़िएगा। 1 माइक्रो देखते हैं कहां जाता है, चला गया मेरी जमीन 6 है, ये जो है ना 660 नैस्डैक की बात हो रही है, MN की, एटलीस्ट 100 पॉइंट निकलेगा, एटलीस्ट। अगर यहां से वो चला गया ना वापस, हाँ जी, तेईस और 27। Let's see. So waiting for 60. Yeah. So that trade is gone now. That we don't take that black candle trade now. हाँ ठीक है सर, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हर चीज तो उसने हमारी नहीं ना माननी। So you have another setup coming in ES 3020. You have 2 blacks. We're waiting for the first blue. 2 black and first blue. 3020. Let's see if it goes this time. शायद आपको दे जाए वो 60 वाला. There you go. पहला blue आ गया आपका. But it's heading down. So आपका Nasdaq आ गया था उसमें. हाँ जी, उस एक आपका एक MQ रेडी हो गया होगा। ES का वेरिएंस वाला रेंज नीचे वाला, लेकिन मैं अभी तो SRES वाला ट्रेड देख रहा हूँ। So 5669 plus 8.5 is your black candle to the upside on 3020. So that would be a buy stop limit, and always use an ATM there, please. So you have a lower low, lower high, and the first higher low.
Let's see which way it takes. ले गया जी. Don't say you didn't take this trade, please. Sir, done हो गया जी. Very good. It's gonna go to the moon now. सेटअप्स बनते जाएंगे, ऐसे आपकी हर सेटअप में आपकी आईज लिट अप हो जाएंगी कि मैंने लेना है ये ट्रेड. आपने लिया जी वो ट्रेड, ब्लैक ब्लैक ब्लू वाला, डन. कितनी गई है हमारे पास? 12 पॉइंट. आपको मिले हैं एटलीस्ट 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट. अभी भी जा रही है ऊपर, अब इसने ऊपर जाना है. डन हो गया. अब हर मिड बैंड लेते जाएं ऊपर. बैंड कीप टेकिंग इट टू द अपसाइड. हो गया जी आपका मिड बैंड. ए तो टिक से रह, नो प्रॉब्लम. सो मिड बैंड भी वो लेने हैं जो हाई से आ रहे हो. लेना बोनो ग्रीन है, बोनो दोनों हाई हैं. सो RU is fine. Thank you, Sunny. और से लॉन्ग किया हुआ? डन फॉर द डे. ओ रात को ही डन हो गया. ओके. Sorry. 30 more seconds. Just gonna take a quick break. By the time you go on this and you can this
इसको सपोर्ट का दिक्कत या अरगोना का मेरे में तो ये ऐसे ही आपके ऐसे मेरी भी तो स्कूल APT है ना नीचे आ गया काफी इसको तो रेंज दिख रही है ये मुझे आ रहा है 800 आ रहा है पिक्चर में आता है ये 800 दिख रहा है ये 800 है इसको बंद कर दो दोबारा खोलो नहीं तो और कौन यहाँ मूव करना बोलो ना नहीं कर दो क्योंकि इधर ओरिजिनल सेटअप है चलो अब दोबारा करना जैसे कि जमा कर मेरे तरफ से 15 दिन में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए विदाउट मनी All right, guys. So let's get you started. The newcomers. सर जिधर मर्जी जाए अब मैंने तो खाना खा लिया अब वरना वामट शुरू हो जानी है अगर हाँ जी पूछे पूछे yes The live price supposed to be up. yes so you will do a buy limit मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ अगर प्राइस कहाँ खड़ी है और नीचे के ऑर्डर को क्या कहते हैं ऊपर को क्या कहते हैं ओके ओके एरर क्या दे रहा है सर मुझे पता चलता नहीं अच्छा जब ये एरर आए ना इसका ये मतलब होता है कि आप लोग 56 यूजर बैठे हुए हैं अभी 30-35 इधर 10 उस रूम में तो ट्रेडर वेट क्या कर रहा है वो अलाउ नहीं करने देता इसका आसान तरीका है एवरीडे आए ना हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें अपना जो फोन का हॉटस्पॉट उससे आपने कनेक्ट करना है उससे चलेगा तो इस वक्त ये फंस गया है उसको क्योंकि उसको इतने ज्यादा यूजर्स एक ही घर से जा रहे हैं ना तो वो कह रहा है कि हाउ कैन आई कनेक्ट तो प्लीज हॉटस्पॉट जरूर रखें 1510 में आपको पास हायर लो आ गया जी सिर्फ मैं साथ साथ थोड़ा बताऊंगा सो older users please just continue to trade I rather give all the attentions to the new users because I have to do the orientation of their day one so I would highly recommend just keeping your phone volume down and then I'll get to you as soon as possible so all right is my audio okay yeah just to double check try right yeah try one click ठीक है अभी इसकी स्ट्रेस ना लें तो let me give you some orientation so welcome everybody who is joining us here for the first time ever so these 90 minutes next I will answer quite a bit of things what you're doing why are you here what can you expect how long everything so my name is Rafi take down this cell phone number 647-228-0694 this is a WhatsApp number. I don't pick up phones. I have so many members worldwide. You call me, I will not answer. It will go to SMS or send me a WhatsApp. Somebody will read it and then they will try to get to you. So I don't pick up a phone. So 647-228-06. So the fastest way to get a hold of me is through WhatsApp because that number is read by 4 individuals. They can open it up and see what kind of questions you have.
Here, all the Win Life, we have two companies, by the way, not companies, I should call it trading floors. If you are the Win Lifetime member and your chart stops working, meaning the colors go within your charts, nobody can help you except Daniel, right? So he is your first line of support in terms of everything else we will do. We have 15 employees, 2 trading floors. We've been here since 2008, but only thing I don't have access to or the team is the Win Lifetime charts. So just remember that. With this software that you have in front of you, it's a trading algorithm. What it does is it predicts the future, what will happen in the market next. So it works for stocks, options, crypto, market, every single thing. It's not limited to just one thing. You have completed your 4 classes, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday. I know by the time I took the class 1, in class 4, I had forgotten what was in class 1. It's very natural. I've been trading for 20 years, but futures were new to me about 4 years ago. I heard him on Red FM. I came in, took the course, and then I signed up, and I've been trading since then. It's very easy, very effective, very fast. That's why we do futures trading. So today, I'll be focusing on futures trading. We won't get into stocks. We won't get into options. We won't get into crypto, but strictly futures trading. And the reason why, I'll explain that shortly. So the 4 classes you have taken, they're all recorded online. Every one of you got access to superareas.com. It's a membership portal that gives you everything. It has your areas. It has your chat to talk to the support. So that's your starting portal. When you go into Super Areas, all 4 lectures are in there. Now we re-recorded everything in Hindi. So we have all of it in Hindi, all of it in English. So there are 5 videos that you want to refer to some old concept that Daniel, because some users don't want to wait till next Saturday to get a class 1. And then you have a class 2 on a Sunday, then you have a class 3 on Saturday, class 4 on Sunday. You want to see so you can, anytime you can log on to superareas.com, and let me show you where that is. So when I log in, right here is your study material for this software. So it's a green line that's going across, and if you click on it, there are these videos. So lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4. So 4 lectures are in Hindi. Same thing, the 4 lectures are done in English now. So if you prefer English, you prefer Hindi, your choice is there. And then there's a bonus video for some experienced users who want to know, hey, is there other ways such as areas, value areas, pivots, pressures, psychology of it. So that's a bonus video. I would highly recommend you to watch these videos over and over and over again, because if you have no experience in trading, it will take you about a month to start understanding some basic terms. What is an ES? What is 1510? What is 3020? Where am I saying buy limit, stop limit? All these things will come to you. Trust me. 95% of the work we do for you technically, you just have to learn how to buy and how to sell. That is it. From where, we will tell you. I will tell you. Software will tell you. So before I get into it, a little bit of a background about me. And I'll always give these presentations on the Saturdays. In this term, they say sky is the limit for ambition. We say sky is the beginning. The amount of money
that moves in online trading is too much for any one of us. So if you see somebody bragging, I made 10,000, 20,000, 100,000, 500,000, they're arrogant. There is no amount of money, like just forex is $5 trillion, right? So once you become an experienced trader, stay humble, because market could do anything to you anytime. So it's the amount of money you will be making, 1,000 a day, 2,000 a day, 10,000 a day. I have users who are now making easily 10 grand a day. They started with 100, 10,000 a day is not a big deal now. So, you don't need fancy setup. All can be done through one small laptop and one monitor if you ever need it. Generally, most users are trading only ES. They don't need a lot of setup. Our disclaimers, Daniel has gone through it. This is not a about me. Why did I write 45 years in the making? I'm 45 years old. I've been doing this for 20 years, and primarily I've been trading futures with Daniel for approximately 4 years. I know the company's been around, so when I joined him, I didn't have any futures experience. This is Conestoga College in Kitchener, about an hour west from here. It's a small city, Tri-City, Kitchener-Waterloo, Canada. That's where I grew up. This is where I went to school. This is where I went. And I'm involved in software for at least 2 decades. So I was able to represent Canada in IT software writing like 25 years ago, 20 years ago. So this is me representing when I was young. So our background for software is very, very strong. It's not a one-man show. We have 15 people, 4 data analysts. So this is not a company that's just going to give you the software and just say, thank you very much, right? So we have a very, very strong understanding of the software. Why are you here? This is all. Anybody can learn. I have used the fastest person who sat here and did Apex, Gurvinderji. He made $400,000 in 90 minutes. That's an exam that you able to take 20 accounts, 20,000 each times 20. So that's the fastest somebody has done in 90 minutes. So if somebody says I can make 100,000 a day, it's not a big deal. So what will happen is once you learn to trade, our goal to make sure is you do this $100 a day, then we'll raise it up to 200, 300, 400. Once you know this, you can sit in front of this 23 hours a day and you can trade. Meaning this market runs 23 hours a day. This is not 9 to 5 job. You can do this all. Okay, so coming back to a little bit of here. Saturdays, we do our seminars, and we have another office, 1575 Trinity Drive. We do every other Saturday, not like, so this yesterday, I didn't do a seminar there. So we have next Saturday, we have a seminar that we will talk pure technical. So if you are excited and you want to learn some basics and advanced trading, so we have a group that gets together every other Saturday at this location, 1575, and you're able to come there. We touch 15 markets. Some of you may know these markets, some of you don't. S&P 500, Nasdaq, Russell, Dow, all of that. New students, a person who has zero knowledge to understand the brief about 3 months. The faster you can pick it up, it depends on you. One more thing, last thing before I show you the basic of the software. Please, we will never invest our own money. We will take funded company. Sorry. That's good, son.
15 to 15, 10 भी है, 30, 20 भी है, ये नहीं है। हाँ, 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 इस पे मुझे आपका बोलता है, नहीं, आपका क्या इसमें लिखा है? सब कुछ हो रहा चाहिए तो इसमें March 7th. ये आपके भी सीमित हुआ ना मार्च कल आ गया 9 आ गया बना के 10 पे क्लिक किया हाँ यहाँ से करना पड़ेगा तो पहले कैसे किया आपने याद है? पता नहीं कैसे किया आगे नीचे Give me 30 seconds. ऐसे तो बहुत लोग चले गए Yeah, Nasdaq is down to 603. विवेक कुमार है यहाँ पे कोई यहाँ पे विवेक कुमार Nasdaq is extreme low जी अगला एरिया S3 तो खत्म हो गया या 599 500 सीरीज में आ गई जी All right, so the software that you have in front of you is called Ninja Trader. What I would like you guys to do is go into superareas.com and watch a video for tomorrow, please. I log in. So once you're logged in, you will see at the bottom at least the first video. It says Beginner's Guide to Ninja Trader 8.1. It tells you how to open Ninja, how to buy, how to sell, how to limit order. So please watch this video right here, Beginner's Guide on Ninja Trader 8.1. So please watch that. That will help you to open it up. So the program that you have right now is running on demo mode. It's not a real mode. If you open it up and you get a message that you have a delay data, you have to get a new demo account. That's all that means. So every morning, come here, open it up, take a look, and go from. So this video will get you started with the basics on how to do. At the kind. Click on F. Right here, it says F. Yes.
Thank you. किसी ने बॉटम रेंज ली एरिया की? ओके, वो 5650 से निकल गया जी। हाँ, नहीं बॉटम से मैं कह रहा हूँ उतना करीब, तो वहां से तो वो चली गई ना ऊपर। ओके Okay, so when you turn on your computer, the software that you're using is called Ninja Trader. The latest version allows you to connect a funded company. So when you turn on, there's some things are happening. So computer is doing all the calculations to predict the market. So the whole trading universe is, let me open a new thing. So I'm going to write gold, GC, S&P 500, ES, and Nasdaq, NQ. You have, so these are the three common and top markets you will be trading. So primarily your work will be here, S&P 500. Once you are comfortable trading, you can trade anything. I don't care. You can trade like, meat, you can trade grains, you can trade crypto, doesn't matter. But I have to teach you the foundations. So please don't go in any other market except S&P 500, because I have to teach you all the concepts. And basically he teaches Monday to Friday, I lead you into the practical of it. So S&P 500, let's put a number. What's the current price? 5661. There's a price of ES. Will the price go up? Will the price go down? Is what we are trading. This in futures trading, we don't care price goes up or down. All we care about is if our direction is correct. If you say S&P price is 5661 and it goes to 5665 and you are correct, that is $4 in difference, 61 to 65. And each $1 on S&P equals to $50 of profit or loss. So if you buy S&P 500 futures contract at 5661 and you are saying it should go up, if it goes up to 5665, that's a 4-point or $4 difference. And because each dollar is 50, you will get 50 times 4, $200 profit or loss. So the word is called P&L, not necessarily one lot. Correct. So this is 100. It's right now 5661, and it's actually fell down more, 5656. दोबारा आ गई जी आपके एरिया पे, अगर किसी ने दोबारा टेस्ट करनी है तो. It's falling more and more. Falling is okay. ना S3 से नीचे आ गई, ऑलमोस्ट S3 के अंदर है. S3 के बॉटम रेंज आ गया. कितनी मार्केट आज गिरी है जी? 121 points. Incredible. Let's see how far. बुलनॉक्स की सेल खत्म हो गई. अभी लेजेंड्स ठीक है, वो 50 का मिल रहा है इस वक्त, और 56 52 आ गया जी अगला एरिया. Okay, so
Whole day, 23 hours a day, you can open up the computer Monday to Friday, and you can sit and you can trade. So your job is we're not buying and selling S&P 500. It's just a face value of a contract. So we are flipping the contract. We are day traders. A day trader's job is look at some sessions where there's a volume. There are 3 volume-based sessions. You have 9 o'clock, generally 8 to 11 is the first very fast volume. You have 2 p.m. to 5 p.m. is your next volume. And third is 3 o'clock in the morning to 6 o'clock in the morning. These are the 3 volume-based trades you will see quite a bit. That's where the market moves spectacular. And we want to do during the volumes because that's where the most of the money moves and the contracts get traded. So, Yes. So what is the market? So yes. yes. Yeah. Also in the morning? Sorry, you can do all 3. You can trade Nasdaq, ES, gold, Russell. Yes. You have any time limit, like No. So day starts from 6 p.m. A trading starts from 6 p.m. to next 5 p.m. That's considered one day. So today, the market opened yesterday at 6 p.m. It will go until 5 o'clock today. So that's called your one day of trading. And then you will have, yes, 6 o'clock is okay. yeah, no problem. Just the only 1 hour, there's no trading, 5 p.m. to 6 p.m. There's no trading because they got updated. Sorry? Yesterday, the time change effects? No, we Eastern. We work with Eastern. Doesn't matter. So 6 p.m. to 5 p.m. Eastern. So whatever the time right now is the time in the Chicago Mercantile Exchange. Sorry? Best time is 8 to 11 or 2 to 5, or you can trade anytime. We don't care. It's just whenever there's a volume, you're in and out of a trade quicker, right? As a day trader. So your job is a piece of paper, a contract. It has a value. You buy for 6,000. Your job, if you're hoping it will go up to 6,005, you got out. You flip the contract. You made $200, $250, and you're done. Now, same thing can happen where you can say the price from 5661 can go down to 5650. Let's put easier number, 10 points. So if you entered something at 5660 and the price goes down negative 10 points and your direction is correct, you will make 500. In this case, 10 times 50 is $500. So regardless of direction, all you care about is your direction is correct. And that's where we come in, and our software predicts the direction. So since 2008, highly improved software. So all we care about it, hey, is the price has gone to 56.46. It is, I think, the lowest low of this whole 3-week session. Nasdaq, I don't know, the price for Nasdaq has gone to 19,540. It is just incredible how far. So we go with the trend, and we don't care price goes up or down. We like price to go down. It goes down 5 times faster. Imagine somebody sold at the top in the morning and picked up 10 points will happen towards down faster than up. So every day we say, I hope market crashes. And these bulls, the people who rose the market, they were after us for about a year, kept going every day up and up and up. Finally, for the last 3 weeks, price is melting down to a point and everybody's panicking. Why is it at 46? Man, I still think it should be at 5,000. That's a healthy number. I know a lot of people will get scared and say, don't say that. But hey, this is too high in my opinion still. Because of the 2024 bull run, it went to 61.62. Ridiculous. One day we wake up, $20 up, $20 up. So every single thing has a limit to the top. Right now it's melting. It's all deliberate, by the way. These are the big banks and big fund managers are like killing the market at the moment because they're shorting everything. So the richer you get, the easier it becomes to trade. Anyway, let me double check one thing here.
That means the big boys are 100 doing this market. 100%, 100%. So there's no normal people. No, we are the 3%. 97% are failures, 3% are winners, and we want to be with the 3%. So that's the whole idea. You don't want to be out there, just not knowing where to buy, where to sell. So that's where it's so our computer software just did one thing. Price was going down, right? Computer said, if you want to sell from this line. That's it. So computer is predicting for you faster than you can blink your eye. No human can do it. There are 25 mathematical indicators for you that is doing all the job and saying, hey, please do this or don't do this type of deal. Give me a second. So again, computer said if you want to sell here, you should sell here. But if the color changes, you should exit the trade. So when you open your computer, let me get into basics buying and selling. Your job for the next rest of your life will be just buying and selling, not analyzing. That's where we are here for. We will do the analysis part and we'll tell you where to buy, where to sell based on this software. Of course, we can be wrong. There's no person that's 100%, but we will try to say, hey, this is what we believe price should do. If it doesn't do that, make sure you have your stop losses there in case if the computer is saying sell here, but look what happened, price changed the color, exit the trade. Because again, suppliers, humans are trading. This is just the computer mathematical calculations to give you the highest probability. All right, it's shot. Kisi ne trade liya? I don't know. Achha ji. वो मिड बैंड टच हुआ मेरा ख्याल है आ रहा है अभी तक तो ठीक है दोनों के मिड बैंड सेम ही लग रही है मुझे हो गया जी पास मिड बैंड so sorry so computer is saying if you want to buy you should buy here and if you bought it here you're done your $100. That's how simple it is. Your job is to kind of learn where to enter. Where is the computer telling me to buy? Where is the computer saying to enter? ये सर मिड बैंड हो गया आप लोगों का ठीक था ये ना कहिएगा ना लिया यार प्लीज सर इतनी रैपिडली ऊपर चीजें जा रही हैं ये ना कहिएगा कि ये ट्रेड मिस हो गया था यार देखिए वो हर चीज यहाँ से ऊपर ही जानी थी हर मिड बैंड पे So we are the 3% who are robbing the market, who are stealing everything. Computer is saying, hey, like, so I just gave you an example. If you bought it here, computer said buy here. This is a mid-band trade. Green. Both are green. You buy it here. From here to here is 10 points. The swing. Forget about 10 points, 2 points, 3 points, 1 point. You went in, computer says green, buy. You took the ride, you're done $500. Now, what will happen is, by the way, just to kind of give you a bit of a psychology about it, most of you will lose money by gambling. What does that mean? Computer is saying buy, you're selling. That's a gamble. So please don't do that. Number two, if I have 12,000 users of Daniel, if I sit with one-on-one with every single one of them, 99% are failures if they are based on discipline problem. They're over trading. They're not waiting for the price to get to them. So we get paid to wait. So please, if it's green, you're buying. If it's red, you're selling. This trade is okay too, by the way. Stop loss hit nahi hua. 8.5 pe mid band tha. So your stop loss. Now, if again you bought it here, you're done another $200. So there's so much money to be made. It is ridiculously crime here. Yeah. Why is that mid-band line coming at This line? No, that I'll explain. Majority, they'll come in that video on how the whole idea of HH and
Now I will get into the basics of it, buying and selling. At any time when I'm done, you have individual question, just say, I'm not understanding this or that. But please, we'll do that tomorrow. Why? You haven't watched the videos yet on what is Ninja, because I want you to, even on superareas.com, when I log in, you have something called terms. If you click on the terms, there's a PDF for you. This PDF explains everything possible that's on a chart. Every single thing is explained. Like, so when I meant by 1510, that means it's a chart name. This is an instrument. This is the midband, divergence, night session lows, value areas. When I took this screenshot, luckily everything was happening within the time frame. So what I'm trying to say is, the day you understand these terms is the day you will figure out what Daniel is telling you in the morning, the 9:25 5-minute briefing. So today, what did he talk to us? He says, please stay in long from the low. So when the price got to expected low, that's where you buy from. Another midband, almost 8.5 pe touchua, but that was a gap trade on a 30-20. For those that are watching a 30-20, it's a gap trade there. So the terms like gap trade, midband, divergence, overbought, there are truly only 5 or 6 things you are going to learn and master it. So I know I'm going a lot in one, like, whole orientation in one day. We're going to break it down. So today I have to give you the full, and then tomorrow you'll watch the video and you say, I don't know what if this is, I don't know what that is. That's where I come in from day on forward to kind of lead you. And every one of you, I sat right over there. And I was confused too. Like 4 years ago, I said, man, Daniel, I've been trading for a long time. I flew to Hong Kong with $30,000 cash to buy Alibaba stock, because when they opened the IPO, it didn't. So I've been crazy about all of this. I bought 1688. That was the symbol. I knew trading, I just didn't know futures. In stocks, you buy stocks, you hold on to it, and you're hoping stocks will go up. Or you short through options, right? Futures completely. Futures is, this is futures trading. So what futures trade means is, you don't know the price will go up or down. So it's called a speculation-based trading. So you're speculating. You're not buying the actual S&P 500. All you're doing is you have a piece of paper that is a value of a contract. Now, let me give you an example. Some of you may know through a real estate deal. I'm going to write $500,000 here. You go, every real estate agent advertises a condominium that is going to get built in Niagara Falls, in Ajax, in Kitchener-Waterloo, and they say, all right, this unit is $500,000. Fair enough, no problem. So you go out and put $50,000 as a deposit, maybe through a year or 2 years, right? When you went to that builder's office, they didn't give you a condominium. All they give you is a piece of contract, and it says unit 25, and it's $500,000. You paid $5,000 on the signing, and you have to pay the rest, right? Now you have a contract. You can go in the market and you can advertise something called assignment clause. Everybody knows about it. I have a condominium in my hand. It's not even built. It's a piece of paper. Can I sell this to somebody? Of course. I can sell this. So the value underlying asset is a condo, right? Underlying asset value is $500,000. You haven't paid $500,000. You probably paid $5,000 or $8,000. And the moment you came out of the office, that contract value starts to go up or down. So that's a speculative deal. So we do these speculation deals all the time. Same idea. You get into the market, you picked up the S&P contract, one lot for $6,000, and you're hoping price should go up or price should go down. So you can do bi-directional. That's the best part about it. So this is called futures trading.
So in options or stock, you own sometime the underlying asset. Here you don't. Here your job is you open your position at, let's say, 9 o'clock in the morning. 10 seconds later, I'm done. 20 seconds later, I'm done. 1 minute later, I'm done. 10 hours later, I'm done. But you must close your position by 4 o'clock, 4:30 in most cases, you must. You can open up your trade again at 6, but don't go don't trade after 4:30, please. Because sometimes you can get stuck and then you will not be able to, you're thinking price is coming down, but it won't happen. So in basics, you are 5 things I will write on the board, because now all 7 of you, 8 of you will be presenting yourself as a trader. Let's say you go somebody and says, I'm trading. You need to know some basic stuff. So first of all, number 1, you're a day trader. You're not a position trader. You're not an options trader. You are trading daily futures contracts. So the market that you're doing is futures. And within futures, you're primarily doing S&P 500. So that's what you are trading. Everybody with me so far? You have decided to become a day trader. A position trader will hold their position for a long time. Maybe 2 days, maybe 3 days, maybe 4 days. You will get there eventually, not right now. You will get into a trade maybe for 10 minutes, maybe for 5 minutes, maybe for 30 seconds, maybe until 4 o'clock. So day trader job is that at 4 p.m. they can sleep without having a headache. What is the value of my stock? Sometime we wake up and the market has gone down. We don't care. If it's gone down, we'll go with the trend. So a day trader has the most easiest job in the world. If you bought Tesla, let's say a month ago, and Tesla was trading at $400, you know what it's trading at? $262 today. So you would be in panic watching, hey man, I invested into Tesla. Whoever told, when the price was going up, we were telling everybody, don't get into Tesla right now. Because it went from 213 to 484 to 262. So our software was saying, don't touch Tesla right now. It's too hot. It's too hot. So computer was saying, hey, don't buy it. It's overbought, overvalued. So just like the Toronto real estate market, everybody has something called FOMO, fear of missing out. And they went in, they bought, and they booked and booked and booked, and it collapsed. Same thing. Tesla, 213, 350, 385, 4. I had a debate with somebody when it was at 484. They're like, man, I'm buying it. It's going to go to $600. I don't care. Computer is saying, don't buy yet. Let it cool down. So around 250, it's a good number. Just telling you guys. Right now, it's about 260. At 250, it's a reasonable number because the growth from 213 to 250 is a normal growth. The growth from 213 to 484 is stupid. So that's why we told everybody not to. So my whole idea for you guys is to make sure that you guys know you're a day trader, you're going to be trading futures. Now, somebody next can ask you, what software do you use to trade? So that's called the Ninja Trader. So number 3, the software that you're trading is called the Ninja Trader. Next question could come, because that will make you remember, that will make you sound smart and intellectual. I know what I'm talking about. Number 4, your algorithm. So the algorithm is called super areas. So algorithm is a bunch of instructions that predicts market to go up and down. So you are a day trader. You're trading S&P 500 futures. You trade on the Ninja Trader 8 platform. And you're trading using super areas algorithm. And the final thing somebody can say, mostly, how are you funding yourself? You can say, you know what? I use a funded company. I don't invest my own, so I don't have my own capital invested. So funded. So the idea is that I don't care. I don't know how much money you have. You may have 1,000, you have a $1 million. I don't care.
care less. My job is to make sure you do funded first before you put in your own money. Because what will happen is, if you have, let's say, you come into this business, you have $1,000 or $2,000 in the bank, and you say, I want to trade. If you don't know where to enter, that money will disappear faster. So before I give you your own capital for at least 3 months, you're not going with your own capital. For God's sake, don't do that. I don't care if you have experience, yes, you can. We're not going to stop you. We just tell you, please don't put in your own money. You're going to be in problem. Because what will happen is you go in with $5,000 thinking that you are comfortable, and you lose that $5,000. And I say that in Hindi, 4 गालियां पड़ती, एक मुझे, एक डैनियल को, एक सॉफ्टवेयर को, एक इंडस्ट्री को, कि यार जाया करा दिया. We said, no, you weren't ready yet. So we have to teach you through an exam. It's a funded exam. Somebody can pass this in as little as 5 minutes. So the shortest I've seen somebody pass, they opened up an account at 4:55. In 5 minutes, they traded, they passed, and they got qualified for funding. So you can go as early as like even 2 minutes to get qualification. So there are many companies out there, they will pay you to trade, and not small amount of money, ridiculous amount of money, 10,000 a month, 20,000 a month, 100,000 a month, they will give you to trade, but they want to monitor you first for like 10 days. Why? Because a person goes through emotional changes in trading, and 10 days will tell them, hey, is this person emotionally balanced or not? Because what happens today, you're lucky, you go buy and the market shoots up. Tomorrow you're lucky. Third day you're lucky. Fourth, fifth, sixth day, they will see, all right, is this person has enough caliber for you to, because emotions will get involved. What will happen is today the market opened at S3, and when it went to S2, it went to S3, we had a number, you took a trade and you made $600. Let's say 6 points, 8 points, 9 points, 10 points, 11 points, you made it. Your brain is going to get messed up. I'm telling you up down, because there's no amount of money that moves that fast, and you will say, oh my God, what did I do? I just clicked buy and the price shot up in my favor and I made $500. And then you're going to get the taste of it. Then you're going to do revenge trading, over trading. Tomorrow you're going to come and say, this is so easy. I can book my Rolls Royce. 10 days will tell you how emotionally people who have zero emotions do exceptionally well here. People with a lot of emotions, if you are a type of person, sometime I have my kid goes to One Mills, instantly wants to buy something. Hey, they don't do so well in trading, because you have to be able to kind of cool, calm, composed, and say, computer saying buy, I will buy. So if the price of the S3 was today until I think 60 to 50 था, आज S3 कहाँ पर गिरा? S3 हाँ, आज का S3 65 to 56, right? 65 to 55. Yes. So computer was saying you have to wait to buy until the price gets into this zone. And if you are impatient and you're aggressive, computer is saying in the morning it predicted something that if you want to buy, please buy this. So in Nasdaq, I was given a number, and I said, if you want to buy at this number, you'll be fine. You'll make your whole game of trading is, if I were to sum it up, is 99.5% discipline, maybe 0.5% is everything else. These indicators don't matter. My lectures don't matter. Daniel's doesn't. It's all about how much can you control yourself once you learn. So I was saying to these early people who were trading, a setup is being formed. You have a lower low, you have black, blue, be ready. If you are just clicking randomly, you're going to have problems, please. So understand where to buy, where to sell. You will do exceptionally fine. Users are making an average 10 grand a month. An average. A person
and you can come and meet them at the Trinity office around 3 o'clock. They'll teach you, hey, I use this software every day. I have this setup master. Now we have 13 people who teach this too. However, every single one of them uses a different method. So in this software, you will learn from me about 9 methods, because this software is pretty crazy in terms of how can you. So आ गया जी, lower इधर आया आपके पास. Yeah, 2 blacks and a blue. We have 2 blacks and a blue. So अभी तो लगता है खत्म हो रहा है. Lower low लग जाए. 30-20 में भी यार डाइवर्जन पे डाइवर्जन फेल हो रही है यार. Gap. So there is a setup called SRES. There is something called the mid-band trade. There's something called the gap trade. There's something called the divergence trade. There's something called Fibonacci box trade. So there are 9 types. I'm not going to teach you all 9. You will get so confused. I'll teach you the top 3. So top 3, you should be able to make at least $500 a day. 500 at like today, anybody who traded with along with this setup made good money. So इससे नीचे तो नहीं गई है 555 54 कहाँ तक गई है 54 5646. Let me double check this. S3 तो बहुत खत्म हो चुका है. नहीं अब S3 के अंदर खड़ी है, लेकिन वो पहली अटेम्प्ट पे आती है तो हमने वहां से लेनी. S3 हो चुका है. Maybe any time it should bounce back towards up. 5, 6, 4, 6 पे होती है. हाँ जी वो S3 से भी नीचे बहुत जा चुकी है. So now we'll cover the basics of basics, how to buy, how to sell in the software. ये अब आपका कवर होगा कि 6 किस्म की बाइंग क्या होती है. What is the difference between chart 15, 10 and 30, 20? That's a double. The 15-10 chart is the ticks are 10 ticks. 30-20 are 20 ticks. The price goes tick by tick, right? So we are watching 15-10 and 30-20 chart. It's just double time frame, you can say. Mostly we, as a big Begin 15-10. 15-10 is good enough for you to, but I will teach you how to take a trade. All you're caring about 30-20 color should be the same. If this is green, this should be green, then you have a better result. If this is red, make sure this is red too, for confirmation. The price for both sides. No, it's the same. Current price is the same. Sorry? Yeah. If the price moves $1 up or down, no problem. This mid-band worked, no problem. From lower low, it was coming on 15-10. 30-20, 8.5. अच्छा, जबरदस्त. वो आपको हाई 2 ब्लू के बाद ब्लैक. 2 ब्लू के बाद एक नीचे ब्लैक, ठीक. लोअर हाई ठीक. So this is a little bit of a tricky subject, but if you grasp it, you will do exceptionally fine. This is called, where am I buying? Am I buying? So we will define a line right now. Let's pick a price. 566. I'll put a 5650. Let's put a price here. So let's assume this is the current price. Everybody with me? So let's assume. So I will write current price. Now I'll quiz you. Current price is the white line that's moving in your chart. What's the current price? Anybody, you can. Yeah, 5664. 5664. Perfect. It's so you see a white line moving up and down? That's your current price. How can I do that?
There are 6 ways to buy and sell. 3 primary ways are, if I want to buy at the current price, you will do something called buy ask. Or you can even call it buy bid. So when you are looking for the current price, as close to the current price, there are 2 ways to buy. You will see on your chart eventually, it will say buy ask, buy bid. That means By market. market we will never touch. Market is forbidden except Nasdaq. Because market will give you, now here's the problem with market. I'll tell you why. You have a price of 5650 and you hit buy market, right? Now from you, I'll write down you in here. From you, your computer, PC, the order goes, first of all, to your router. You have a router at home, okay? From your router, you have Bell or Rogers, okay? From Bell or Rogers, you have a like Canadian Internet or something gateway. From there, it goes to Chicago Mercantile Exchange. That's where your orders are sitting. From your computer to there and back is at least 8 stops in between. It's called the hops. And it can change the price quite rapidly. So you hit buy market here. You have no idea what the price is on Chicago Mercantile Exchange. So that's a very specific reason I don't hit buy market. Because what will happen is, since everybody's in hit buy market right now, you will see negative $12, Yes. negative $25. You're gonna say, what the hell? I just hit buy market. And why did, so what will happen is by the time you did a round loop and back to you, probably the price had changed a tick or so, or 2 ticks. So if you want to lose your trade from beginning, go buy market. Never, ever, ever do buy market unless you're in Nasdaq and you want to jump in and you want to say, all right, I'm going to do a buy market because market is moving so fast, right? By the way, midband worked on 1510 going up. Both charts were green, midband worked. So if you ever want to buy as close to the current price, you have to hit buy ask or buy bid. So it will place something called the limit order. Now, let's write something 5645, and I will write here 5655. This is a current. This is $10. This is what? $5 below. This is $5 above. Everybody clear on there? If you ever want to buy below the white line, it's called the buy limit order. So you will do something called a buy limit order. Because what you're saying to the computer is saying, my price is 56.50. Mid-band is sitting at 56.45. You're not buying at a current price. You're waiting for the price to go down, and then you will buy, right? So that's called a mid-band trade, or something that you will buy below the current price. So again, to go over it, current price is 56.50. You want to place an order that the best price to buy, computer is telling you, is 45. So the type of order, it will be called a buy limit order. So if you now 56, so what will happen now? When the price goes from here to 56.45, then your trade starts. Not before. No commission, no exchange, no profit, no loss, because you are just standing here. There's a price moving. And you're like, all right, the price of it, it's like going to an auction and you're like, I'm going to place a bid here. So you did a buy limit.
Now you can buy above the white line too. That's called the buy stop limit. So if you want to buy something here, so buy stop limit, LMT. So what does that mean? I want to buy, but I don't want to buy right now below, but I want to buy when the price goes to this price. So in future. So the whole idea is I don't want to buy, this is below, this is above. It will change your orders. A buy stop is different than buy ask, is different than buy. So make sure you know which one to buy. If it's a mid-band trade, generally you will do a buy limit. Because price is up there, you're waiting for the price to come to mid-band. You will go to the mid-band and you will hit buy limit. So this is called a buy limit order. This is called the buy stop limit. These are called orders too. This is called the buy ask or buy bid orders. So just ये समझ आ गई? 5650 करंट प्राइस है. आपने नीचे बाय करना है तो लिमिट ऑर्डर लगाना है. अगर ऊपर बाय करना है, क्योंकि हम ब्लैक कैंडल वाला कर रहे हैं ना, तो ब्लैक कैंडल बनेगी तो बाय करेंगे ना, उससे पहले तो नहीं करना. तो आप उससे पहले नहीं करना, आप फिर वहां जाके ऑर्डर लगाते हो बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर. नहीं, एटीएम पे नहीं आता. आप वो लाइन के ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हो फिर आता है. एटीएम का उससे कोई ताल्लुक नहीं. एनी क्वेश्चन है? मैं अभी आपको ना इसमें करके दिखाता हूँ. ये देखो. नहीं अभी नहीं. देखें आप एक हेड स्टेप चल रहे हैं, वेट करें. अब यहां पर मैं आता हूं. अब यहां करते हैं ग्रीन है जी, बाय चल रहा है. पहला हम ऑर्डर लगाएंगे करंट प्राइस पे. ठीक है, अभी मैं करंट प्राइस पे ऑर्डर लगाने लगा हूं. हाँ जी. हाँ नहीं इसी स्टेबल को मैं नहीं यूज करता, मैं करवाऊंगा. वो जब आप वीडियो देखेंगे आपको बता दूंगा. नो प्रॉब्लम. आपको ये नजर आ रहा है, ये नजर आएगा बाद में. जब आप कल आएंगे ना तो आपको ये चार्ट ट्रेडर भी ऑन करना आ जाएगा. ठीक है. अब मैंने यहां ये व्हाइट लाइन चल रही है ना, मेरी व्हाइट लाइन इज राइट देयर. I want to buy current price that I'm thinking price should go up. So what will I hit? Buy ask or buy bid. So there you go. This is my order at the current price. I will never hit market. You can hit buy ask. My order got filled. And look, जहां से ट्रेड लगाएंगे वहां से पॉजिटिव जाने की उम्मीद, क्योंकि this is current price. So at a current price, I don't want to hit market order, so I would hit buy ask or buy bid. That's called the current price trade. Now let me close this. Now I want to buy at a mid band. Right? It's a mid band is what? 57, 56, 67, right? So I went in front of it and I did something called, there is a mid band right here. I right clicked and I did, you see something called buy limit? You will have a buy limit. So now my order has been placed at the mid band. You guys, let me show you how to do this. Turn on chart trader, click on this icon. So DOM, minimize it. The depth of market. These days market moves too fast. Click on this. A chart trader. Can you do that? Everybody with me? You found this icon? Chart trader. यार कितना प्यारा मिड बैंड 2 1 2 3 वो चला गया जी प्राइस. पहला हायर लो लगा, उसने आपको दिया डबल टॉप, ठीक था, कोई मसला नहीं. मैं देखें पुरानी प्राइस और ये प्राइस सेम है ना, तो डबल टॉप मैं उसको LH मानता हूँ, मैं उसको हायर हाई नहीं मानता. तो और नीचे वाले को मैं मानता हूँ लोअर लो.
एक सेकेंड मिड बैंड चल ओके आई हैड चल गया जी सर सर कौन हर मिड बैंड चलेगा यार हायर हाई से हर मिड आपको मिले कुछ नहीं हो गया सर आपका मिड बैंड देखिए कंप्यूटर ने कहा था मिड बैंड पे बैठे आपने मिड बैंड पे ऑर्डर लगाया $200 लिया बाहर आ इतना सिंपल है computer said buy right here you bought it here you got your 2 points 3 points first मजा आने लग गया ना ट्रेडिंग में क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए मैं अभी 4 साल पहले भी मैं सेम था आज भी सेम हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए दैट्स रैंडम नहीं एंटर करना जी मार्केट दबा दिया क्यों दबा दिया सो फ्लूक 1-2 दिन चलता है इसलिए वो 10 दिन पूछते हैं हाँ एग्जैक्टली नो प्रॉब्लम नहीं मेरा थैंक यू नहीं उधर जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिखा उनका लेकिन अब आपको एंट्री करनी आ गई मेरी ये जॉब है कि आपकी एंट्री ठीक करवाऊं नहीं उसकी 5 कंडीशन है ना तो वो कंडीशन आप करेंगे तो नहीं फाइल करेगा ना हाँ एरिया ना हो दो हायर हाई से प्राइस दोनों चार्ट ग्रीन हो ये 3 कंडीशन तो टेस्ट करें ना सो एवरीबॉडी गॉट इट सो put an order at 5672 do a buy limit order I want every one of you to put a buy limit order at 5672 just to see if you guys can do a buy limit so go to as close to the midband right click make sure you have an account set up here demo or sim or whatever so go as close to the midband, right click, click buy limit, and that's it. So it will place a buy limit order right now. एक टिक से रह गया नहीं आपने अच्छा इसको पहले देखें यहां पर अकाउंट सिलेक्टेड है अकाउंट सिलेक्ट होना चाहिए ना कोई ये देखें यहां से भी 2 पॉइंट मिल गए ये ना कहिएगा 2 पॉइंट नहीं मिले प्लीज यार मिल रहे हैं 2 पॉइंट आते जा रहे हैं डन 200 300 बन गया आपने ट्रेड डाला है आपके पैसे बन गए पहला ट्रेड करवा दिया आपको तो नहीं यहाँ नहीं यहाँ पर जाए ना अब आप निकल लिया ये नहीं सिम आपका निंजा नीचे चला गया अकाउंट आपका है अगला मिड बैंड अब लगाते हैं यहाँ पर बस खत्म हर मिड बैंड लगाते जाए ग्रीन है तो बाय करते जाए रेड है तो सेल करते जाए इवेंचुअली आपको पता लग जाएगा सबसे ज्यादा पावरफुल पहला मिड बैंड होता है फिर उसकी रेशियो कम हो जाती है मीनिंग हायर हाई सो फर्स्ट मिड बैंड क्या चीज जी नो प्रॉब्लम जैसे ये मैंने कर लिया कोई बात हाँ ठीक है अब आप जाएं इधर जाएं इसके ग्रे एरिया के अंदर ग्रे ये जो ग्रे एरिया है ना हाँ यहाँ राइट क्लिक करें यानी आप उसके ऊपर क्लिक करें थोड़ा सा लाइन से ऊपर या नीचे जाएं दिखाएं माउस में दिखाता हूँ असल में आपने उसके ऊपर क्लिक कर लिया मैं यहाँ जाता हूँ ये राइट क्लिक किया ये देखें बाय लिमिट आ गया ये लिमिट लग गई मैंने ऑर्डर लगा दिया everybody was able to do this able to take the trade and take 2 points good so far okay so my limit order is right now 5656 so go near there right click and do buy limit so I will do this right now whether you're on sim so I went right here I right click buy limit my order is taken place. That's it. Simple as that. Rest of it software is doing, you don't have to do anything. I hit buy limit and I'm done. When the price will come to 5673, it will pick my order and do 2 things. Either it will go against me or go with me. 2 things, right? If it goes against me, goes to a color change, I close my trade. If it goes with me in the favor and I make profit, close my trade, right? So today's job, okay, there you go. My order got picked up. Let's see if it goes in my favor. So 2 things are happening from this point. If it goes against you,
It picked up right now. Let's if it you make money बन रहा है? नहीं वेट करें अभी उसको थोड़ा प्रॉफिट बनने दें ना. $100 जब नजर आ जाए तो क्लोज दबा दें, बस डन. वो क्लोज का बटन है, डन. आपका नहीं हर दफा नहीं, कई दफा वो डायरेक्ट. लेकिन अगर कलर चला जाता, आपका जो रूल क्या है, ये जो नंबर है ना 7, मैं आपको डिटेल में बताता होता हूं कि यहां से 8.5 तक स्टॉप लॉस लगाना है. एक स्टॉप लॉस भी तो लगाना होता है ना. Don't worry about profit and loss right now. I want you to understand buying and selling first. देखिए यहां मैंने लगाया हुआ है, मेरा रूल क्या है कि अगर कलर चेंज हुआ मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से, बस मैंने ये करना है. Profit will take care of itself. You care about losses. I'm not caring about my profit. If it goes in my favor, there you go. I saw $50, didn't take it. But if it goes against me, I will close my trade. Please don't re-enter again at the same candle. हाँ जी, हो गया ना, ट्रेड खत्म हो गया. नहीं वो अभी नहीं आपको डॉलर की फिगर ना करें अभी. वो कि कितना, हाँ मैं सर ये कह रहा हूँ कि वो कहाँ पर आ जाता है, वो नीचे कंट्रोल सेंटर में आ जाता है. कंट्रोल सेंटर में आप जाएं, अकाउंट्स के अंदर कंट्रोल सेंटर में. हाँ जी, ये देख. नहीं आप ओके नो प्रॉब्लम. इसको अभी डेमो में शायद ये ना हो रहा हो. नो प्रॉब्लम. If the color changes, exit the trade. That's the rule for a mid-band trade. Green to buy, red to sell. क्योंकि ये इसलिए कलर चेंज हुआ, 30-20 में बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था. 1, 2, 3, 4, 5वीं दफा उसने आना ही आना था, रिट्रेस करनी थी. सो अभी आप फिबोनाची वाले रेडी हो जाएं ग्रीन के नीचे, फिबोनाची वाले उधर रेडी हो जाएं अगर उन्होंने ट्रेड लेना है तो. इट्स कंप्लीटली अप टू यू. ग्रीन बॉक्स के अंदर नीचे जितना नीचे होगा उतना बेहतर होगा. Now we're gonna go back to this chart. Now I want you guys to put an order called the buy stop order. Price is above the white line. Above the white line है ना, कहीं ऊपर जाएं. अभी क्या प्राइस चल रही है? Okay, 1 second. No problem. I'll come to you. What's going on? Same problem is going on again. अब हॉटस्पॉट से करें. Even I did. ओके क्योंकि आपने निंजा आपका बंद हो गया ना, तो वो अब आप थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा रूम हो जाए ट्रैफिक में, फिर आप जा सकें. या इट्स ओके, इट्स डूइंग व्हाट इट्स. एरिया से आएगी, वेट करें, अभी ना कीजिएगा. एक्सपेक्टेड लो पे है. How to buy? Like I don't know. This thing is not working or something. Okay. Okay, most of this I will go over once you watch my videos tonight. The exact detail, I'm giving it rough today. मैं तो नहीं शॉर्ट कर रहा, अब मैं अब लॉन्ग वालों में रहूंगा क्योंकि यहाँ से अब ऊपर जानी चाहिए. R1 तक ले जाएंगे भाई, जिस हिसाब से लेके जाते हैं. R1 से सेल करेंगे. अभी शॉर्ट की ये लेवल भी देखिए. Everybody's clear here? So I want you to place a buy stop order now at the price of 5670. Put a buy stop order. Buy stop. ये टेस्ट के लिए, ये रियल ट्रेड नहीं है, रियल ट्रेड नहीं है. मैंने कहा गलती से लगा ना, तो टेस्टिंग के लिए.
put a buy stop order at 56.70. Buy stop limit order at 56.70, because what I'm trying to give you the practice, you're going to be buying above the limit price, above the current price. Yes. I don't like to watch the video, but still, why do you want to buy above the market? Because there are many times we know when the price will reverse from here. Because there are many candle trades, that's called a black candle trade, swing, retrace, extension. We are waiting for a setup. In that setup, we will only buy if the price touches that price first. So sometimes I will not buy until 56.70, and I want the price to go and take me from this point. That's called a confirmation of a black candle. So आपको वो भी सिखा देंगे कि there are many times you will buy above the current price. So, but that's called a future buy, not a current buy. Because current buy is what? Buy, bid, and ask. Below the current price is buy limit, but many times you would like to buy above the current price. That's called a buy stop. So again, 6 type of orders. You have 2, 3, 4 here, and 4 this way. I'm not doing this market order anyway. So you can do so many types, but right now everybody's able to place that stop. Buy stop. Buy, not limit. Buy stop. Buy stop limit. Remember, you're above the white line. So आप ये देखें, यहाँ जाए ना, इधर देखिएगा, ये white line जा रही है, मैं ऊपर गया यहाँ पर, यहाँ गया ना, white line से ऊपर गया हूँ ना, इस ग्रे एरिया में, यहाँ पर नजर आएगा आपको बाय स्टॉप लिमिट. ठीक है, यहां मैंने ऑर्डर लगा दिया और चेक बॉक्स का. अब क्या होगा, जब प्राइस ऊपर जा रही है ना, जब प्राइस इसको टच करेगी तो मैं वहां से बाय करूंगा. ये ब्लैक कैंडल ट्रेड के अंदर आता है, जनरली उसके अलावा नहीं आता. हाँ जी हैं सर, आप डिलेड डेटा में खड़े हैं. 5681 तो 10 मिनट पहले था, आप तो प्लेबैक में चल रहे हैं. आप कनेक्शन में जाएं. नहीं, आप रियल अकाउंट में नहीं है, कनेक्शन में जाएं. मैं डेमो में नहीं कनेक्शन, आप तो प्लेबैक सिमुलेशन में चल रहे हैं. डेमो तो नहीं है, ये तो 10 मिनट डिले है. हाँ जी. ये अभी तक कोई ऑर्डर पिक नहीं हुआ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक प्राइस 5661 नहीं होगी ना, तो मेरा बाय ऑर्डर नहीं लगेगा. यस, but that would have been a sell order. That would have been a sell order, but not a buy order, right? So I'm going to come to that. So let's see what will happen when I get to 5661. Look, it will pick me up as a buy order, not a green, not a sell. So what the computer I said, when it gets to 5661, and anytime now, it should pick me up in the green, because that's a buy order. Because a certain type of there you go. I went and buy, and I want to go along with it. Price is going up, but take me with you, right? $25. Well, but there's a very specific time you will do a buy stop limit order. Yes, now I'm coming to the other way. You said four things, right? One is a buy stop limit. Yes. Look, I already made. See, I knew from that price is a good buy, right? But it was in future. So I saw $100, I closed the trade, and I exit the trade. Okay. Can I cancel it? 5670. चल कर दें. Okay, so let's come back to the other type of orders now. So everybody's clean on this? Yes. You said 4 orders, right? There's 5 types. There's 6, but I'm explaining you 5. So let's look at current price. If you want to buy something at a current price, you will do buy ask or buy bid. Okay. If you want to buy something lower than the current price, you will do something called the buy limit order.
If you want to buy something in future, you will do a buy stop limit order or limit stop, whichever I think it shows. How do you calculate that? But if you want to buy, how do you calculate that? 8.5 or 4.75. Black candle to the up, black candle to the down. तो वो मैं अगले ट्रेड में आता हूँ. आप क्लियर हैं यहाँ पर? तो Ask and with order, it doesn't come with the right. no, you would just hit the button. So now I want you guys, it's green right now. I want you to place a buy limit order. Let's practice this. Put a buy limit order at 56.62. That's called the buy limit order. So you will go in front of 5662 and right click and do a buy limit order. Because you want to buy below the line. Everybody should be able to place an order now and wait, because the price will come there and will pick you. So that's called the buy limit. I went below my current price. That's called the buy limit. So you said buy price because that's a mid-band. No, that's a mid-band trade, correct. So I picked up that number based on, so let's see if it hits there, and let's see what it does from here. Fibonacci वाला तो नहीं लेकिन वो mid-band पे आई नहीं, वापस चली गई. All right, you guys can cancel that order. It price didn't come that far down. You guys can just click an X and you can, now this trade, nobody got made money, nobody lost money, and you basically close that order. So nothing got charged as even as a commission. If your order is not executed, there's no money that you make or lose or commissions or nothing or fees, because you put an order, price didn't come there. And please, for God's sake, by 4:30, make sure you don't have any pending orders. Nothing in and out, future buy, future sell, current buy. All your transactions and ledgers must be closed by 4:30. That just double check. There's a ways to do called just clean everything, flatten everything. They'll clear everything. All right. Now let's come to a little bit of selling side. Let me explain what is a short sale first. A lot of users will say, I haven't bought anything. Why am I selling? You know, Daniel told you one lecture, sell to open, buy to close. These trades in the buy side, these are called buy to open, sell to close. Does that make sense? You bought first, sold later. You bought it at 5645, or you bought it at the limit current price, or you bought it at 5655. Everything happened first in a buy trade. You bought everything first. So I took this phone, I bought it first, then I will sell it. So your closing of that trade is happening after. So your selling is happening after. So every single trade, when you enter a buy trade, you have to exit as a sell. So the way I normally write this is you write buy, then you have a sell. If you bought something at 5650, if you bought something and you sold it at 5652, you made profit. But you closed your trade in the opposite side. So you started with buy, you exit with sell. In profit. You can get it in loss as well. But you have to still sell. Either like, so you bought something. I bought this phone for $5,000, $5650. Now I have to find a buyer who will pay me more. But if the demand is not there, my price will drop. So I can sell this phone for maybe $5648. So it makes a triangle. Just remember, when you're in the buy side, either you will do a buy in profit and sell in profit, or sell it in loss. You bought something. Many things you do in life. You buy something
and then you make a profit by selling higher. That's normal case. Every businessman does that. You buy something at a low price, price goes up, you sell it. But what if the price drops? You're still selling it, right? But at a cheaper rate just to get rid of it and get your money back. So every buy transaction will close in a sell transaction. Everybody with me? I haven't lost anybody? So far, so good. Now, this is a bit of a tricky situation because we make money going down as well. So because we are doing speculation, directional based trading, we don't care price goes up or price goes down. Doesn't matter. All we care about is our direction needs to be correct. If the computer is saying sell first, so I will write now, this is called sell to open, buy to close. So in this type of a trade, you will sell first and buy back later. Now let me give you an example. You own a shop where you have a festival coming up of Diwali. Just giving you an example. You don't have stock in your shop, but you can advertise that I'm selling candles for $1. You don't have any stock. Everybody will come to you and they will give you the money first. So you're selling it first. You have to deliver that product later. So in this case, we are going to sell something first. So you go back to your supplier and you said, I have sold 5,000 candles at $1 each. I have no stock. I need to buy some stock. So your supplier will say, okay, now you're going to buy it later to deliver, right? So your supplier says 75 cents. So you took that money, you took it and you kept your profit. You bought it for 75 now, you delivered it in the end of the day. So this is the transaction where you sell something first and buy it to close. So the trade is called a short sale in short. Short, selling, shorting, yes. No, it's your own money sitting with broker. So they do this on your behalf. But in the end, 4 o'clock, the broker will say, I need my thing back. You have one contract you have sold. So you have a contract. Let's pick a contract. So what your computer is saying, hey, you can sell this to somebody right now and make a profit when the price drops, right? And buy it again. So right now, price is at 56.50, right? So again, you have 5 type of orders in this. If you have a current price, let me come to your thing first. So the price is 56.50, current price. And you know computer is saying price is going down. Everything is red, right? So you will sell. You sold it and you will buy back. So now I have sold it. Sell or sold. In this case, let me make it properly. If the price goes to 56.48, you will be profitable. Everybody with me so far? I haven't lost anybody, right? You sold something at 56.50. You sold it. All right, you sold it. Now you have to deliver that product. If you bought it expensive, if you bought something at 56.52, you will be in loss. But if you bought it at 56.48, you will be in profit. So you see how this is a mirror of each other? Here you start your trade first and you want to buy it as cheap as possible. So you sold all those candles for $1. You look for a supplier, 75 cents. You go to another supplier. They say, you know what, 50 cents. Good. Now you bought it cheaper, right? And you will make more money because you have collected more from the customer. But you have to deliver that contract.
You can't just say I sold something, but before 4:30, you have to give them. So this is called a promise to buy, meaning you took a contract and you sold it. Now that person is waiting. So if they bought it at 56.50, they already bought it. So it was a transaction for them to buy, but for you it was a sell. You don't have a contract. Before 4:30, you're going to go in the market and you need that contract to deliver to them. Now at that time, price has gone up, you will lose money. Price goes down, you will make money. So that's called a short sale. So where you sell the contract first and you have to deliver it later. Everybody with me? Price was 56.50. You see how this is mirrored around? It's the same numbers, but they're mirrored around. You sold something at 56.50. You want to go and buy it as cheap as possible, because if the price goes up from there, that's a danger zone now, because now you will lose money. Same candles, you have sold everybody for $1. Now you have $5,000 in your pocket and you have to deliver those candles before 4:30. What are you going to do? You run to your supplier. Supplier goes, oh, too many orders. Price is $1.25 now. You have to deliver by 4:30. You're going to buy it more expensive. You're going to buy it and deliver it at a loss. So sometimes a broker in between, price goes up. So when you're doing a short trade, you want to buy something cheaper back in order to deliver that contract back in the market. So you're given a contract. So I think my ninjas are just kind of crapping out. Yeah, same. I don't have any working right now. So 19,520, it kind of shot back. So now let's come back. So you have everybody understands short sale now? Sell to open, buy to close. Buy to open, sell to close. Every single trade has a round trip. You start something, you must finish it in order to close the trade. You buy something cheaper, you sell it expensive, that's buy to open, sell. So if you bought something first, you have to sell it. But if you sold something first, you have to buy it. I know it will take some time, because short sale is the most difficult concept to understand, because you're going to say, I didn't buy anything. You are just borrowing something and just selling it first. You just always imagine. We have a festival, so many festivals where there's a supply and demand issue, and you have a customer first. You know what a builder does when they sell you a pre-construction condo? They do a short sale. What does a builder do? Builder gives you a condominium for $500,000. They have no idea how much lumber is going to cost. They have some estimate. So they have sold you a $500,000 condominium. Now for 3 years, they have to deliver it. So that's a short sale for them. So they collected the money first. They have to close their position. You bought it, right? You don't want you want the price to go up, but they want the building material, the price to go down. So if they have sold something to you $500,000, what they want is to make sure the building material cost is as cheap as possible, because they want to make profit, right? So they have an idea. So what happened? During COVID time, pre-construction condos went through the roof, because building material went through the lump, like 2x4 went to like $10 from a $3 thing. And every builder says, oh my God, we're losing money on this. We have given so many units, but now we have a building material. So what they kept doing is delaying the property. They said, hey, wait and wait. But technically they were losing money, because now they have to pay more for lumber. They have to pay more for building costs, building material. So every builder wants to make sure they do a short sale, especially if it's a pre-construction thing. Okay, now let's come back to the formula here. This is the current price, 56.50. I want to sell as close to it. You will do something called the sell ask and sell bid. So sell ask, sell bid. Please never hit sell market.
Just like I've told you guys, please never hit buy market. So this is as close to the current price. You want to go in, test it. Click right now, everybody, sell ask. Just click sell ask. It will put your order as close to the white line as possible. Everybody got their order? Good. That's called the current price as close to you want to buy. You can close the trade. If it goes in your favor, it's fine. Because if you think price is going to go down from here, just don't hit market. Hit sell ask or sell bid, please. All right. Now, you want to sell something when above the price. So this is called a sell limit order. This is the Right click, but above the white line. What is sell bid? नहीं sell bid ये था ना, sell bid sell ask. वो तो say as close to the market price. लेकिन कहीं दफा आपने price लगानी है ऊपर. So what is the price right now? I want you guys to sell something at 5661. Sell, place an order for sell. 566. पहला higher low आ गया जी 3020 में. मैंने नजर आ गया, blue black आ गया. नहीं, black blue नजर आ गया मुझे. Let's see. Sorry. यहाँ पर order click करें. यहाँ पर accounts 3020 में black blue आ गया है. याद रखें 8.5. हाँ अकाउंट डेमो करें. तो ये आपका सेटअप हो रहा है. अगर हो गया क्योंकि डाइवर्जेंस भी है. खत्म हो गया. हो जी ब्लैक. We're back into so that order नहीं लगाना. तो that buys. लेकिन आप लोग अभी लगाएं sell limit at 5661. So go in that gray area. 5661 पे जाके sell limit लगाएं. फाइव सिक्स सिक्स वन के सामने जाएं और सेल लिमिट लगा दिया. That is called a sell limit order. So let's think about it. What are we trying to do here? First, every action you want to question yourself. What are you trying to do? In this case, what you're trying to do is computer is saying 5661 is a good number to sell from. So that's your mid-band trade. Everything price is down there, but computer says sell from here. That's a better price. If you want to sell or short from there, please. So that's called the sell limit order. When the price will go there, it will trigger a sell order. If the price drops from there, you will make money. But if the price continues to go up, you will lose money. If the color changes, you're done. Fine. Everybody clear here? So that's, if you were place your order at a mid band, you are done your trade. 1 point, 2 point आ गए. Lower low से आ रही थी, mid band पे आ गई, खत्म हो गया. अब यहाँ higher low लग गई ना, फिर हमारे लिए ऊपर जाने के chances हैं. देखिए mid band का trade लिया किसी ने? I don't know. लिया कि नहीं? फिर हाँ लग गया, आपका order लग गया. Done. तो आपने अब क्या किया? ये प्राइस थी, आपने ऊपर जाके लिमिट ऑर्डर लगाया कि मैं सेल करूंगा वहां से. नहीं आप इसको पहले चेक बॉक्स आप करें ना. आपने गलत वाला पिक किया, इसको करें. हाँ बंद करें, राइट क्लिक करें. यहाँ पर आपने जाएंगे सेल लिमिट पे, सेल स्टॉप लिमिट पे नहीं, सेल लिमिट. क्योंकि आप बाय स्टॉप पे चले गए थे, आप इधर चले गए थे. एक फर्क आ जाता है इस ऑर्डर में और इस ऑर्डर में. ये आप लोगों ने अभी लगाया है सेल लिमिट ऑर्डर. सो व्हाट वर यू सेइंग? आई वांट टू सेल समथिंग when the price reaches there. So that's called the sell limit order. The final type of order that you will be using mostly is called the sell stop order. So if you go at the bottom of the white line, you will see something called sell stop limit order. If you are placing your order at the below the white line,
ये कहलाएगा सेल स्टॉप लिमिट है। वही ब्लैक कैंडल का 4.7 लोअर हाई आ गया जी आपका। हाँ जी सर, रेडी हो जाए, हो रहा है एनी टाइम लग जाना है। तीसरी कैंडल लगी है, अभी चौथी नहीं लगी। 4.75 पे लगना है। वहां से मैथ करें ना आप, करें 5651 प्लस 4.75, वो आपका बनेगा ना। नहीं बनी जी ब्लैक कैंडल, नहीं बनी तो छोड़ दें इस ऑर्डर को, इट्स ओके। अभी भी हायर लो ही है, नंबर चेंज हो गया। हाँ हायर लो है लेकिन नंबर चेंज हो गया। नहीं, ये सेल स्टॉप है। अच्छा, ब्लैक ब्लू में जाएगा बाय स्टॉप, ठीक है। लोअर लो लग गया, डबल बॉटम लग गया। ये कैसे कहते हैं ब्लैक नहीं वो अभी आपके लिए नहीं। आप नहीं, वो चार्ट के हिसाब से होता है। 1510 में 4.75 है, 3020 पे 8.5 है। 4.19 टिक्स रखें, 19 टिक्स का रूल रखें। 4.75 गोल्ड में नहीं चलेगा, फिर आप कहोगे यार गोल्ड में नहीं चला, ये ठीक है। और 30-20 में 30-20 में 34 ticks. So everybody was able to, now I want you guys to place a sell stop order at 5646. 5646. Sell stop. This is just for testing. This is not a real trade. 5646. उधर जाए। ये मुझे तो कैंसिल करना पड़ेगा। इसको तो कैंसिल, ये हमने ना यहाँ पर बाय लिमिट लगाई ना, ये कैंसिल कर देना। ये दो सारे ऑर्डर कैंसिल कर दें। जब मैं अगला ऑर्डर लगवाऊं तो आप पिछले ऑर्डर सारे कैंसिल कर दिया करें। अब आप वहां जाके लगाएं सेल स्टॉप 5646 पे जाएं और राइट क्लिक करें और बिलो द व्हाइट लाइन है तो वहां लिखें सेल स्टॉप ना मार्केट लिमिट टेस्ट करवाना वास्ते। सिर्फ व्हाइट लाइन तो थल्ले ऑर्डर लगवा रहे। डाइवर्जेंस है जी। अब देखें ये कितनी ऊपर तक जाता है। लेट्स सी। 5654 हाँ जी, everybody with me? Good? Good. So now please, for the next 15 minutes, please do all these 1, 2, 3, 4, 8 type of orders. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, sell, buy, sell, buy. I want you to memorize, because I swear to God, for the next forever, 90 years, that's all you have to do. Know where to buy, where to sell. Rest, computer, I will do the job for you. I'll tell you where to buy, where to sell. That's where I come in. You just need to know, when I say buy limit, you should know what a buy limit is. When I say sell stop, I don't have time at that time where I'm saying, guys, it's a sell stop order or it's a buy stop order. So you shouldn't be saying, am I buying limit or sell? So until you're comfortable, majority of them, they know. So if you want to buy below the current price, it's called the buy limit order. So just say to your mind, buy limit. Where am I going to place my cursor? Where am I going to enter? So if you remember these 4, I will never rarely do these for you, rarely. But I will yell out, do a buy limit order at a mid-band. Do a buy stop order after a higher low. So really I'm yelling only these, 1, 2, 3, 4. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. So really, I'm going to even remove these for you. You'll be rarely using these, but I have to explain you the theory. और जी उस्मा जी, आप जाके डिस्क्लेमर साइन कर लें ताकि आपको ब्लैक कैंडल मिल जाए। हाँ जी, हमने मुझे 2 हफ्ते
बिग बॉस से? अच्छा, हाँ जी, बैठे, पूछा मुझे, सारों का फायदा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. Everybody clear on these? Please know when I say buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, where your cursor is going to go, where you're going to place an order. When I will say mid band is coming, you will do a buy limit or sell limit. If it's green, you will do a buy limit. All of this happens, by the way, in green side. All of this happens in red or magenta. So you will see this generally, not 100%. Sometimes the colors won't match, but just make sure you're in the right side. Buy limit below the current price. Ji. Is from the mid band of buy limit of 4 point above. नहीं, मिड बैंड से बाय करना है तो as close to mid band है ना. हाँ, as close. हाँ, नहीं देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ. प्राइस ये चल रही है, ठीक है, मिड बैंड ये चल रहा है, तो आपको मैं यही कहूंगा ना कि आपका ऑर्डर 5645 पे बाय लिमिट बनता है, ये कहूंगा मैं. थर्टी 20 पे डाइवर्जेंस है जी. Any questions here? So I know everybody is clean. सर मेरे 30-30 में डायमेंशन 9 वो डैनियल आपके फिक्स कर दो. हाँ जी, पीपीज और चार्ट दोनों में आती है. हाँ, अभी आई है, दोनों में आएगी, दोनों हमेशा आती है, लेकिन वो ब्लैक कैंडल के बाद आती है. All right, so I think it's a little bit too much for the first day users. Please, when you get home tonight, the day after, please watch a Ninja Beginner's Guide, because what is a control center? What is an account? Where is the position? The more you will practice, this is the only software you don't have to draw a single line. Only need to know, am I doing a buy limit, sell limit, buy stop, sell stop? That's it. 4 things you are doing. 94% we are doing. हम एंड में ये कहते हैं आपके घर आके सिर्फ वैक्यूम करना रह गया है, बाकी हमने सारा संभाल लिया. ये हमारा क्लेम होता है. I'll tell you when the black candle forms, 19 ticks, 34 thing, कौन सा मिड बैंड चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कहाँ पर स्टॉप लॉस है, क्या है, इसको फिर हम मैच कर देंगे एटीएम के अंदर. So once you guys figure out where to take an entry, I have to introduce only one ATM. The word is called advanced trade management, because wherever you will start your order, it will open up an order for you with a stop loss, with a trail profit and trail out. First, we'll show you how to do fixed, and then we'll show you how to do trailing. And that is all done by the computer. So you took an order at mid-band. You want to take a $50 or $100. You can tell the computer, I only want to take $50, I get out. I only want to take $100 and get out. So we're going to teach you how to do fixed. So you will only have 2 ATMs in your system for ES. Nasdaq is, please don't discuss Nasdaq beginner. You need 6 months before I put you in the Nasdaq program. यही पूछना है. हाँ जी, इसके अंदर एटीएम में सेटिंग है. हाँ, जिसके अंदर हम कैन फिक्स आवर प्रॉफिट. यस, उसको कहते हैं कि ब्रेक इवन. करेक्ट. ब्रेक इवन के दो खाने हैं. ये देखिए, मैं आपको आसान कर देता हूँ. पहले ना हमने इसको मुश्किल नहीं करना, मैं आपको जूम इन करवा देता हूँ. ये आपका आ गया टिक्स, ठीक है, यहाँ टिक्स रखें, यहाँ ऊपर क्वांटिटी होती है. हम एसएल रखता हूं. मैं क्या करता हूं, मेरी जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, मैं अपना एसएल रखता हूं 20 टिक्स का, ठीक है.
20 टिक्स पे लेके जा रहा हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं। जब एरिया ट्रेड आता है मैं उसको ज्यादा बड़ा कर देता हूं, 25 पे ले जाता हूं, 5 पॉइंट चाहिए, ये भी एक्चुअली 5 पॉइंट ही है। तो 20 टिक्स मेरी ऑप्टिमल है, 20 टिक्स इक्वल्स 5 पॉइंट्स। ये हर जगह खुलेगा ना, जिधर मर्जी ऑर्डर लग गया। अब मैं टीपी क्या करता हूं, मैं लगाता हूं 6, ये आ गया फिक्स्ड। आपका ऑर्डर खुलेगा 20-60 20-60 20-60 20-60 से लग गया, ठीक है। अब आपके पास चॉइस है, आप उसको मैनुअल ट्रेल करें या ऑटो करें। ठीक है, आपने ऑटो जाना है, यहां लिखा है ना स्टॉप स्ट्रेटजी, ठीक है, अगली विंडो खुल जाती है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कंप्यूटर से ये कहता हूं किस पॉइंट पर ब्रेक इवन होना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मेरा रोल ये है, इसको मैं करता हूं 10 टिक्स प्राइस ऊपर चली जाए ना, मेरा 0 पे आ जाए स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मैं यहां पर हम मैथ करेंगे बकायदा, ठीक है। ऑर्डर लिया 5660 से लॉन्ग का, ये मिड बैंड का ऑर्डर है, ठीक है। यहां ऑर्डर पिक हो गया। अब मुझे बताएं यहां पर मेरा स्टॉप लॉस क्या लगेगा। 20 टिक्स है, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट लगाए ना, 20 टिक्स 5 पॉइंट, तो 40 नहीं, 5 पॉइंट 55 पॉइंट्स पे है ना। मैं उधर टिक्स लिखा ना, उधर टिक्स लिखा, यहां 20, ठीक है, 20 टिक्स पे मैंने आपने लिख दिया 5 पॉइंट। जैसे ही ये बाय लिमिट गई, यहां ऑर्डर पिक हो गया, उसने स्टॉप लॉस भी लगाया। अब लगाए टीपी कहां लगेगा इसका, जाके 15 पॉइंट में, 15 पॉइंट इसमें जाए 75, ये आपकी ब्रैकेट खुल गई। अब मैं इसको करके दिखाता हूं ताकि लोग जो देख रहे हैं, हम इसको पहले फिक्स लगाएंगे। फॉरगेट के प्राइस कहां पर है इस वक्त, ये किया मैंने कस्टम, ठीक है, ये कस्टम कर दिया। यहां मैं स्टॉप लॉस लगवाता हूं 20 का, ठीक है। यहां मैं प्रॉफिट लगाता हूं 60 का, लग गया। ये अब मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना। अब मैं यहां ऑर्डर लगाता हूं बाय एज का, ऑर्डर लग गया और मेरी ये टीपी खुल गई। ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टीपी आ गया, $25 बन गए। तो यहां या यहां जाके ट्रेड बंद हो जाएगा या यहां जाके बंद हो जाएगा, यहां तक तो मेरे साथ है ना, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि इसको लंबा खींचो, 15 पॉइंट एक ही मेरा ट्रेड हो और अच्छा ट्रेड हो। जब हायर लो लग जाती है ना, तो मैं उसको कहता हूं 8 टिक तक मुझे ब्रेक इवन कर दो, 8 टिक मैं उस पे लेके चलता हूं। जो हाई मिड बैंड वाला मैं 20 पे स्टार्ट कर रहा हूं। देखें यहां से मैंने बाय आस्क किया, ये फिक्स्ड है। एनी गिवन टाइम मैं ये भी चेंज कर सकता हूं और ये भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है मैं ट्रेल करूंगा। ये आ गया आपका फिक्स्ड स्टॉप लॉस, फिक्स्ड टीपी, ये कंप्यूटर ने खुद ही कर दिया। You can hit the stop and just keep trailing. Sorry? No, I'm going to get to the automatic now. So this is a manual way of trailing. Got it? Now I will add another condition to it. Let's write the conditions first before I explain you what those conditions are. Okay. Let me erase this ताकि हम सब ये सारे क्लियर हो गए आप लोग, ठीक है। Why to open, sell to close. Sorry? नए लोगों ने सुबह आ जाए, 9 बजे आ जाए। हाँ, 9 से 11 ये होगी ट्रेडिंग, फिर 11 के बाद अगर आप क्वेश्चन हुए तो देखें। हमने क्या लिखा, 5660। अच्छा मैं वो दोबारा करूँ, मेरा एसएल क्या था 5655, मेरा टीपी क्या था 5675, ये ब्रैकेट खुल गई, ठीक है। अब मैं यहां से क्या चाहता हूं,
मैं ये चाहता हूं, what I want is when the price goes up 10 ticks, when the price goes up 10 ticks, I want my stop loss to move here automatically. And as I go up one by one by one by one, I want this to go one by one by one. That's what my goal is. So what am I trying to do is until I hit this, यही कह रहा हूं ना, यहां तक कोई confusion है? कस्टम की 20-60 लगा हुआ है, ये लिखा है स्टॉप स्ट्रैटेजी. हाँ हाँ करेंगे करेंगे, मैं उसी लिए वेट कर रहा हूँ. वहां पर मैं शायद पूरा ही लॉट लगा दूं. एक मिनट डैनियल से कह रहा हाँ, हूं हाँ. मैं ये चीज आपसे समझ वो नहीं मुझसे समझ लें, उनसे भी समझ लें. नहीं मैं वो वेट कर अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. Okay. I will go into stop strategy custom. अच्छा एक सेकंड सिर्फ रुकिएगा सर, आपके लिए नहीं है, ये बहुत एडवांस है, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे. जो सीख रहे हैं वो भी उल्टा हो जाएगा सारा काम. है देखो, है लिखिए स्टॉप स्ट्रेटजी, इन्हों जाके क्लिक करो, कस्टम दे होते हैं. ठीक है, ये कस्टम पे मैंने क्लिक किया. मैं 5620 पे वेट करूंगा, अपने उसके हिसाब से देख लीजिएगा. अभी तो मिड बैंड चल के नीचे आया. Now what is my profit trigger? What I'm telling the computer, profit should trigger at 10 ticks. Okay, let me double check how we did it. Is it we did 11 10 11 or how did we do this? आज की खत्म हो गया आपका? नहीं आप बैठे हैं 5 बजे तक बैठे. मैं हूं सर, मैं कहीं नहीं जा रहा 5 बजे तक. एक सेकंड. ओके, यहां लिखना है 10. अब कंप्यूटर क्या, आप क्या कह रहे हो? I want to trigger my profit when I hit 10. Then click one step. I'm giving you the most basic. You can do multi steps. Stop loss 11, profit TP 10 and 1. This is the condition. 10, 11, 10, 1. What this will do is it will set up your momentum the moment. अब यहाँ तक ठीक हो गया, clear? ये recording भी हो गई. Okay. So what will this do? Okay. Every time I will see 10 ticks. Now let's do the math. What is 10 ticks? 10 times 1250. Each tick is, so let's do, okay, one tick equals $12.50. So what is 10 times 12? $112.50 टिक्स के साथ हमने किया ना, तो 10 टिक्स को 100 बने ना, कि 120 सॉरी उल्टा हो गया, $125. 0.5. When I will see $125, it will put my stop loss at 0. In this trade, I will not make any money until this price goes higher and higher and higher. Sometime you take a mid-band trade, everybody sees $100, they get excited, they close the trade. Okay, we don't care about the profits, we care about our losses. All I care about is, because I have no idea if this price is going to go up or down, but all I care is, I've seen $125, I will lock $12.50. Because 10 ticks पीछे है ना, 11th पे वो शुरू हो जाएगा, 11 में एक lock कर देगा. So when it gets to 150, $25 are locked. It's not you're going to get 150, because sometimes what will happen is you saw 150 and you only got $37. My question Huh. is, there is a for the break even there is another block. Yeah, I don't where touch them. We can do plus. हाँ,
वो प्लस क्या कर रहा है जो मैंने पढ़ा है, हाँ। मैंने पढ़ा है काफी निंजा ट्रेडर की वेबसाइट पे हाँ, जाके, वो प्लस ये कर रहा है कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे 5 स्ट्रिंग प्रॉफिट तो रहे, हाँ, अभी तो आप जीरो पे, अगर हमारे अगेंस्ट गई तो हम 0/0 रहेंगे, अगर उस प्लस में जो मैं वैल्यू डालूंगी तो जब मेरी मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू होगी तो वो 5 स्ट्रिंग को लॉक कर देगी। नहीं वो ठीक है, मैं एडवांस ट्रेडिंग में नहीं जाता शुरू में, मैं इतना यहाँ पर मैं सिर्फ 2 रेकमेंड कर रहा हूँ, या आप फिक्स रखें एंड मैनुअल ट्रेल करें। जिस हिसाब से इस वक्त ईएस चल रही है वो एक झटके से 20 टिक्स ले जाती है, राइट? तो मैं क्यों 5 होगा, ये वो 5, ये आपकी पूरी कैंडल है ना, डैनियल ने आपको डे 1 में बताया है अपना स्टॉप लॉस बॉटम ऑफ द बार रखें, ट्रेल करना 10 होगा ये, उसने 5 टिक्स में आप क्या कह रही हैं कि यार 112 आ गए ना, 62 तो पकड़ो, 62 पकड़ लो, होता ये वो बॉटम ऑफ द बार नहीं है, वो उधर तक आई और वहां से शूट कर गई, आपका खत्म हो गया ना। तो सिर्फ इसलिए मैं कहता हूं अपना स्टॉप लॉस 10 टिक्स बिहाइंड रखिए, वरना वो फटाफट उसको इंजेक्ट। मैंने लगाया, ठीक है, मैंने बहुत पैसे लगाए, ठीक है, more than 775, ठीक है, सुबह बना लिया। बिल्कुल सही है। मैंने क्या करा, फॉर माय सेफ मोड मैंने जाके 5 टिक का अपना रख लिया कि भाई ये तो मुझे मिली जाए, ऐसे गारंटीड आप कर रहे हैं, बिल्कुल। वो ये ज्यादा कि वो फ्लाइट ऊपर नहीं जा रही, तो क्योंकि आप पकड़ लेता तो 65, यही तो मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 112 मार्केट में छोड़े ना, आप कहती है नहीं नहीं मैंने बस एक 65 जरूर लेने, आप कह रहे हैं कि 0 ब्रेक इवन लगा, 0 लगाए ना, हाँ देखिए एक अच्छा ट्रेड मिल गया ना, तो वो आप क्या कर रही हैं, 62 किए 62 किए एकदम ही 5 पॉइंट वापस कर दिए, वो आपने 4 दफा 62 पकड़े, एक स्टॉप लॉस लग गया, वो 250 ले गया। आपको लगा सकते हैं, हाँ जी, एटीएम का पेज सेटिंग करते हैं, कस्टम करते हैं ना, ये वाला। अच्छा, जब आपकी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली वहां चला गया स्टेप मैं लिखा हुआ है 10 11 1 आपकी स्टेप, सेटिंग ये कह रही है कि जो मेरा ब्रेक इवन होगा वो 10 टिक के बाद 0 पे आगे खड़ा एग्जैक्टली, और अगर मैं प्लस कुछ लगाती हूं तो नो नहीं, नहीं, अदरवाइज वो स्टार्ट इट वाज टेकिंग लॉट ऑफ 50s। तो यही तो मैं ये कहता हूँ मैं नहीं छेड़ता ना इसको, मैंने उसको कहा हुआ है, कसम खाई हुई है कि जब तक तुम 112 देखो ना मुझे सिर्फ 12 चाहिए उसमें से, 125 के बाद मुझे 25 मिल जाएंगे, तो पीछे आऊंगा ना 10 टिक्स। ओके, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है ये 11, ये पीछे एक टिक चलता जा रहा है, एक टिक पीछे चलता जा रहा है, और ये हमेशा एक टिक। नेगेटिव तो देखिए नहीं कि मेरी आप फिर समझ नहीं रही, नेगेटिव में तो ब्रेक इवन वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, अच्छा वर्स्ट के प्रॉफिट ही देगा ना। आई वाज थिंकिंग कि 11 इज द फ्लक्चुएट, नहीं देखिए वो ऊपर वाली साइड पे, नीचे पे तो नहीं है, एक दफा उसने 0 कर दिया, वो नीचे वापस क्यों जाएगा, हाँ उसने ऊपर ही जाना है। देखिए एक दफा उसने उठाया नीचे से 55 से उठाया, उसने 60 पे ब्रेक इवन कर दिया, अब आप बैठ जाएं, अब उसको नहीं तोड़ेगा, उसको नहीं तोड़ सकता है, वर्स्ट चीज क्या होगी, 0 पे निकलेंगे ना, 0 पे निकलेगा, ये वर्स्ट चीज है ना। आप पहले रेडी थे कि मैंने 250 का ट्रेड लेना है नेगेटिव, पहले आपने जब ट्रेड डाला 5 पॉइंट कितने होते हैं, $250, ठीक है ना, आपने अपने आप को सेट किया कि मैं $250 के लॉस के लिए रेडी हूं, वो चला गया 112 पे, 112 पे किया, आपके कंप्यूटर ने उसको 0 पे लॉक कर दिया, ठीक है। अब वो ये देखें, ये जो प्राइस ऊपर जा रही है तो यहां लॉक करता आ रहा है ना, तो वो इससे नीचे क्यों जाएगा, तो ये 11 इज दैट यस वो कैंडल के नीचे आपका लगाई जा रहा है ना। हाँ सर ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 11 10 1 यस, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, whenever you see $112 you will get $0. some users say I don't need more than $100, वो फिक्स लगा के चलते हैं, कहते हैं यार इस ट्रेड से मुझे 100 आ गया, मेरे पूरे दिन की ख्वाहिश 100 थी, गुड इनफ है, तो आप या फिक्स लेके चलें, some users open it, they don't want to trail automatically, क्या हाल है सर? ATM than the talked about before. No, ये तो हर ATM सेपरेट है, ये ES के लिए है, ये सेपरेट रखें, क्योंकि ये है इसका नाम मैं रखा होता है कि इसको मैं कैसे सेव करूंगा, अगर मैंने सेव करनी है ना मैं इसका जाके नाम रखूंगा ES,
हाँ एनक्यू तो आंखें बंद करके राहत भाई को देते हैं, आप ना ट्रेड करें। उनको मैंने स्टॉप कराया। बहुत तेज है आज भी। ये ट्रेडिंग एनक्यू इज परफेक्ट। एनक्यू में भी चल रहा है। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको एनक्यू में 35 पॉइंट ट्रेल करें। मैं अगर एनक्यू पे डालता हूं तो एक 35 टाइम्स 4 पीछे चलता हूं। सर आया उत्थे वहां पड़ी वाला? अच्छा ले ले सी ना, ठीक है ठीक हूं, लेकिन हुण भी बाय रखो। I was confused for this value of जो आपने 11 और 10 लिखी थी। उसके आगे नहीं कुछ लिखना। हाँ 10 11 10 1 वो तो है। हाँ। समझाए तो यानी कि जो ये हमारी लेडर्स बन रही है, हाँ तो हम 112 चढ़ रहे हैं, तो 15 12 लॉक हो रहा है। 12 के पीछे लॉक होता जा रहा है। यस 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 वही 11 है। यस जो यस कि तो आपका ये देखिए वो जिस हिसाब से चढ़ रहा है आपका हाँ। पीछे चलता जा रहा है ना। ये नहीं है कि वो नेगेटिव जाएगा, आप नीचे की तरफ है तो वो 11 नीचे उतर जाएगा, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं होगा। आप उसको कंफ्यूज करें। वो 11 लॉक करी जा रहा है पीछे। हाँ, सही है। लो जी चली गई जी मार्केट वापस। आई थिंक द रैली इज डन। देखिए मार्केट रिवर्स भी हो जाती है। फिर आप ना स्टॉप लगाएं और देखें अकाउंट कहाँ जाते हैं। नहीं वो तो ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी है। नहीं देखें आजकल ईएस में मैनुअल ट्रेलिंग मेरे लिए मुश्किल हुई है, क्योंकि आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो वो 200 दिखा के वापस आ जाती है। मैं कहता हूँ नहीं जी इसको ऑटो को करें। इसमें जो लोग फिक्स लगाते हैं तो वो क्या वैल्यू डालते हैं? वो यही 20 और 60 ये 20 फिक्स और 60 20 और 60 एक ऑप्टिमल है ना। एरिया ट्रेड आया, निचला नंबर उठाया 20 और 60 लगाए और जाने दें उसको ऑटो ट्रेल के साथ। नहीं बैठे बैठे मैं उधर आ जाता हूँ। नहीं पहले उसके अंदर भी टेम्पलेट है, 2 टेम्पलेट है, एक स्टॉप स्ट्रेटजी की टेम्पलेट है, एक बाहर वाली टेम्पलेट है, दोनों को सेव करना है। रियान हाउ आर यू? अच्छा अब मैं आता हूँ आपके ब्लैक कैंडल ट्रेड पे। आई होप आई एम नॉट स्पीकिंग। अच्छा, इसका भी सवाल है। हाँ जी हाँ इसमें जो आप कहते हैं ना ब्लू देखिए पता क्या हो रहा है, हर लोग देखिए कलर आ रहे हैं ना, कलर आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ब्लू ब्लैक पकड़ रहे हैं तो जो पहला ब्लू होगा वो हायर हाई होगा। नहीं हर दफा नहीं है ऐसे, है ना? ये नहीं तो, है ये ये तो वो मैंने नहीं पकड़ने ना, वो मैं छोड़ रहा हूँ। नो मेरी जब तक कंडे इस पोजीशन में हम खड़े हैं। देखें यहाँ है ना, तो यहाँ मिड बैंड ट्रेड लगता है, यहाँ ब्लैक कैंडल ट्रेड थोड़ी है। नो सपोज मैं यहाँ खड़े, हाँ हाँ अभी हायर लो बनने ही वाला है। अभी कहाँ ठीक है, नहीं हायर लो दिखना शुरू हो गया ना हायर लो। ठीक है हाँ हाँ। अब इस ट्रेड को ब्लैक कैंडल के लिए नहीं लूंगा मैं, ये मेरा ब्लैक कैंडल वाला ट्रेड नहीं है, ये मेरा मिड। वेट करें अभी यहाँ जब तक लोअर हाई नहीं बनेगा उस वक्त ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड लूंगा। अच्छा लेकिन हो सकता था मैं यहाँ से ब्लू काउंट करना शुरू कर दी हायर। गलत है ना, अगर यहाँ से वो चलती गई, देखिए मेरी बात सुने, एक पॉसिबिलिटी है कैंडल ऊपर जाएगी, मैं वो आप ले रही हैं हर ब्लैक, हाँ मैं नहीं हर ब्लैक कैंडल ले रहा ना। अपनी बात नहीं सुनी। इस वक्त जो मुझे हायर लो दिख रहा है ना ये अच्छा ये मेरा पहले तो ये देखे ना, ये मेरा ट्रेड मिड बैंड का था, ये मेरा ब्लैक कैंडल का ट्रेड नहीं था। मैं जब तक मेरा सेटअप मैं आपको बता रहा हूं कि वो नहीं है, आप ब्लैक कैंडल में सेटअप की इब्तिदा कैसे करते हैं? मैं आपको स्टेप क्या है? 2 ब्लैक के बाद पहला ब्लू आ जाए ना, ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड। अब ये पहला ब्लू था। नहीं नहीं अब नहीं 2 ब्लू चल रहे हैं, मैं ब्लैक का वेट कर रहा हूँ। 2 ब्लू के बाद ब्लैक होना चाहिए, 2 ब्लैक के बाद ब्लू होना चाहिए, चाहे वो हायर हाई ब्लू हो चाहे हायर लो का ब्लू। एग्जैक्टली 2 लास्ट 2 ब्लू कौन से हैं? ये वाले, ये वाला ब्लू है। अब मैं ब्लैक का वेट कर रहा हूँ, जब ब्लैक आएगा वहां से मैं 4.75 माइनस करूंगा, सेल डाल दूंगा। हाँ लेकिन कंफ्यूजन ये था कि हो सकता था मैं उस हायर हाई को बेशक पहला ब्लू मान के इसको पहला ब्लू नहीं लास्ट 2 करंट एंड प्रीवियस, आपने और पीछे नहीं जाना। तो ये आपकी स्विंग है, ये रिट्रेस है, ये फिबोनाची के अंदर से जाएगा। तो ब्लू ब्लू ब्लैक, व्हाई एम आई सेइंग ब्लू ब्लू ब्लैक? इन दिस टेम्पलेट यू हैव ए ब्लू, इन दिस टेम्पलेट यू हैव ए ब्लू। अब ब्लैक आएगा लोअर हाई पे, लोअर हाई माइनस 4.75 और 8.5 is your black candle to the downside. Black सर 15 10 30 20 या इस चार्ट पे 15 10 पे 4.75 करूंगा, 30 20 पे 8.5 करूंगा। आप जो ब्लैक कैंडल का एटीएम यूज कर रहे हैं तो वो बेस्ट 30-20 डजंट मैटर, मैं उसको यूज कर रहा हूँ हर चार्ट पे, हर चार्ट। लेकिन
उसको मैं यूज करता हूं। इनेबल कब कर रहा हूं? जब यहां मुझे लोअर हाई नजर आया ना, फिर मैं बटन दबाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ब्लैक कैंडल। हर ब्लैक कैंडल में ये है, क्या हमने आपको पहली दफा ब्लैक कैंडल दी थी, हर बंदा ऑन करके, नहीं आपने नहीं, मेजोरिटी लोगों को मिली, वो हर वक्त ना ब्लैक कैंडल ऑन करके बैठे हुए, यहां स्टॉप लॉस, यहां प्रॉफिट हुआ, यहां सारा निकल गया। या नहीं कोई डिले नहीं है, जब दबा देते तो देर लग जाती थी। नहीं वो तो मार्केट की कंडीशंस पे डिले अभी भी आएगा, मैं आपको ये सिर्फ फर्क ये है, आपने कहा आपने यूज नहीं की, डिले कहां से? सही है, बहुत किसी ने कि सुनी सुनाई, मैं अभी भी ऑन नहीं कर रहा उस लोगों के लिए। पहले आपको पता होना चाहिए अपने ब्लैक कैंडल दबानी कब है। अगर आप हर ब्लैक कैंडल दबा देंगे ना, यहां पर सारा लॉस हो गया, थोड़े से पैसे बने यहां लॉस हो गया, थोड़े से पैसे बने यहां लॉस हो गया, थोड़े से पैसे बने यहां लॉस हो गया। आप कहेंगे यार ब्लैक कैंडल नहीं चलती। हमने हर ब्लैक कैंडल नहीं लेनी, ब्लैक कैंडल सिर्फ वो लेनी है जो आपके पास आए, दो ब्लैक के बाद एक ब्लू आ जाए या दो ब्लू के ब्लैक आ जाए। आई नो स्ट्रेटजी है ब्लैक कैंडल। नहीं ब्लैक कैंडल क्या करती है, आपको 4.75 और 8.5 कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। आप उसको इनेबल करेंगे तो उसको पता, क्योंकि कई दफा होता है ये नंबर नीचे जा रहा है, आपका नंबर चेंज हो रहा है ना, 4.75 चेंज हो रहा है, 8.5 चेंज हो रहा है, तो आप वो इनेबल कर देंगे, वो खुद ही लगा देगी। Yes, $500 per month we charge. It's not good for beginner. Sir, it's good for everybody, not good for anybody. मेरे कहने का मकसद, अगर आप मैनुअल कर सकते हैं। जब हम ब्लैक कैंडल इनेबल करें, हाँ फर्स्ट करा मैंने अभी इस पोजीशन में, तो लोअर लो में कन्वर्ट हो गया। हाँ, ये तो खत्म हो गया। मैं हायर लो दिख तो रहा है मुझे, हाँ लेकिन अभी प्रोसीड नहीं वो ठीक है। आप जब हायर लो की ब्लैक कैंडल देखें, नहीं, जैसे ही मेरी बात सुने ना, क्या होता है, हायर हाई हायर लो, ठीक है। यहाँ जब लोअर हाई नजर आया ना, आ गया ना, मैं ब्लैक कैंडल को इनेबल कर दूंगा, ठीक है। नहीं बनी अभी तक, बेशक नहीं बनी ना, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि मैं ब्लैक कैंडल इनेबल कर दिया, नेक्स्ट ब्लैक कैंडल बने तो मुझे सेल में ले जाओ। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी, अगर इसने जाके हायर हाई बना दिया, मैं इसको इनेबल कर दूंगा। मैं कहूँ खुद करना है ना, वो स्मार्ट नहीं है, फिर ना देना 500। देखिए आपको चाहिए भी दो वो चोपड़ियां चाहिए। देखिए यहाँ मेरा आपसे डिबेट थी, यहाँ मेरी आपसे डिबेट थी, ये बटन $500 का वर्थ इट है कि नहीं, कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, हो जाता है। वैसे इतना मसला नहीं है, 8.5 इतना मसला नहीं है, ये बड़ी दूर बाद आता है 8.5। हाँ 8 देखिए अब ये देखिए एंड में पता क्या है, इस बटन के आपको $500 वैल्यूएबल लगते हैं तो आप ले लें, नहीं लगते ना लें। अगर आप एक माह ट्राई करें 500 दे के, अगर तो आपने कहा था ना, लेकिन अगर आपने इस बटन को ऑल द टाइम ऑन रखा ना, नैस्डैक धज्जियां उड़ा देगी, गारंटी देता हूं। वो जिस हिसाब से लास्ट टाइम हमने टेस्ट किया था, वो $600 प्लस 1200 माइनस, तो नैस्डैक में खुदा के लिए ये ना लगाइएगा। ये इसका मतलब है हमारी प्रैक्टिस ये हो कि जब लोअर हाई या हायर लो वाली बन रही है ट्रेड, उस वक्त हम अलर्ट बैठे कैसे। अब देखें ये मिड बैंड क्यों चल गया, लोअर लो से आ रहा था, आपने मिड बैंड पे बैठा 2 पॉइंट लिए बाहर आ गए, या ट्रेल करना है ट्रेल किया। सर सिर्फ S&P, सिर्फ इट कैन मेक यू प्लेंटी ऑफ, नहीं नो। देखिए ये देखिए हायर लो लग गया जी, ये आपकी पहली हायर लो लग गई। अब यहां से मैं ब्लैक कैंडल इनेबल करूंगा, 4.75 से मुझे ऊपर ले जाएगा। मैं ऑन करता हूं, एक सेकंड अपने, नहीं एग्जैक्टली तो मेरा, लेकिन वो आपको पता है ना, ऑर्डर तो उस वक्त तक नहीं लगेगा। नहीं देखिए आ रही है, अभी भी हायर लो है, अब नीचे और गिर गया ना, तो मेरा नंबर 4.75 चेंज हो गया ना। वेट करें, आने दें। अगर नहीं हुआ तो एकदम डिसेबल, हाँ डिसेबल, अगर लोअर लो लग गया है तो जाएं और डिसेबल। मेरा जो आपसे टैक्स पे कैलकुलेट नहीं करेगा तो वो नेगेटिव पे नहीं जा सकते, चाहिए, क्योंकि उसने फ्यूचर में ऑर्डर लगाना है ना, करंट पे तो नहीं लगाना। अब यहां से 4.75 आप करेंगे तो $500 बचा लेंगे, हमने करना है तो 500 लेना है, बस इतनी सी बात। तो
अब देखें ब्लैक कैंडल लगने लगी है। अब देखें 2 ब्लैक के बाद एक व्हाइट आ गया, ब्लू आ गया। देखें अब इसने शूट करके ऊपर जाना चाहिए। एक मुझे ब्लैक कैंडल मिल गई, 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट ले लिया मैंने, डन हो गया, खत्म, ट्रेड इज डन। देखिए मैं इसके अंदर एटीएम डाली हुई है ना, तो इसके अंदर 2060 डाला हुआ है, 20 और 6। फिर देखिए ऑटोमेटिक एटीएम मुझे नहीं परवाह, ब्लैक कैंडल में इतनी ज्यादा, जैसे वो क्या 11 पे मेरा 0 हो जाएगा। उसमें मैंने ये रखा है कि 8 टिक, यहां देखिए 4.7, 6.5 माइनस 4.7, उसने ऑलमोस्ट 1.75 का ट्रेड दिया आपको। इसमें भी देखिए आप अगेन 2 चीजें मिक्स कर रही हैं। ब्लैक कैंडल की एटीएम डिफरेंट है, ब्लैक कैंडल क्या कर रही है उसके साथ मैं अटैच कर रहा हूं ये टेम्पलेट जो सेव किया कि ब्लैक कैंडल के अंदर भी या फिक्स रख दें या आप ऑटो डाल दें, क्योंकि 2 एटीएम्स बन गए ना। एक तो ब्लैक कैंडल की, उसने क्या करना है हर 4.75 ट्रेड लेते जाना है। अब यहां पर अगर आपने ब्लैक कैंडल ऑन रखी होती, मेजर नुकसान हो गया था, क्योंकि ब्लैक कैंडल बनी 1, 2, 3, 4, 5वीं ब्लैक कैंडल बन रही है, सारे के सारे पैसे वापस चले गए। तो आपने ब्लैक कैंडल अगर एटीएम लेनी है उस वक्त ऑन करनी है जब लोअर लो हाई और जब उसकी जरूरत है, वरना तो आपको वो नहीं। आपने इनबिल्ट बना दिया, उसको हमें नहीं रीसेट करना पड़ेगा। नहीं, वो हमने बिल्ट इन, वो मैथ कैलकुलेट कर रहा है हर 4.75 बाद या 8.5 के बाद वो खुद लेगा। प्रॉफिट कितना लगा आपने? मैंने नहीं प्रॉफिट लगाया, वो आपने सेट करने हैं। मैंने सिर्फ मैथ करके दे दिया है 4.75 या 8 पॉइंट। अगर तो आपको मैथ मुश्किल लगता है तो दे दें हमें 500, अगर अच्छा लगता है तो ना दें। देखिए मैं आपको 9 किस्म के ट्रेड दे देता हूँ। जो लोग एरिया ट्रेड करते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं बंदों को जानता हूँ ना, उनके पास चार्ट्स हैं, हमसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेते हैं एरिया की, फोन पे ट्रेड मारते हैं, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं 58 60 पे लिया 50। देखिए मुख्तलिफ लोग हैं ना सर, फोन पे ट्रेडोवेट खोलें ऐप, पूरी दुनिया पे कहीं पर फोन पे खोल के आपने फिर ये नहीं देखना मिड बैंड क्या है, एरिया क्या है, आपने सिर्फ देखना मेरी प्राइस क्या है। कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया 5665, आपने जाके ऑर्डर वहां लगा दिया, अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, टीपी लगा दिया। तो ये एरिया ट्रेड है। एरिया ट्रेड में आपको, आज मैंने नैस्डैक का कहा था, हर पूरी दुनिया में बंदे जॉब पे ये कर रहे हैं। वो सुबह 9:30 बजे हमारा एरिया देखते हैं, फोन खोल लेते हैं। मेरा बेटा स्कूल से करता है, नैस्डैक का उसने सुना है कि एक्सपेक्टेड लो लेना है, आज एक्सपेक्टेड लो उसने लिया, सारा ही अकाउंट पास कर दिया, क्योंकि एक्सपेक्टेड लो से वापस चली गई थी ना। वो नैस्डैक करता है लेकिन एरिया से नहीं। उसका एक रूल है 15 पॉइंट प्रॉफिट 35 पॉइंट स्टॉप लॉस, एटीएम लगा के बैठ। नैस्डैक में है 5 माइक्रो, 5 ट्रेडोवेट खोलो, 5 माइक्रो लेता है, 15 पॉइंट 5 माइक्रो मतलब $150, 150 का प्रॉफिट, 350 का लॉस। ये उसने फीड किया हुआ। एरिया आया, वहां से एंटर हुआ, 35 पॉइंट नीचे गई, उस दिन के बाद ट्रेड नहीं कर रहा। ये नहीं है कि ट्रेड पे, और अगर 15 पॉइंट का प्रॉफिट है फिर भी खत्म। तो ये लोग नैस्डैक वाले हैं। फिर ईएस वाले हैं, वो है रियान भाई, रसल से बाहर नहीं आता है, वो हर वक्त रसल्स कर रहे हैं। हाँ जी आप डाउनलोड करें फंडेड अकाउंट का ट्रेडोवेट। अगर स्लो मार्केट में तो ये तो एनक्यू में चल सकता है। ये एनक्यू में चलाना है तो ये चलाइएगा 6 के बाद, सुबह नहीं। और आप बता रहे 15 का प्रॉफिट 35 का लॉस 5 माइक्रो पे रखता है उसने अपने, दोबारा एक दफा पीए फेल करने के बाद दोबारा सारे बना लिए। तो लेकिन डिसिप्लिन से करता है ना वो बात। नैस्डैक में सर एक ही चीज है डिसिप्लिन, वरना आपको वो तबाह कर देगी। मैं आज बोल के कहा मैंने आज S2 नहीं लेना, क्योंकि 15 दिनों से नैस्डैक खुलती है एक्सपेक्टेड लो, और 5 बजे वो पता कहां खड़ी होती है R1 पे। ये हिसाब चल रहा है नैस्डैक का। मैं आप वेंसडे, दूसरा वेंसडे, ये अब कल वेंसडे, तीसरा वेंसडे, 3 वेंसडे में हम ये देख रहे हैं मार्केट खुल रही है सीधा एक्सपेक्टेड लो। तो S2 में फिर आप जो है ना
क्या चीज? ES नहीं, ये स्लो है। जो नैस्डैक करता है वो एरिया से बाहर निकलेगा, क्योंकि आपकी फीलिंग है ना, यहां से शायद ऊपर जाए, यहां से फीलिंग। मैं अब तो कसम उठवाता हूँ, हाँ, मैं इस कसम उठवाऊंगा कि आपने एरिया से बाहर नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, मैं आया, मैं एनी टेस्ट से आपका अभी कर देता। तो अब आप वो मसला हो गया, लेकिन वो मैं समझ रही थी कि उसको ऑटो ट्रेडिंग में नहीं 5 नहीं करने, आप उसको पाँच ही नहीं खोल दो उसको। ये मेरा ख्याल है। अब हम सारे क्या वेट करें, जब ES पे आएगी ना 5620 पे, तो मैं बाय करूंगा। अभी 40 पे खड़ी है ना, 5640 पे, जब 20 पे आएगी तो बाय करूंगा, क्योंकि कंप्यूटर ने एक्सपेक्टेड एक्सट्रीम लो दिया हुआ है। आज कितनी मार्केट गिरी है जी? 129 पॉइंट, 135 पॉइंट। यार मजाक है थोड़ा, रोज की 100 पॉइंट गिर रही है। 7, और देखें 700 के बाद भी हमें लॉसेस नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर मैथ कर रहे हैं, राइट? मैथ के बगैर करेंगे तो खराब होगा। सर मिड बैंड के 4 रूल्स हैं। प्राइस, दोनों चार्ट ग्रीन हो, नंबर 1। प्राइस हायर हाई से आएगी, आपने मिड बैंड लेना। लार्ज ट्रिगर ग्रीन होने चाहिए, तीसरा। और आपका आई थिंक दैट्स अबाउट इट। बेशक हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो 70% है ना। अगर आपने एरिया करना है वो 90% है। नहीं, वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के ट्रेड नहीं में करता। सर समटाइम मैंने एरिया लिया है, लेकिन वो एरिया से भी चली जाती है। ऐसा ही होता है, 5 दिनों से हो रहा है सर। एक्सट्रीम लो से भी 200 पॉइंट गिर सकती है, तो हर एरिया ट्रेड में 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे ना। मैं कई दफा लगाता हूं। हम ये कहते हैं कि आपने 10 दफा एरिया लिया, 9 दफा चलेंगे। आज जिसने S3 लिया पैसे बनाए, जिसने पांचों, पहली तो मैंने 30-20 पे ब्लैक कैंडल SRES बता दी थी जब वो डैनियल लेक्चर दे रहे थे। तो हाँ सर, फिर मिड बैंड टू द डाउन साइड, क्योंकि वहां से बाई क्यों करना? S3 की कोशिश करें, S3 पे जाए ना तो सेल में ना जाए, R3 पे जाएं तो बाई में ना जाएं। आपको ये सारा डैनियल ने बताया हुआ है। S3 पे बाई नहीं करना और S3 पे सेल नहीं करना, R3 पे बाय नहीं करना। यार वहां से मिड बैंड फेल होंगे, तो एरिया पे भी तो उसको कंटिन्यू करें ना। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड। R3 पे तो आई नहीं मिश्रा, मैं बता रहा हूँ कि R3 पे आई नहीं। एक सेकंड सर। अभी अब ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड बन रही है। वैसे ब्लू के बाद ब्लैक आया है, ब्लू ब्लैक आ गया है 30-20 पे। लेकिन प्लीज सेल का ना लीजिएगा, वो शायद ज्यादा लंबा, देखें कितना नीचे और गिर सकता है। S3 से नीचे खड़ा है, तो मुझे ब्लैक कैंडल टू द अप साइड चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। इवन तो हमारा सेटअप पूरा है, ब्लू और ब्लैक आया 30-20 में, देखिएगा 8.5 ब्लू ब्लैक आया। जी मुझे एनी डस्ट दीजिएगा। सॉरी 11121 जी एक्सेप्ट करेंगे। ये देखें ब्लैक कैंडल, देखें बनती है कि नहीं, लेट्स सी। सेल की बनेगी बिल्कुल, ब्लू ब्लैक है, लेकिन S3 से नीचे है, जरा ध्यान से, क्योंकि ऑल टाइम लो आ गया ये, मीन 3 वीक्स लो। ऑल टाइम लो तो 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट कितना, ऑल टाइम नहीं कह सकते, ऑल टाइम हाई कह सकते हैं, ऑल टाइम लो नहीं कह सकते।
5640 नहीं, पिछला ब्लैक नहीं था। 1510 पे पिछला अगर ब्लैक हो तो वो चांसेस आपको ज्यादा देगा। ये देखें, अब इसको हम सेव करेंगे एज ए टेम्पलेट। हाँ है, हाँ ठीक है, 10 11 10 1 इसको लिख दें ऑटो ES, ठीक है, 11 10। सर जहां से मैं लो के नीचे बाय कर रहा हूं प्रॉफिट बन रहा है, क्योंकि वो कितनी नीचे जाएगी। ये सेव हो गई है? हाँ जी, मैंने ये सेव कर ली है। अब आपको यहाँ पर सेव करें, इसका नाम रखें SES। आपने करना है 2060 ऑटो S2060 ऑटो। हाँ हो गया जी, सेव हो गया। इसको F करेंगे। This mid-band worked though. Price was coming from higher high. Gave us a... और कितनी लेके जानी है इन्होंने? नो कौन सी? हाँ बनाए ना, लेकिन 4.75 खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप लिखें, पहले लिखें कस्टम में जाएं, लिखें 20 and 60। बननी तो चाहिए लेकिन 30-20 में, लेकिन वो बननी नहीं पा रही, इतनी गिर चुकी है, नहीं गिर बहुत चुकी है नीचे प्राइस। तो नैस्डैक जो है ना, कहाँ तक गई आज तो देखा ही नहीं नैस्डैक को सर। 19,520। हाँ जी, अभी मिड बैंड बिल्कुल सही चला। ऑलराइट, अगर यहां से R2 पे ले गए ना, मैं मान जाऊंगा मार्केट पूरी रेग्ड है। एक्सपेक्टेड लो से R1 पे ले जाते हैं। हाँ जी, मुझे एनी डेस्क है आपका ना? 111 एक सेकंड दीजिए। और ये आप लोगों का ठीक गया नाश्ता किया? थोड़ा थोड़ा सो मेनी स्टेप्स के साथ कर रहे हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन तीसरी रिजेक्शन विक दिया उसने 30-20 पे, उसको नीचे नहीं जाना। 50 से 19। So Nasdaq went down to expected low and lower.
सिर्फ नंबर बचा था 300 वाला, 19,520। और ऊपर कितनी गई है आज खुल के? कितने बजे? 10। ये गई है जी 5711। S1 तक गई है 19,000। बड़ी ब्रूटल डाइवर्जेंस है नैस्डैक में। इट शुड गो बैक अप 200-300 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। अप यहां से इसने जाना है। देखें 60 मिनट में डबल ट्रिपल डाइवर्जेंस है, क्योंकि वो 19,000 से भी गिर गई ना। गोल्ड भी गिर रहा है, 2900 पे आ गया। तो 10 बजे 9 बजे वाली कैंडल 9:30 बजे गई थी 19,450 तक। 19,400 नहीं सॉरी 19,950। S1 तक ही गई। लेकिन ब्लैक कैंडल बनने की कोशिश हो रही है। ब्लू ब्लू ब्लैक के बाद देखें कहां तक जाती है। नहीं 30-20 में ब्लू ब्लू ब्लैक आया ना। ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड बनेगी ना 8.5 नीचे की। हाँ, लेकिन सेल ना लीजिएगा प्लीज, वो बहुत वीक है, क्योंकि S3 के नीचे है, ऑल टाइम लो के नीचे है, तो वो शायद ब्लैक कैंडल बनते ही वापस चली जाए ऊपर। तो इट डजंट हैव एनफ एनर्जी टू, because 1, 2, 3rd, 4th time. Let's see. I could be wrong too. There you go. Black candle बनी। अब कितनी और चलाती है? 8.5, 1 पॉइंट दिया उसने अभी तक। Let's see. Will it give us 2 points? This black candle to the downside. अभी तक तो 1 पॉइंट दिया उसने। 10.5 पे 2 पॉइंट हो जाएंगे। नहीं उसके बाद इतनी जान नहीं है अभी। $10, 1.5 पॉइंट दिया वैसे ब्लैक कैंडल ने टू द डाउन साइड, पर लेकिन उसमें अभी मोमेंटम दिखते हैं ऑलमोस्ट 1.75। कितनी पॉइंट नीचे आई है जी? यस 135 पॉइंट। माय गॉड, 2 पॉइंट हो गए जी पूरे 8.5 से 2 पॉइंट। लेकिन हमारा सिस्टम वही चला, ब्लू ब्लू ब्लैक, ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड। सिर्फ 2 पॉइंट ही मिले इसमें से। जी वो देखें 30-20 में पिछला क्या था? ब्लू ब्लू ब्लैक, ये ब्लू ये ब्लू, तो ये ब्लैक बनी ना, तो बॉटम टू द बॉटम, तो नीचे जानी थी। या एस नहीं ये स्विंग रिट्रेस नो एक्सटेंशन। पिछली 3 मूव बताती हैं आपको SRES। हाँ जी, इसमें साइन इन करें अपना फंडेड का, लेजेंड्स का जो भी अकाउंट है आपका, जो भी फंडेड अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड है वो डालना है। ओ माय गॉड 37, 36, वो बड़ी अच्छी ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड बनी। वो पिछला भी तोड़ दिया उसने। इट मींस नो लोअर इज अ लोअर। डाउन साइड में माइनस करते हैं। हाँ जी माइनस, और
ऊपर पे प्लस करना है। ब्लू ब्लू ब्लैक आ गया तो आपने प्लस कर लेना है, ब्लैक ब्लू सॉरी ब्लू ब्लू ब्लैक आया तो माइनस करें, ब्लैक ब्लैक ब्लू आया तो प्लस करें। हाँ जी हाँ जी 36 माय गॉड नैस्डैक चली गई 491 पे जी, और आज चले हैं 31 मिड बैंड ऊपर और नीचे जाने, एक एक मिड बैंड में पीछे 31 मिड बैंड चले हैं, 6 सेटअप SRES वाले चले हैं, 2 एरिया चले और फिबोनाची अनलिमिटेड चले हैं, तो everybody should be making money. That's the low to go high is the number. है 20 पे बाय बनेगा ना दोबारा। उफ अब देखें ब्लू आ गया जी, 1510 पे ब्लैक ब्लैक ब्लू आ गया, ऑलमोस्ट ना खत्म हो गया, और नीचे 36-25 किधर जाना है जी इसने? हो गया सर आपका अकाउंट। अब आप 10 मिनट बाद निंजा चलाएंगे तो चलें। बेशक लागू कर दूं लेजेंड को। हाँ जी बिलनॉक्स में बैलेंस को ट्रेल कर सकते हैं हैं यार, बिलनॉक्स में ना ट्रेलिंग में 112 खराब होंगे क्योंकि वो लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है ना, तो अब फिक्स्ड एटीएम के साथ बाहर आए। आप कहीं 8 टिक लेना है, देखिए होगा ये आपने 12 फिक्स ही लगे तो वही वो ठीक है, वही ठीक है, क्योंकि होता ये कि अगर उसने 300 दिखा दिया और 200 में बंद किया तो $100 काट लेंगे थ्रेशोल्ड से, तो ये मसला है। इसीलिए बुल लॉक्स में हम लाइव ट्रेल नहीं करते, जो लिमिट लगा के निकलें वो बेहतर है। नो प्रॉब्लम, टेक केयर जी, टेक केयर, एब्सोल्युटली एनी टाइम। चल भाई रॉकेट सिंह यहाँ से ले जा नैस्डैक। रॉकेट सिंह वाली फिल्म देखी है किसी ने? याद है रणबीर कपूर की थी ना, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। हाउ ही गोज, एंड देखिए मिड बैंड चल गया, अब पहला हायर लो लगाए तो नहीं जी, अभी और नीचे जाना है 35, अभी नहीं है जी इसका मूड ऊपर जाने का, और कितना नीचे जाना है? डाइवर्जेंस की लाइन बनेगी ब्लैक कैंडल के बाद, और लेट्स सी नैस्डैक 491, टेक केयर जी। 5633 कौन सा स्टॉक ब्लीड कर रहा है जो इतना नीचे ले गए? नीड टू नो। एक्सट्रीम लो ट्रेडिंग सर, टेस्ला $227, $227 टेस्ला, $35 गिरा है सिर्फ आज के दिन में टेस्ला। मुझे खुशी पता किस बात की, लोगों का
इतने एरोगेंट हो गए थे ये लोग, इतने, ये 213 पे था, लोग कहते थे इसने 1000 पे जाना है, 213, 313, 413, 484 से वापस आया। सो यू नो, नेवर बी एरोगेंट। ये स्टॉक्स चेक करने के लिए कौन सी मैं यूज करता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू, तो मैं साथ साथ एप्पल गिर गया, मेटा गिर गया, माइक्रोसॉफ्ट ये तबाह कर रहे हैं जी, एनवीडिया गिर गया, $107 पे आ गया सर। 100 मेरा ख्याल है कि 3 मंथ पहले 150 ट्रेड हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी, तो गिर सी 118 तक गिर गया सी, लेकिन वो नहीं जा रहा जी कम, एक और मिड बैंड चल गया। स्टे इन शॉर्ट। नैस्डैक सर 750 पॉइंट, लो जी पहला हायर लो आ गया जी। अब यहां से पहले जाएगी तो देखेंगे ना, अब 1510 में पहला हायर लो आ गया, लेकिन अगर इसने 33 तोड़ दिया तो लोअर लो बन जाएगा, so we don't care then। एक बज गया, कोई रिवर्सल नहीं दिया इन्होंने आज, कोई ग्रीन कैंडल दी नहीं ऊपर की। लो जी हायर लो के बाद 4.75 देखें कैंडल बनाता है, कितने पॉइंट देता है हमें? 2 पॉइंट चाहिए ना, और नीचे जाना चाहता है तो नीचे जाए तो हमें परवाह नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप बाय है ना, तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है, लॉस नहीं होगा। प्लस 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 क्योंकि ब्लैक ब्लैक ब्लू है। 4.75 19 ticks। $56.31, my God, another divergence trade। Nasdaq came to 19,473। सर हो चुका है डाइवर्जन द ट्रेड है, तो मिड बैंड होके निकल भी आया। अब यहां से पहला हायर लो दे दे यार, अभी तो वो लोअर लो ही लगाई जा रहा है। चलो देखते हैं। यूएस गिर गई है 150 पॉइंट। शायद देखो नैस्डैक 300 तो ना लेजेंड 150 रह गया पीछे बस, एक्सट्रीम लो तक। एक और लो जी, और नहीं छोड़ेंगे आज नैस्डैक को। 28-20 आ रहा है जी, आपका एरिया आ रहा है। नहीं 20 5620 आ रहा है जी। $5626 फिर मिड बैंड चल के, नो डजंट वांट टू क्लाइंब अप। Nasdaq 455, 500 पॉइंट गिर चुकी है जी सुबह से। हाँ जी, और स्टॉक किधर आ गया जी? टेस्ला ले गए
$225 टेस्ला गिर रहा है जी पागलों की तरह। आज $36-37, $225 टेस्ला। बिल्कुल प्री इलेक्शन आ गया काम टेस्ला पे। Mid-band worked to the downside again. हाँ, ठीक है जी। ऊपर आने की राह देखते हैं। ओके जी, ठीक है। अभी तो रिट्रेस ले रहा है, फिबोनाची तक ले सकता है। I think bullknot sale is finished, right? खत्म होगी ना? लंबा हो गया था। एपेक्स ने एक्सटेंड कर दिया बुल। सर जैसे ये मैं जैसे बुलनॉक्स में मैंने ये ऑर्डर लगाया अपने सिंह पे ऐसे तो हाँ मैंने यहाँ स्टॉप भी लगाया। हाँ, यहाँ तक एग्जिट हो गया तो ठीक है। नहीं अगर नहीं होना चाहता मैं उसको खींचता जाऊँ। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माइनस नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से ट्रेलिंग ऊपर भी करेंगे तो उसने जितना मैक्सिमम देख लिया ना, वहां काउंट से शुरू हो जाता है। अगर वैसे आपका ये ऑर्डर लिमिट है, मतलब आपके अगर मैंने इसको या लंबा किया नहीं वो ठीक है, लेकिन वहां तक नहीं गया, हाँ तो जहां से गया वहां से काउंट होना शुरू हो जाता है। अच्छा वो वहां से काउंट करते हैं, माइनस वहां से माइनस करें। मतलब स्टॉप लॉस लगा के करना है। हाँ हाँ, नहीं फिक्स्ड लगा के रखें। बुलनॉक्स daytraders.com और ये वाला फिक्स से लगा के रखें। लाइट ऑन करता हूँ, लेट्स सी। मैं घर बैठे बैठे अब मैं आपको इसके बाद जब आप फिनिश होएंगे तो ये बता देता हूँ स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन वाला, कि आपका किस तरह जा सकता है वो फायदे में। फिबोनाची के अंदर से हायर लो लगाएगा 30-20 ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड।
देखिए जी, आ रही है ब्लैक कैंडल हमारे, अब मेरा सेटअप तैयार हो रहा है। ब्लैक ब्लैक और ब्लू 30-20 में देखिएगा, 30-20 में ब्लैक ब्लैक, पहला ब्लू बनेगा तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो ब्लैक कैंडल बननी शुरू होगी ना, तो मेरा हायर लो बनना शुरू हो जाएगा। यहां से देखता हूं, लेकिन अभी तक नहीं। ये देखें सर, नहीं जी, अभी तो ऊपर ही जा रहा है। कोई सी भी ना 2 से 3 मूव देख लें पीछे, ठीक है, ईएस में, नॉन नैस्डैक कहीं पर भी नहीं। जब आप कोई सी भी पिछली 2 मूव देख लेंगे ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं स्विंग में हूं, मैं रिट्रेस में हूं, या मैं एक्सटेंशन में। आपको उन्होंने SRE वाला जो फॉर्मूला डैनियल ने समझाया हुआ है, उसमें यही बताया हुआ है कि स्विंग आती है, रिट्रेस आती है, एक ये नंबर अगर नहीं टूटता ना तो ये एक्सटेंशन है, स्विंग री SRE। अगर तो एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन स्विंग बन जाएगी, ठीक है। अगर एक्सटेंशन नहीं है तो रिट्रेस स्विंग बन जाती है। ये फॉर्मूला है, इसको हम बार बार पढ़ते हैं, स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन। सो SRE इक्वल्स स्विंग। अगर तो पहले यहां लिखता हूं स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन, इफ E equals yes, then E equals S. स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन, अगर इसमें एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन का नाम स्विंग हो जाएगा। यहां तक फॉलो हो गया? अगर एक्सटेंशन नहीं है तो R becomes S। फिबोनाची के अंदर से आएगी, नीचे आएगी, हायर लो लगाएगी, ऊपर चढ़ जाएंगे। तो पहला स्टेप ऊपर की तरफ ऊपर, पहला स्टेप नीचे की तरफ, तो ये मैथ है। तो अब आप इधर देखिए, करंट मूव है ना, 1 2 2, ये बनी इसकी स्विंग, ये इसकी रिट्रेस है। अब हमने देखना है इसमें एक्सटेंशन है कि नहीं। तो रिट्रेस में, हर रिट्रेस में ये रेड एंड ब्लू येलो बॉक्सेस आते हैं, इनको फिबोनाची बॉक्सेस कहते हैं। ये आपका रेड एंड ब्लू। तो देखें अब यहां से अगर मुझे ये, अच्छा ये मैं ब्लैक कहता हूं, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, पिछली 2 मूव्स आपने देखनी है। अगर उनका कलर ब्लैक ब्लैक है और उसके बाद ब्लू आया है, इट मींस प्राइस ने ऊपर जाना है। और अगर ब्लू ब्लू ब्लैक आया है तो प्राइस, अब यहां देखें क्या हुआ, ये मूव थी ब्लू, ये मूव थी ब्लू, उसके बाद आया ब्लैक। देखें कितनी प्राइस शूट करके नीचे गई है, ब्लू ब्लू ब्लैक नीचे, ब्लैक ब्लैक ब्लू ऊपर, बस। और सिर्फ फर्क यह है कि यहां से 8.5 में ब्लैक कैंडल पे चढ़ना है हमने, और वो जो दूसरी है प्लस करना है, नीचे नीचे से हायर लो की प्राइस से, जो भी ब्लू की प्राइस होगी ना नीचे, तो उसका आपको आसान दे देता हूं। सो अगर ब्लू है, ब्लू प्लस ब्लैक हो जाए ना, तो -8.5 कर दें, या -4
I made 5 पे काम करो 150K के प्रो बना रहा हूँ और टेक प्रॉफिट के। नहीं देखें, आप जो भी कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ उसमें एक ट्वीक करना चाहता हूँ, ओवर ट्रेड ना करें बस। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे कोई मसला नहीं है कि आप हो ये रहा है, मैं हूं ना। इस वक्त 1:32 हुआ है, सारे अकाउंट भरे हुए हैं, फिर मसला ले लूंगा यार, एक ट्रेड और वो फिर वहां से तो लास्ट वाली जो ना, हाँ जी। मार्केट में आ गए। अब देखें, लोअर लो से आ रही है प्राइस, मिड बैंड पे टच किया, नीचे आ गया, 2 पॉइंट लिए, खत्म हो गया। 23 घंटे वो पूरी घूम रही है, इसका मतलब नहीं है 23 घंटे। नो प्रॉब्लम, सॉरी, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप आर ट्रेडर प्रो खोलें तो रिदमिक ट्रो, हाँ वो खोल के देखें कि उसके अंदर आपके पास अकाउंट भी एक्टिव है कि नहीं। हाँ डन, हाँ वो ठीक है, वो मसला नहीं है। अभी तक 26 नहीं तोड़ पाया ना यार। अब ये लोअर हाई बना है इधर दोनों पे, यानी कि इधर हायर लो बना है, ब्लैक ब्लू आया है 30-20 पे। हाँ जी, ये 20 पे लेके जाएंगे, 455 पे तो ले गए। I don't know how much you guys lost on my volume. It's just battery died. Normally I don't run this stream until 20 का एरिया अभी भी ठीक है, 26 से गई है। मैं सिर्फ बार अब देखें, पहला हायर लो आ गया जी 1510 पे। नहीं 26 मैं वी देख रही है, सॉरी वी नहीं देख रहा, 10 देख रहे हैं, मेरा दिमाग इसलिए पता नहीं वी किसी ने मैंने कहता होते 20 का एरिया नहीं है। नहीं I didn't take these trades। सत्ताईस से निकल गई जी। ओके जी, टेक केयर। अगर ये लगा दी ना, डबल बॉटम लगा दी इसने, तो और नीचे जा रही है। नैस्डैक 2650 MES। ट्रेडर डैशबोर्ड तक क्लिक करो। हाँ अकाउंट गए नहीं, दोनों चले डन। हाँ नहीं कैंसिल ना करो, क्योंकि नेक्स्ट $15 दे आएंगे, 15 ही दे आएंगे अगले मंथ बाद। हाँ जी। ठीक है जी। सर टेक प्रॉफिट मुश्किल टेस्ट है, क्योंकि एक तो महंगा है, $119 ਦਾ ई है, उस तो बाद पीए लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है। बिगिनर्स वास्ते टेक प्रॉफिट में रेकमेंड नहीं करता। लेजेंड तो बाद असी मैं प्रेफर करता है टेक प्रॉफिट। पहले लेजेंड करो, बुल नॉक्स करो, उस तो बाद क्या चीज है? नहीं ये नहीं है 100। अगर किसी 30 दिन कर लिया टेक प्रॉफिट तो फिर पीए दी फीस नहीं है। लेकिन नहीं, अभी के लिए प्रमोशन चल रही है ना टेक प्रॉफिट में कंडीशन ज्यादा है पीए की, क्योंकि लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड आ जाता है, उसमें एंड ऑफ डे नहीं है। लो जी 22 आ गया, 21 आ गया,
और कितना नीचे जाना है जी? एक सेकंड देखें जी, नैस्डैक कौन सा स्टॉक लेके गया ऐसे? टेस्ला 226, Nvidia 6. It is bleeding like crazy right now. हाँ सर, उफ। नहीं नहीं, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਟਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੀਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, -30 ਚ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੋਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋਕ। ਲਓ ਜੀ, ਮਿਡ ਬੈਂਡ 30-20 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5619 ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਇਆ 19436। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਵਰਸਲ ਪੂਰਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਮੇਰੀ। तो जो बिल्कुल बिगिनर होता है ना, उसको क्या होता है कि मैं आज ही शुरू कर दूं। और उतने से भी मैं कहता हूँ नहीं, अभी नहीं। ये तो फिर फंडेड में अगले दिन खोल देता हूँ। डैनियल 3 माह नहीं खोलते थे, वो GFF वाला। ये जितनी तेज तुसी जाओगे ना, उतनी तेज ही वापस आओ। स्लो। अब 30-20 को अगर जाके इसने डाइवर्जेंस लगाई ना, तो 19 टूट जाए। अब ये देखना है, 30-20 पे 30-20 का मिड बैंड चल गया। बिल्कुल, sorry, gotta charge my आज देखते हैं कि इनके पास एनफ एनर्जी R1 ले जाने की कि नहीं।
क्योंकि पागलों की तरह आपको पता ही है ना, अगर यहाँ से 800 पॉइंट से नीचे ले आए तो ये पीछे ही होता यही जा रहा है ना, दो के बाद वो खड़ा है। व्हाट व्हाई दो ही है गया, एक किया गया, क्यों? जब हमने किया तब तक लेने की कोशिश करी है और मेरा मिडबेट था, खड़ी होने का मिडबेट नहीं चला। नहीं, एक आध नहीं चला, लेकिन यार मैं आपके साथ बैठ के आपको एंट्रीज दे रहा हूँ यार। ये SRES वाली तो 500 एंट्री ठीक गई यार, 100%, कोई चेंजेस नहीं आई उसके अंदर। उन्नीस 19,436। सर देखो, पहले तो टेक प्रॉफिट है $119, ठीक है, महंगा है। उस तो बाद उन्हें तुसी करने 5 दिनों तो अंदर अंदर, पहले नहीं कर सकते। उस अगर तुसी फेल कर देता तो फिर 119 दो होर महंगा है ना। नंबर 2, अगर वो पास कर गए तो ਉਹਦੀ PA ਦੀ फीस नहीं है, फिर तुसी दोबारा ट्रेड करोगे और एपेक्स की तरह लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड। हाँ, ये हर बारी ट्रेड लाओगे उन्होंने 1510 में हायर लो लगा है। तो ये टेक प्रॉफिट मुश्किल टेस्ट है, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन दी हुई है कि पीए की कोई दिन नहीं है। पीए आपने कर लिया ना, तो पीए बेशक एक दिन में कर लो। तो वो मुझे तो लगता है कि वो ज्यादा आपको आपके इमोशन से खेलते हैं कि आ जाओ भाई आ जाओ। तो यस, तो लेजेंड या बुलनॉक्स या हाँ सर, उन्होंने राइट क्लिक करो तो वो करो एग्जिट पोजीशंस, एग्जिट राइट क्लिक उन्होंने एग्जिट पोजीशन करो। सर बढ़िया 4.75 तो एक पॉइंट ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब तो मैं कह रहा हूँ यार हायर लो आ रहा है, हायर लो। तो अब ये मिड बैंड आ गया हाई से, अभी 30-20 में ब्लू लगे। अब 30-20 में हायर लो का वेट कर रहा हूँ। ये लग गया जी, हायर लो आ गया, लेकिन एरिया के करीब भी आ गया। वैसे 5610 आ गया। नैस्डैक 33-32 19 लगा दिया जी इसने।
चेक में तो फिर इंडिकेट हो करते हैं उसको इंटरनेट भी चेक करते हैं अभी कोई अवेयर नहीं है मिड बैंड चल गया जी। सेटअप्स के साथ जाएंगे, कोई सेटअप फेल नहीं हो रहा। अब डाइवर्जेंस बनाएगी और ऊपर जाएगी। $19,000 कितना लगाया जी? 428 लगा दिया। नैस्डैक तो पागल हो गई, अल्लाह की कसम आज अभी भी नीचे की तरफ ही जा रही है। हो गया जी बंद? नहीं सर देख एनएडएस लिए नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ ट्रेड लाया सी? ट्रेड एमएन लाया हाँ लोग करो नहीं वो ठीक है, लेकिन ਤੁਸੀਂ आर ट्रेडर तो खोलो ना, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰੋ। ट्रेडर से खोल के बंद करते तो बस हो गया, फिर हो गया, ਇੱਥੇ लॉगिन करो। अच्छा क्यों हो रहा है 19 को भी तोड़ रहा है ये। हो 516 जी, ऑलमोस्ट एरिया के करीब आ गए। कहाँ लेके जाना है इसने? टेस्ला 226, 4% डाउन है नैस्डैक आज। ESP 3% डाउन। शायद सर ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ।
very possible. कितना 422 लगा दिया उसने नैस्डैक 422 नहीं वो लगेगा यार वो चलना नहीं Nasdaq. मेरा आइटम ये शायद 2 बजे रिवर्सल आ जाए यू नेवर नो डिसिप्लिन है वो 300-400 करो बस खत्म स्टोरी फिनिश ओके सर जी टेक केयर जी I should best run it. Okay, sir. टेक केयर जी बस All right, I'm going to turn the live stream off. We're still okay. This is बीस आ गया दोबारा अभी स्टेप्स नीचे ही बन रहे हैं नैस्डैक जा रही है 16 तक गई है 16 भी जाता है ईएस कोई रिवर्सल ले ही नहीं रही यार हाँ, थोड़ी सी ऊपर जाती है रिवर्सल ले लेती है 100% जी लेकिन वो भी इधर एक्सट्रीम लो करीब है अभी उसमें बहुत गैप पड़ा जी उसमें 150 का गैप पड़ा हाँ इसका एक्सट्रीम लो आने वाला है
ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 에이ਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੇਲ ਸਿਰਫ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ 70 에이ਪੈਕਸ 80% ਆਫ ਹੈ $33 ਦਾ 30 ਜਾਂ 33 ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ 25000 ਵਾਲਾ 33 ਦਾ ਉਧਰ ਲੇਕਿਨ 에이ਪੈਕਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਗਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਪਨੀ 에이ਪੈਕਸ सब तो मुश्किल सर हायर लो आ गया 30-20 पे हायर लो आ गया जी यहाँ से ब्लैक कैंडल लगाए सीधी एक्सपेक्टेड लो पे जाए ना फिर पता लगे कि हाँ हाँ एक्सपेक्टेड लो पे सर ये हाँ क्योंकि यहाँ से जाए ना लेकिन 30-20 पे ब्लैक ब्लैक ब्लू आ गया हाँ हाँ तो उसमें ऐड करेंगे ना Next. भाई यार 450 19,450 19,450 Oof, oof. 3,000 पॉइंट I'm gonna leave the live stream running but close Zoom, so I don't have a mic for it. नहीं जी कोई मूड नहीं है अभी इसका ऊपर जाने का नो ब्लैक अभी इसने 16 को भी लगता है तोड़ना है Close the Zoom. The live stream is working. See you guys. लेकिन अभी भी हायर लो उसने तोड़ा नहीं है पिछला लोअर लो नहीं बनाया
उधर ही खड़ी हो गई। नहीं, मैंने तो अभी अप्लाई, आज मेरा 10 दिन कर रहा है ना, आज मेरा 10वां दिन है। आज मैं अप्लाई सर मैंने बनाए हैं, आपने बनाने हैं $4,000 बनाएंगे ना तो 1500 देंगे। हाँ 54,000 पे लेके जाऊंगा तो 1500 मिलेंगे। हाँ ऐसे नहीं 50 to 50 2600 बनाऊंगा ना 500 मिलेंगे, तो मैंने ज्यादा बना रहा हूँ। 2600 बनाऊंगा तो 500 मिलेंगे, 3000 बनाऊंगा तो 1000 मिलेंगे, 4000 बनाऊंगा तो और नीचे 15 पे ले गए जी। 422 तक नैस्डैक। चार 4000 बनाऊंगा तो 14, क्योंकि पीछे अकाउंट भी तो वो कहते हैं जिंदा रखो। ठीक ठाक जी। ये आपको अंदर दिखाना पड़ेगा। तेरह पे आ गई जी। उधर नैस्डैक 414। एक 165 पॉइंट ईएस गिर गई। कोई मूड नहीं है जी ऊपर जाने का। और लोअर लो 408। पूरा 19,400 लगा लिया। 399, 98। लो जी 10 से मैंने एंटर कर लिया था और 12-13 से मैं निकल गया। एरिया आ गया था आपका। हाँ 5610 MES में लग गया ना। अच्छा सर, जब हम निंजा खोलते हैं तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही ना, तो आप कोई कनेक्शन में जाएंगे। हाँ उसके बगैर कोई मूव। और जब ऑफ करना होता है तो बस कनेक्शन में जाके हाँ डिस्कनेक्ट सिर्फ अपने बुरना कोई कर सकते That's it, that's it. हाँ जी सारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। $396।
अच्छा, मैंने इसकी अपडेट देखनी हो तो मैं ऑर्डर्स में जाके देखूंगी कितने मेरे पैसे रह गए और वो आप जाएंगे आर ट्रेडर के अंदर, जो रिदमिक ट्रेडर की ऐप है ना, उसके अंदर जाएंगे आप, उसमें नजर आएगा। उसमें सारा आपका हिसाब किताब नजर आएगा। वो कहाँ से जाना है? डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है आर ट्रेडर की ऐप। $19,396। इन सारे को मिनिमाइज करके उधर देखो। हाँ जी, ट्रेडिंग की फाइल है और ट्रेडर की तो हाँ आर ट्रेडर रिदमिक ट्रेडर प्रो की ऐप है ना। मुझे लगता है मेरे पास नहीं है कुछ। नहीं, उसके बगैर हो नहीं सकता। बुल लॉन्ग्स वाले आगे नहीं जा सकते जब तक ब्लू ग्रीन सा आइकन है, आर नाम लिखा हुआ है, आर ट्रेडर रिदमिक ट्रेडर, क्योंकि उसके बगैर बुल लॉन्ग्स खुल नहीं सकता। ये आप देखेंगे सर जरा। एनी डस्ट है 1961 1961 947 एनी डेस्क एक्सेप्ट कीजिएगा। यस। ये पड़ा हुआ है ना रिदमिक ट्रेडर प्रो। अभी हमने ये खोला तो निंजा डिस्कनेक्ट हो गया। तो निंजा को कनेक्ट करने के लिए फिर वो उसको डबल क्लिक करूंगा। हाँ दोबारा नहीं डबल क्लिक नहीं, कनेक्शन में जाना है। तो अब आपका यहाँ से ट्रेड का परफॉर्मेंस डैशबोर्ड देखते हैं। तो आपके पास कैश ऑन अकाउंट बैलेंस में है 48, ये लिखा हुआ ना 48,353, 48,353 माइनस आपका अवेलेबल थ्रेशहोल्ड है 47,731। आपके पास $622 है इस अकाउंट में अभी अवेलेबल है, यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसको बंद करके जब आप दोबारा निंजा पे जाएंगी तो कनेक्शन बुल लॉन्ग्स, अब वो दोबारा ग्रीन होगा और रिदमिक बंद हो जाएगा और आपका निंजा चल पड़ेगा। तो रिदमिक सिर्फ यूज होता है उसका लेजर देखने के लिए। फिर दोबारा जा रहा है जी। सर 19,396। सही तबाही लाई है।
आज को ट्रम्प बोल रहा है रैंडमली कि इतना जो है ना सर 396 हाँ एक्सट्रीम लो जा सकती है। टेस्टिंग दोबारा 14 पे फिर मिड बैंड लगा नीचे आ गए। Order submitted. All right. Order submitted.
blue black, there you go. सर मुझे कोई एडवाइस करें, मैं सीरियसली ये करना चाह रही हूँ, इतना मैंने पैसा भी लगाया है मेरा। आप 2 दिन आती हैं, 15 दिन नहीं आती हैं, इसको क्या एडवाइस है? सुबह 8 बजे आए या 9 बजे आए, 9 से 11 रोज ट्रेड करें, घर से करें, इधर से। आप गैप बहुत आ रहा है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मास्टर कर लें। या मिड बैंड का ट्रेड, दोनों ग्रीन है तो बाय करें, दोनों रेड है तो सेल करें, क्योंकि गैप की वजह से आप एक दिन आ रही हैं, 4 दिन नहीं आ रही, तो पहले तो वीडियोस डैनियल की दोबारा देख लें, सारी जो लेक्चर्स हैं, ताकि आपको फंडामेंटल्स पता लग जाएं कि बाय कहाँ है, सेल कहाँ है। ऐसे तो नहीं होगा ना कि अब जिस तरह सारी वो मैं नहीं हूं ना उसके अंदर, क्योंकि उसके बगैर तो आपको सुपर एरियाज तो मस्ट है ना, रोज की ब्रीफिंग उस पे आती है, जितनी मैं उसके लिए मेरे लिए मुझे $100। हाँ कुछ उस तरह ही है वो। अच्छा तो सुपर एरियाज आपको चाहिए, उसके अंदर एरियाज हैं, वीडियोस हैं, इसको यूज कैसे करना है, फंडेड कंपनी कौन सी हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन सारी। और यहाँ पर मेरे साथ आज लोग बैठे हैं, उनके एक अकाउंट नहीं है, 20 अकाउंट है, और हर अकाउंट में अगर वो 100 भी डालें तो 20 अकाउंट में 2000 रोज के ले जाते हैं। रियल में कोई ऐसा, अगर आपने मिलना है रियल ट्रेडर से, सैटरडे को 5 बजे आए ट्रिनिटी ड्राइव पे, हमारा जो दूसरा ऑफिस है, आपको उन ट्रेडर से मिलेंगे जो इससे सीरियस अमाउंट ऑफ पैसे कमा रहे हैं। कौन सा ऑफिस है? हमारा जो दूसरा इसका है 50 सुपर एरियाज की वेबसाइट पे जाए ना, नीचे सिर्फ नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, तो वहां पर आप ट्रेडर से बात कर सकती हैं जो इसको फुल टाइम करते हैं। मुझे वो किसी से मिलाना था, हाँ जी, वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते, बिल्कुल एब्सोल्युटली प्लीज उसके साथ। लेकिन वो सुपर एरियाज के नीचे लिखा हुआ है, वेबसाइट पे जाए, नहीं उसकी एक्सेस नहीं चाहिए, लेकिन आपको सुपर एरियाज चाहिए होगा उसकी वीडियोस देखने के लिए, एक्सेस के लिए। तो अब यहाँ लड़का अंदर बैठता है सनी, राइट, आप उसके साथ आके 15 मिनट बैठ जाए, वो आपको मिड बैंड के ट्रेड सिखा देगा। नहीं इधर आ जाए विशाख, इधर सनी एक हमारे पास है, हाँ हरनीत है, सनी, वो 15 मिनट में आपको मिड बैंड का ट्रेड दिखा देगा कि प्राइस कौन सी है, हाई से आ रही है, आपने कैसे लेनी है। तो एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ ट्रेडिंग जो मॉर्निंग की है ना, वो हो रही है 9 से 11, जो इवनिंग की है, अब अगला सेशन शुरू हो गया, 2 से 5 है ना, अब रियली प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करेगी, और जो तीसरा सेशन है वो सुबह 3 बजे आता है। तो जो मेजोरिटी काम है वो 9 से 11 है, 2 से 5 है, और फिर सुबह के 3 बजे। तो अगर आप मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पर होगा कोई नहीं ना, तो मैं निकल जाता हूँ 2 बजे। मेजोरिटी ट्रेडर जो 2 से 5 वाला वो होता है जिसको ट्रेडिंग आ गई है। आप मॉर्निंग में सनी हरनीत के साथ बैठ जाएं, 2 दिन में आपको वो मिड बैंड के ट्रेड में इधर दूसरे रूम में, हाँ, क्योंकि उन टीच करते हैं ना, तो आपको बता देगा कैसे करना है। अच्छा सर, ब्लू ब्लैक लगी, थले आ गई प्राइस, वो देखो सर, नहीं है स्टडी फेल हो रही। अब ये भी है ना, 2-2 पॉइंट आप यहाँ से भी उठाती रहेंगे तो 200-300 बनाना बहुत आसान है ये सारा। मिड बैंड पे मैं लगा के बैठती हूँ। नहीं, लेकिन मिड बैंड के रूल्स हैं 5 रूल टेस्ट होने होते हैं। नंबर 1, प्राइस हाई से आनी चाहिए। नंबर 2, ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए दोनों चार्टों का। नंबर 3, लार्ज ट्रिगर्स ग्रीन होने चाहिए। ये 3 ना हो ना, और नंबर 4, डाइवर्जेंस की लाइन नहीं होनी चाहिए। ये 4 रूल मिनिमम। अभी देखें मिड बैंड आया, वो दोनों रेड थे, वो प्राइस मिड बैंड पे टच होके 2 पॉइंट आपको दे गए। तो ये जब तक दोनों चार्ट एक कलर के नहीं है, आप मिड बैंड ट्रेड नहीं ले रहे। अच्छा, दोनों चार्ट 100 के, हाँ जी, हायर और लो। हाँ एग्जैक्टली, और आपका लार्ज ट्रिगर्स ग्रीन या मजेंटा जो भी हो उस तरह के। अब देखें इसमें लार्ज ट्रिगर्स
मजेंटा थे, तो आपने सेल किया, 2 पॉइंट लिए बाहर आ गए, और 2 पॉइंट लेने तो इतनी। अच्छा, दोनों चार्ट एक कलर की हैं, हाँ जी, लो और हाई रो, और वो जो लार्ज फिगर हाँ जी, लार्ज ट्रिगर्स ओपन हो, वो ग्रीन हो। वो ग्रीन हो के मजेंटा ऑफ सेल में है ना। दोनों ग्रीन में आए तो आप बाय बनाएंगे जी। ऑलराइट, सो extreme low is done, guys. There's no area for me to say anything, so I'm gonna call it a day. If you were to sell from R1. Highly unexpected price will go to R1 from here, but with Nasdaq you cannot say anything. But Nasdaq is extreme low is left still, 96 points are left there. So, but today all tech stock got brutally hammered, brutally. So Tesla is down to 226. How low it went? Microsoft down, Tesla down, Nvidia down, Google down. All 8 of the 8 are down. अच्छा, 785 प्लस सर है किन्नी गई सी 396 तक, इस वेले चल रही है, इस वेले चल रही है 441 माइनस 396 45 पॉइंट होर, सो 785 791 850 पॉइंट सर है, ये भी कोई मूड नहीं है उत्ते जान ना ना, लेकिन पता है क्या है, मार्केट बहुत अच्छी नहीं। नहीं ठीक है सर, देखो गल पता क्या ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਮਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, 4 ਮਾਹ ਯਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ 61 से 61 22,450 ਯਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਰੀਟਰੇਸ ਲੈ ਲਓ ਰਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸਡੈਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾ ਲਓ 3000 ਪੁਆਇੰਟ 22,450 ਤੋਂ 19,396 3000 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਿਰੀ। 6160 ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, 6185 ਮਾਈਨਸ 5610 575 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਿਰ ਗਏ। 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। 7 ਹੈ ਨਾ, 7 ਤੋਂ 5 6 7 ਹਾਂ 6 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੈਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 7 ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 5, ਕਈ ਵਾਰੀ 6, ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਵਰਸਲ ਦਾ। Nasdaq नहीं आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा कि पंगे ना ही लिए तो ठीक है।
एक्सट्रीम 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 हो गई। हाँ भाई ट्राई तो कर रही है इथों उत्ते जान दियो। हाँ जी पूरी कोशिश कर रही है। ले गए जी। सर वो आपने क्या नाम बताए थे दो जिनसे सीखना? हरनीत और सनी सेम नाम है जी। सेम है। मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करके ना टाइम स्केड्यूल कर लें, तो वो हरनीत आपको ना मिड बैंड का ट्रेड एटलीस्ट 416-509-5643, तो ये आपको मिड बैंड का ट्रेड मास्टर करवा देंगे। सर और 31 मिड बैंड मैंने काउंट करो और आपने नहीं, आपने रूल बड़ा जो तोड़ा है ना, बैठे हैं वो आएगा वो आएगा वो आएगा। नहीं वो देखें वो आपके खिलाफ मार्केट 180 पॉइंट गई है, तो अगर मिड बैंड के रूल का भी एक यार एक वो फर्क है ना। सर बुलनाक्स ते मैंने उन्होंने क्या कि अगर 26,600 ते बढ़ाने ही बढ़ाने, अगर तू कुछ $0 26,600 पे कुछ नहीं मिल रहा, आपका अकाउंट जिंदा रहेगा, ठीक है। 3,000 बना लूंगा ना, हाँ नहीं 16,900 नहीं, वो जो 26,000 सॉरी नहीं, हमारा 50,000 का अकाउंट है, उसका $2,600 बनाऊंगा ना, तो वो मेरा अकाउंट जिंदा रहेगा। मैं 3,000 बना लूंगा तो 500 दे देंगे, 500 3100 बनाऊंगा 500, फिर आगे जितने बनाता रहूंगा तो 4100 पे वो मुझे 1,500 दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अकाउंट जो है ना आपका, हमने कितने का शुरू किया था 50,000 का, राउंड 1 में हमें गए 3,000 और नीचे जाने दे रहे थे 2,500, ये हमने पास कर लिया एक दिन में, जो भी है पीए बन गया। पीए वो ये कहते हैं कि 50,000 है, पहले तो तुम इसको लाओ ना 2,600 पे, इसके थ्रेशहोल्ड तक लाओ, हमारे पैसे वापस करो, ठीक है। पैसे वापस कर दिए, अभी इन्होंने देने कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपके पास 2,600 का बैलेंस है, ये कितना आ गया, ये 52,600 आ गया ना। अब ये कहते हैं कि इसको लेके जाओ, अगर जितना कमाना है वो निकालो, फिर अगर इसको हम कर दूंगा 53,100, मुझे कितने देंगे 500, ठीक है। अब इसमें 500 डालते जाए, और अब मैं गया 54,100, मुझे 1,500 मिलेगा ना, यहाँ से 1,500 मिलेगा और फिर दरमियान में से 1,000 मिलेगा, इसमें ऐड कर दें, ये बनेगा 53,600। ये उनका स्ट्रक्चर है। 10 दिन होने चाहिए। पहले तो मैं इस स्टेज पे पहुंचा अकाउंट, ठीक है, इसमें मेरा वो एंड ऑफ डे चला गया। अब मैं 50 देखूं 50 मिले, 30 देखूं 30 मिले, यहाँ लॉक हो। पहले मैंने ये स्टेज की 53,100 पे ले गया, मैं क्वालिफाई हो गया
$500 पे। एक सेकंड, हायर लो कब आया जी आपका? 2 ब्लैक के बाद? यस यस, 30-20 पे हायर लो आ गया आपका। असल में थोड़ी सी चढ़ती है फिर गिर जाती है, उसको रैपिडली वापस नहीं लेके जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये ब्लैक, ये स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन वाला है। एक ग्रीन है एक रेड है, सेल तो नहीं करूंगा मैं। 30-20 ग्रीन है, तो दोनों रेड होंगे तो सेल करूंगा। एक रेड है एक सेल ग्रीन है, तो मैं बाय करूंगा उसके डिफरेंट ट्रेड में 56, 12, 50 प्लस 8.5। तो ये है सर। तो अब मैंने क्या किया, मेरे 10 दिन नहीं पूरे हो रहे थे, बीच में ब्रेक आ रही थी, थोड़ा नीचे गया थोड़ा ऊपर गया। अब मैंने इसको किया 50,000 को, हमारा ब्रेक स्टार्ट किया 50,000। आज मेरा 10वां दिन है, ठीक है। मैं पता कहाँ ले गया उसको, मैं कहा ऐसी तैसी अगर इसको लेके भी जाना है ना। एक सेकंड सर, बुलनॉक्स को ऑन करूं। अकाउंट है 90। ब्लू ब्लैक ब्लैक ब्लू अभी, लेकिन लगता है फिर तोड़ देगा, फिर तीसरी दफा एक्सट्रीम लो पे जा रहा है। Yes, I do. 5610, माय गॉड मैन। हाँ, अकाउंट का क्या साइज हो गया जी? एक सेकंड भी बताता हूँ आप लोगों को। 53,000। हाँ सॉरी, गलत हो गया। Sure, if we can one more condo, then no, let me ask her because she was saying she has another property apartment. हाँ जी, नहीं आप बना ली। Let me ask her or the message. अब मेरा आ गया 55,300 तक ले गया। 5300। तो मैंने इसको 10 दिनों में 5300 पे ले गया। 1500 देंगे तो 1500, लेकिन होगा ये 55,300 माइनस, अगर इसमें से ये निकाल दें 1500, तो 8 में से निकाला है, कितने रह गए? 2800। अब मेरे पास 2800 का थ्रेशोल्ड है, और जो है ना, इसको देखते हैं अब ये कहाँ लेके जाते हैं। चौथी दफा ये एक्सट्रीम लो टेस्ट हो रही है। नहीं जी, कोई मूड नहीं है जाने का ऊपर।
मेरा थ्रेशोल्ड 2800 रहेगा, क्योंकि मैंने उसको पूरा रखा हुआ है ना, ठीक है, 5300 बनाए ना, तो 1500 मुझे मिल गया, 2800 रहेगा। फिर मैं बनाऊंगा उसको ऊपर ले जाऊंगा, फिर 1500 निकाल सकता हूँ। है मैं ये कर रहा हूँ यार, नैस्डैक आया, M5 MNQ डाले, 15 पॉइंट लिया, बाहर आ गया। मैं MNQ तो एरिया से अब कसम खा लिए नहीं जाना, क्योंकि वो ना अनेक्स, और मैं S2 छोड़ दिया था आज। अब मैं अगर 300 पे आई तो ले लूंगा। तो MNQ क्योंकि वॉलेटिलिटी नैस्डैक की इतनी है कि वो एरिया से बाहर हो ही नहीं रहा। ES में मैं मिड बैंड से ज्यादा SRES वाले कर रहा हूँ, और वहां 2-2 पॉइंट लेके निकल ही जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ट्रेल लगा तो लगा, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट हुए तो ब्रेक इवन आ गया। तो उसी में 5 माइक्रो से एंटर कर रहा हूँ। ये इस वाले 2500 का थ्रेशोल्ड है ना, 5 माइक्रो लेता हूँ, वो उसको दिखाती है $70-80-90 देके, तो स्कैल्प कर रहा हूँ साथ साथ। लेकिन और या एरिया आ गया, आप अभी ये 5610 लिया मैंने, और उससे पहले S3 लिया था, तो सर 5606 आ गया। ये कहीं छोड़ेंगे तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, किसी भी मार्केट को जो लग रहा है। $56.05, माय गॉड। आज का लो ये है जी। अब नीचे 5600 ही रह गया बस, और भी जा रहे। आ गया जी, 391 लगा दिया जी उसने। $391। अगर सर चार्ट में कोई गलती हो जाए तो रीएडजस्ट कैसे करते हैं? निंजा बंद करें, नो करें, और निंजा रिस्टार्ट कर लें। कि अगर कोई आपने मैसअप हो गया ना, तो उसको नो कैसे करते हैं? नहीं, निंजा कंट्रोल सेंटर से निंजा को बंद करें। वो जो कनेक्शन हाँ जी, हाँ जी। वाला बुलनॉक से नहीं, बुलनॉक्स नहीं, पूरा कंट्रोल सेंटर बंद करें। वो कहाँ से करें? वो कंट्रोल सेंटर निंजा कैसे बंद करती हैं आप? मैं निंजा को करती हूँ अच्छा। ये वाला क्रॉस। हाँ तो निंजा सारा बदल। हाँ नहीं और बंद नहीं होगा ना, वो आपसे पूछेगा ना। अच्छा क्रॉस करो, फिर ये नो कर दो। अच्छा ये कर। तो जब आप खोलेंगे तो वो सेम चार्ट खुलेंगे जो इन्होंने डेली सभी आपको सेट करके दिए होंगे। ओके, डू यू वांट टू सेव? जस्ट नो, डू यू वांट टू सेव? नो, जस्ट से हिट नो। फिर भी नो को नो करना है ना, क्योंकि आपने चार्ट को जस्ट किया है, और आपने फिर उसी तरह नेक्स्ट टाइम लाना है, फिर यस करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे खुलेगा। अच्छा, लेकिन अब मैंने नो करना है कि फिर वैसे। हाँ, फिर ओरिजिनल जिस तरह डैनियल ने सेट किया उस तरह सेट हो जाए।
पहला हायर लो आ गया जी। हाँ हाँ, तो हमारे पास पहली कंडीशन शुरू हो रही है। हाँ जी, 4.75। अभी मैं इसमें सेलिंग में बाय नहीं ना करूं, नहीं, भी कुछ भी नहीं, लेकिन ये लोअर लोअर लो से नहीं आ रहा ना, तो इसने अब ऊपर जाना है। तो इसने इतनी एक्सट्रीम लो पे खड़ा है ये प्राइस, इट शुड गो बैक अप टू लाइक रैपिडली टू एटलीस्ट एक्सपेक्टेड लो तक तो जाए ना। अच्छा, तो ना उधर हाई हाई नजर आ रहा है ना लोअर लो, हाँ हाँ, तो जब तक लोअर लो नहीं होगा आपने सेल नहीं करना। ये अब हाई हाई हो गया। हाँ, तो बाइंग शुरू होगी अभी। तो कट नहीं अभी नहीं, बैकग्राउंड कलर 30-20 का ग्रीन होने दें। हाँ जी, हाँ, वो भी सही। ये 4.75 के बाद 1 पॉइंट मिला है। नहीं नहीं, मुझे MES पे उसने 4.75। अब यहाँ कंसोलिडेशन काम शुरू हो गया, ब्लैक कैंडल वाला। ये प्राइस अभी इस साइड से हायर लो बनती है तो चले गया जी, ले गया। Too much confusion at this point. Price for 19,391. 19,391. बहुत कंफ्यूजन है जी इस वक्त। और बॉस मजा आया ना। हर लोअर लो से ले जाओ यार, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर। कल भी आना है हमने। 19,391। 560 हो गया आज का नंबर, सिर्फ आज ही का, लेकिन पूरे दिन का हो गया 850। Trillions of dollars got wiped out of value. $225 टेस्ला। FTO में एंट्री बनेगी 19,300 पे। लेकिन ब्लू पहला ही आया है, नहीं, दिस वाजंट द ट्रेड।
नहीं जी, पिछला 56 और 2 है ना जी। अभी वहां पर बनेगा ना, डाइवर्जेंस बनाएगा 30-20 पे मिड बैंड। अच्छा मजे की बात है, जो मिड बैंड आप लंबा बैठ गए, अब उसके बाद 15 मिड बैंड चल गए 30। नहीं यार, 30-20 का मिड बैंड देखें आपने, अब ऐसा रिया उस जानी चाहिए इसका। Nasdaq themes. नहीं जी, और जाना चाहती है मिड बैंड टच कर। Because the next candle will open मायरन का 2-3 बार फोन आ चुका है, करना बात करना चाहता है। हुकम। मायरन, अच्छा तेरे पास नंबर है उसका? हाँ हाँ, मैंने तो नहीं है, मैं तो आपको पता ही है कि क्या ना करो क्योंकि तुम बिजी। हाँ। नहीं सर, अभी नहीं चाहिए। देखते हैं जाती है 5600 पे, नहीं कहेंगे। अभी तक हमारा लो आ गया जी, 59 भी शुरू हो गया, 55 का नंबर शुरू हो गया जी। नहीं जी, कोई 55-9 नहीं, 5600 से 2 पॉइंट मिल गए थे, 2 पॉइंट बस नजर आया मुझे ग्रीन। मैंने एरिया 56 रखा था ना। नहीं जी, कोई मूड नहीं है। उधर आ गया 380 पे, आपका एक्सट्रीम लो का एरिया आ गया जी, 377 आ गया।
So be ready. सर जा रही है सर 5591 क्योंकि नैस्डैक फ्री फॉल है इस वक्त. हेलो जी, ठीक क्या हाल है? नैस्डैक 19,353. $55.88. This is truly dangerous territory now. सर ये मेरा कभी कभी फ्रीज हो जाता है. अच्छा, आपके ऊपर चार्ट के ऊपर क्या लिखा है? 15-10 वाले. नहीं, मैक्स प्राइम लिखा है या क्या लिखा हुआ है? या यूनिरैंको चार्ट के ऊपर EM क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है वो ऊपर MES के साथ ऊपर राइट पे. यस, मार्च 25. नहीं, उसके साइड राइट पे. हाँ, यूनिरैंको ठीक है. नीचे जो नैस्डैक के चार्ट्स हैं वो बंद कर दें आप. नैस्डैक बहुत वॉलेटाइल है. उनको सारों को जहां आपका नैस्डैक 3020 है वो बंद कर दें. 19,000 3020 में नैस्डैक बंद कर दें. नैस्डैक आप ऑल टुगेदर बंद कर दें क्योंकि आपको चाहिए नहीं. उसकी वजह से वो चार्ट्स हो रहे हैं जी खराब. वो पूरी दुनिया का सर तबाही फेर रहा है वो. अगर वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦੀ. ਯੈਸ, ਇਹਦਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ? नहीं आ सकता सर, कुछ भी हो सकता है ट्रम्प के कोलों. लेकिन रूल ही 2 बार है ना. हाँ, लेकिन देखो पहले यह निकल जावे ने 4 साल फिर देखांगे. इस वेले तो यह करने मुश्किल होए ने. 19,345 5588 5580 5560. अच्छा, इसमें मैंने सिलेक्ट किया, इसमें मिनट सेकंड रेंज टिक है ना. नहीं वो नहीं, आपने कुछ भी चेक करना. अच्छा, यूनिरैंको ही रहने दें उसको ना चेंज कीजिएगा. ये यहाँ वो पहले नजर आ रहा था जैसे जैसे मूव हो रही. हाँ, लेकिन आपने उसको चेंज कर दिया. नहीं, मैंने नहीं चेंज किया. कोई ग्रीन कैंडल आज नहीं है किसी भी चार्ट में है. नहीं 30 मिनट्स 30 में मैंने देखी नहीं, 60 मिनट देख रहा हूँ. वो फिर मिड बैंड को टच किया, नीचे ले गया जी. सर कोई भरोसा नहीं. ये तो थल्ले ही जा रही है. वो एक्सट्रीम लो ते चली गई. एक्सट्रीम यस, लो जी 337 300 ते आ गई जी. That's now in dangerous territories, really.
नहीं सर, नहीं वो मिड बैंड टेस्ट करके निकल गया वापस। So 24 पॉइंट एक सेकंड इज गिर रही है। नैस्डैक आ गया 330 तक। हायर लो है 1510 में, देखो क्या होता है। अभी तक तो 5586 लो तोड़ गया जी, एक और लोअर लो बना लिया। $3 next candle. Let's see. Do they push it up or not? ये न्यूक्लियर के बम के बगैर मार्केट तबाह हो रही है। देखें, इसको फिर ट्रेड वार ही कहते हैं ना। हाँ, आ गया जी, लोअर लो लग गया। टर्न तो हाँ हाँ, जब याद है आपने तो गैप से खुली थी तो लो जी। 3 वाली कैंडल क्या ऊपर जाती है कि नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। नहीं, गैप मीनिंग है जो 6 बजे, जो 5 और 6 के दरमियान फ्राइडे को जो बंद हुई ना, संडे को, और संडे को खुली, उसमें गैप था काफी। लो जी 5580 55 आ गया जी, एरिया आ गया आपका, एरिया में आ गए। एक्सट्रीम लो आ गया जी, बी रेडी। बाय बनता है जी यहाँ से। नहीं, ईएस में नहीं, ईएस तो हो चुका है, नैस्डैक में आया है, ईएस हो चुका है जी, डोंट डू ईएस। आ गया जी 300 लगा के, वो 319 लग गया जी। होपफुली एवरीबॉडी टुक दैट नंबर, होपफुली।
पूरा एरिया लगाया और 35 पॉइंट दिए। आपने लिया है MNQ पे? ठीक है ठीक है ठीक। 55.78 incredible। हाँ जी मैं करता हूँ, थोड़ा सा जरा उनसे कहें थोड़ा सा जरा वो ट्रेड कर लें। सही, जिसे कहते हैं ना कि खून खराबा हो रहा है मार्केट में, सेलर्स जो है ना तबाही कर रहे हैं वो। नहीं रुक रही जी, सेल में रहे। वो दिन गए कि दो पैसे घूम के आ जाएगा। हाँ हाँ वो दिन चले गए। अब तो आधा महंगो हो आधा। कितना 277 लगाए? यप 18 दिसंबर दोबारा आ गया 945 पॉइंट में। सॉरी FTMO का ठीक है इस वक्त, अगर आप बाय करें तो फिर ऐसा कीजिएगा कि होल्ड कर सके लंबा। अभी तो ये यस किसी और नैस्डैक जो है ना 1000 पॉइंट हो गया नैस्डैक का आज, इस वक्त कोई रिट्रेस नहीं आ रही।
अच्छा अच्छा वही गल कर रही तो माइक्रो है ना 620 पे और ऐसा मिली है वो 600 500 580 ले गई वाली देखो नाइट्रो ऊपर जानी शुरू हो गई है कोई नहीं। हाँ दूसरा थले चलेगी हुई है अरे ये से कुछ ऊपर आने की नहीं मुश्किल है अभी तो अभी तो लिखा हुआ है उन्होंने बाय ना सर 620 कहाँ रह गया लेकिन अगर ब्लैक कैंडल भी था तो वो निकल गया ना कब हाँ निकल गया रिवर्सल ऑन की आ सकती है कुछ पॉइंट में पता नहीं ठीक है 271 अब अगला नंबर रह गया 250 नो नहीं 1000 पॉइंट के बाद पीछे वाले एरियाज देखना शुरू कर देते हैं ना अभी तो मिड बैंड लगाती है नीचे आ जाती है एक एक गए तो हैं थोड़ी सी देखो थोड़ी सी रिट्रेस ली है थोड़ी सी एरिया से आगे बाहर अब यहाँ हायर लो बनाए 30-20 पे तो समझ आए कि ऊपर जाना है इसने ऑलमोस्ट होगा ऊपर अब हायर हायर देखो चलने शुरू होते हैं कि नहीं पहली ब्लैक कैंडल बन रही है जी 60 मिनट पे
एक्सपेक्टेड लो टच किया, एक्सट्रीम लो अभी। भागनी शुरू हो गई है। आप मिड बैंड हायर हाई वाले देखते हैं चलते हैं कि नहीं। थर्टी 20 मिड बैंड, लेट्स सी। 19,271। हाँ जी, उसी घटना से गए। हो गया तो मसा हो जाएगा। मैं सर ये रेड वाले देख रहा हूँ, ये जब से पता कब से जा रही है, 18 फरवरी से। मेरी जो शीट है ना, हाँ जी, हाँ जी। 18 फरवरी रेड, 19 रेड, 20 रेड, 21 रेड, 24 रेड, 18 फरवरी के बाद ना ये ग्रीन में रेयरली आई, पूरी इसने रिट्रेस कम ही ली। अब देखते हैं ये जाती है कि नहीं। यस, ऑलराइट जी। बड़ी फाइट चल रही है जी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, किधर जाना है इसने। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल यार, कहाँ से रिवर्सल लिया उसने। उफ 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 उफ, स्पीड देखिए आप कहती है नैस्डैक ESD चल रही मेरी। उफ उफ उफ, I am like, it's just incredible. मैं जी बंद कर रहा हूँ ये, इससे पहले ये सारे मेरे पैसे वापस ले जाए, मैं सर्कल में वापस जा रहा हूँ।
Whatever happens, happens now. I don't care. All right, 3:21. See you guys tomorrow. So I think longest running stream hogi ji aaj. I'm not coming to TikTok anymore because I'm not providing free stream for anybody.